हेलो हेलो हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और भाइयों के बहनों। अब वापस से आ चुके हैं अपना वही दिल वाला गेम पबजी मोबाइल के EWC वॉच पार्टीज के साथ। और आज है ग्रुप बी के मैचेस जहां पे अपने इंडिया से टीम गॉडलाइक खेल रही है, नेपाल से होरा खेल रही है और द ओजी अल्फा 7 भी खेल रही है। तो बहुत मजा आएगा। मतलब बाकी टीम्स भी हैं बट मेरे जो कुछ गिने चुने जो अपने लिस्ट में है फेवरेट्स में, उसमें ये तीन है। चौथा ऑब्वियसली अंगन तो है ही। तो फटाफट से मैच की ओर चलेंगे। मैच शुरू नहीं हुआ है बट अभी एंट्रीज बाकी हैं। मतलब एंट्रीज थोड़े बहुत हो चुकी है। मैं फिर से देखूंगा, अपने गॉडलाइक का एंट्री देखना है मुझे कैसा है। सो या लेट्स हेड ऑन टू द स्ट्रीम। बट उससे पहले आप लोग बताओ कैसे हो आप सब, कैसा गया आप सभी का दिन। अगर अच्छा नहीं गया तो रंगीन जो आ चुका है आप सभी का शाम और रात दोनों रंगीन बनाने। वेलकम ईच एंड एवरीवन टू अ ब्रांड न्यू लाइव स्ट्रीम। क्या हाल है मेरे जान के डोडोस, कैसे हो? वेलकम वेलकम समीर भाई, गॉब गॉब ले लो पुदी। वेलकम वेलकम समीर भाई, वेलकम टू स्ट्रीम। वेलकम स्टिंग भाई, गुड इवनिंग रुक भाई, गुड इवनिंग साहिब भाई, वेलकम वेलकम टू स्ट्रीम। क्या हाल है लॉन्डो, कैसे हो सब? आ जाओ आ जाओ, आज देखेंगे पबजी मोबाइल के ग्रुप बी के मैच। थोड़ा ये बटन लगा लेता हूँ वरना अश्लील लगूंगा। ठीक है, आ जाओ। कहाँ गए, रुको अभी यहाँ पे। वी आर गोना वॉच ईच एंड एवरी एंट्रीज। ठीक है, इसको साउंड देते हैं। लेट्स गो। हम्म, टीटी प्रोजेक्ट। ओके, कॉलेज में प्रोजेक्ट तो किया नहीं था लगता है। यहाँ पे उनका वो प्रोजेक्ट ग्रुप है, कॉलेज प्रोजेक्ट ग्रुप है। क्या बात है, वुल्स भाई, क्रेजी। yeah, another goated team with a goated lineup. चियानबा, नहीं ये वाले को तो मैं नहीं जानता। क्यूजी, क्या बात है, क्या बात है। ये कौन सी टीम है, ये भी नहीं पता। आय आय, ये कारिलो माय गोट, कारिलो एंड रेबल। क्या बात है, आइए लेट्स गो हमारे शेर। पूरा सफेद, भारत देश की आन बान शान। क्या बात है भाई, पूरा अलग चमक रहे बे, व्हाइट। सब ब्लैक ब्लैक में, एक में एक अकेला व्हाइट, वो है टीम गॉडलाइक। क्या बात है, टीम वेटालिटी। H2G भाई, ये H2G और वुल्स बहुत, मतलब कितना उनके बहुत टाइम के बाद ग्लोबल मतलब मेन इवेंट में आ गए। ओआर स्पोर्ट्स, ओआर स्पोर्ट्स, अच्छा हो रहा, ओआर बोले ऐसा। क्या बात है, ट्रॉफी के साथ, क्रेजी। और देखो उसका चांस देखो। क्या बात है। हम्म, यहाँ तो मैच चालू क्रेजी। सबका, सब में से एक अल्फा 7 है जिसका ऑरेंज और एक गॉडलाइक है जिसका व्हाइट। बाकी सबका ब्लैक 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 ब्लैक।
टाइटल डिफेंडर हंग ऑन गैलेक्टिकॉस। मैच चालू हो गया, आगे बढ़ाओ उसे। क्या कर रहे होंगे प्लेन चलो कुछ भी। चलो गाइस लेट्स गो लेट्स। पहला मैच शुरू हुआ है। अबे एक सेकंड, गॉडलाइक के 2 पॉइंट हो गए, मेरे को देखने दो। फाइट हो रहा है क्या गॉडलाइक का? खत्म हो गई फाइट। रुको, गॉडलाइक का 2 फाइट भी हो गया, क्या बात है भाई, क्रेजी। अरे इधर ही। अच्छा ये फाइट दिखाई नहीं है। गॉडलेस पावर एस2जी के साथ फाइट हो रहा है इनका। अरे हो रहा, अब सौम्य को मारा एडमिनो, आज ये लॉस्ट। क्या बात है एडमिनो एस2जी, लेट्स गो गॉडमिनो। क्या बात है, चलो 2 किल कहाँ कैसे मिले पता चल गया। चलो लेट्स अभी चैट पढ़ते हैं। देखो तुमसे इतना प्यार करते हैं, चालू होते ही आ गए। अरे समीर भाई लव यू यार, लव यू। गेम का ऑडियो नहीं आ रहा होगा ना, लाइव का गेम साउंड नहीं हो रहा। हाँ अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा। Sky on the back lines though, Nora. These guys usually dominate over towards Yulin, Jackie. Where's this going to be a usual result for them? On the periphery right now, setting up like इसी बात पे एक डाइट को हो जाता तो समीर भाई देखो, आप जब आपको मिलने के लिए मैं हर दिन स्ट्रीम कर रहा हूँ, समझ रहे हो, आपसे बातचीत करने के लिए इतना प्यार करता हूँ मैं आप लोगों से। इसी बात पे एक वॉफल हो जाता तो भाई, अगर मैं नाना पाटेकर से कम नहीं हूँ, ये मैं तेरे लिए नाची रे। देखा है वो सीन, म्यूटेड है, म्यूटेड का म्यूटेड, गॉडलाइक सफेद डिटर्जेंट का ऐड दे रहा है। अरे बाबा हाँ ना, सौंदर्य साबुन निर्मारे मान्या नॉक हो गया। सौंदर्य बोला वहाँ मान्या नॉक फिनिश हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, 3 पॉइंट है अपने पे, वो रिकॉल हो जाएगा ना, 3 पॉइंट निकाले, दैट्स वेरी गुड। 80 शीश को The battle against Thor is still continuing right here, right now, with Tiamba also taking a piece out of them. Godmino mode on, yes. by tutorial done है। अरे स्टिंग भाई, thank you यार। पूरे हो गया था almost। ट्यूटोरियल स्टिंग भाई, मैचेस खेले क्या कुछ भी, 1-2 लाइव टिट फॉर टैट समीर भाई। Starting to make himself well known in the picture at the moment. Get the reservoir towards Milu and Fajita. Now left, kind of scrambling inside of Yulin, unsure how he wants to play this one out. Needs to get an Aero towards QZ, isolate the singular player. डाइट और वॉफल छोड़ो, गॉप गॉप दूंगा सबको। क्या बात है, समीर को तो समीर को चाहिए। आज खेलूंगा रिक भाई। ओके ओके स्टिंग भाई, थैंक यू। गॉडलाइक का रिकॉल हुआ कि नहीं रे? 6 ELIMs on the game already. We're looking at 1 a minute at the moment. भाई ये टियान कुछ अच्छा नहीं खेल रहा था। They're starting to rise. Taking pole position right now into the game. Meanwhile, you got the setup here with S2G up close and personal. A compound clash between the two. Dopeness, what can you do? SMG on the clear, runs into the pre-fire kamikaze. So that's an easy conversion for an elimination point, bringing them down to 3 players in this elaborate fight. Very curious to see how STG does this tournament. There was some luck earlier in the year that gave some fortuitous opportunities to get further into the circuit. I guess मान्य रिकॉल पे उतरा था। Players are strong in their own right. They just haven't had तो ये लोग शायद रिकॉल देंगे अभी। But this clear looks good. मुझे बताना इस मैच के बाद क्या करना है। यस यस है भाई, फॉर श्योर। Show right now up against Dopeness at least.
अरे वो रुद्र ही बोल रहा था ना डिस्कॉर्ड आने रुक मैं उसको टेक्स्ट करता हूँ कि मैं आ गया हूँ ऑनलाइन डिस्कॉर्ड आ गया. It's usually what Turkish teams are so good at as well, is that synergy, that coordination, which is why it did feel so out of character for S2G in the past to be so unlinked with one another. You got to have the basics down. The protocols look nice there, at least, with the way they played off each other. So hopefully that's a sign of things to come. Squads on the move up towards the zone right now as well, getting themselves into position. Curious, Blank, My how this is favorite going to go for spot on A7. Rondo is dunching because we can get many eliminations there. We have a good strategy to play on dunching. And we are back in with it. Just a quick interview with Vitality, very quickly there. See him on screen right now, rotating round, but not yet to get a single elimination on board. Next circle shift now, Jackie, over towards the west-hand side here. Wolves feeling quite good about World this, of Tanks का बात कर रहे हो क्या? हाँ. This is a really nice opportunity for them as they swing around the western side. They tried to cut in early. They're right next to a red beacon as well, so they can hold off on the teams that they like. But this is a super hard shift. स्टिंग को यार नहीं वो कर लिए थे ट्यूटोरियल एंड मैचेस भी कर लिए थे 5-6 मैचेस खेल लिए थे बट उनका सर्वर यूरोप में रजिस्टर्ड हुआ आई डोंट नो फॉर सम रीजन तो अभी उनका एशिया वाले का एक बार देखना पड़ेगा तब तक साहिब भाई काम करो क्लाइंट और गेम दोनों डिलीट कर दो अनइंस्टॉल कर दो And I'm sure you can hear that as well. The fans getting amped up as this one starts to kick off. क्लाइंट और वो दोनों अनइंस्टॉल मारो driving on through. Circle starts to close in. Yangon Galacticos. चलो अपने चौथा मान्य रिकॉल हो गया. Let's go. Move over Four men towards the strong. rest of the team. Hustler crew also roaming on that north side, looking towards that high Longshim ground. Vitality थोड़ा slow start पे है. Yangon भी slow start पे है. Is going to drop back down towards the southwest side, sit around Stadium. But again, Stadium's such a big place, so isolated. That cuts out quite a bit of the area. You don't really want to be playing on the northeast side either, Jackie. So you are locked in this southwest region. We also have the lake down towards that southwest side that sits on the slope downwards. This is awkward terrain. Going to result in an even higher elevated level needed from some of our squads to play around it with the way the circle's been developing. Close grouping here as well. Wargaming गॉप दे रहा है. S2G in the first fight we saw from them. On कौन बजा रहा है BC? Collapsed upon on their advance. How do they display themselves? कोई वो कास्टर्स के पीछे हॉर्न मार रहा होगा. Could be a chance for an engagement forced upon them as well. It's TT and Nonshin that are not too far away. Checking the top side of the stadium there makes sense as well. A lot of times you leave it there. It's a cheeky maneuver, get some shots out, but S2G keeping their sides clear right now. I like playing up against this pillar as well. You can basically cut off one side of the map to you and only deal with players trying to aggress on either edge. So I think that's a good shout from S2G so far. They're a very central position to work with off the back of that. And even so, they can catch players moving through. Godlike's taken a slower approach on the north side. I like it though. I think what they're trying to go for right now is leave that two-man over towards the northern edge, ensure that teams coming through from Nanshuan don't catch them off guard in future. So that high ground's going to be super critical for that factor in future. Alpha 7 also a bit of a split lineup on that northern edge, looking for something very similar here. और भाई को प्रोटीन एंड डाइट कोक चाहिए वही तो. These guys are committed actually, even dropping the emergency cover flares here too on S2G. अच्छा Godlike देखो. Okay zone में. Well. Easy zone entry है. Come on समय मारना गुज्जा मारना भाई गुज्जा. सोचो मत नदी के द्वार से गुज्जा. Play quite quickly, so they're going to be thinking about the future rotations that are still yet to come for them. Meanwhile, on the move on our screens right now, you can see Alpha 7. A squad that's got a lot of excitement behind them right here, right now. Taking on Wolves could be the potential pipeline for them to get into a good position. Started it off nicely with the opening 3 elims. Big chip damage, Blank. It's a struggle at the moment. Nade over the top here. One more airburst might do the trick. Goes incredibly low. Has to lob one back of his own. Will scare Elementrix a little bit, but it's only about 20% of the HP taken off, and he looks to keep the aggression up. Carrillo gets another first aid kit through, but the vehicle is absolutely stomped out right now.
he might be able to get it a little bit of a distance out of there, but Alpha 7 knows that they need to get a move on. Stadium being such a big feature of this next circle as well leaves E-Arena in a really good spot, but how has Tiamba managed to squeak their way in? Tiamba that was showing its incredible form in terms of the fights. समीर का इन गेम नेम गाफू समीर 69 ना good position वैसे ही रखना चाहिए. maybe that could be a bit of a dark horse twist. क्या लगता है स्टिंग भाई पहला विनर चिकन डिनर किसका होगा? GS limping over. Milu opens up over towards Schweppes though. The off-angler for मेरे को लग रहा है पहला चिकन डिनर. Bit awkward. GS might hear this and want to aggress on it. Again, there's lots of little angles you can play in, but Milu will clean up one. Gets immediately refragged by Morban. ETSH finding Curry out inside the Pagoda. Alpha 7 might just need to abandon him on this. I think it's the only play they have. So either give it up or make it work right now in the mechanical side. They are taking pot shots back down. Carrillo knock finish. Alpha 7 now moving Doom. Squeeze out, gets knocked out of the vehicle. Revo not in a good position, leaving Obscure with it all to do now. But NASA, last left alive for ETSH. Revo went down to the blue, he did his job. Got a fair few knocks on through. Obscure now needs to move up, get a little bit closer. Has to hit the first aid kit soon. NASA though, cleaning out these eliminations. He peaks with that much HP, he's confident. Unbelievable scenes. So close to his demise as well, but they're able to at least top themselves back up, get over towards the recall tower if possible. It could be a saving grace for Alpha 7 Blank. Gonna drop down towards that south side now. He has time to do it, but once we hit stage 4, it's gonna get a little bit more difficult. He has to commit now and kind of skidding off the road there. We'll hit Stadium. We have not seen one of these in quite a while, and we get to see our first one now here in EWC. Godlike जीतेगा. पहला मैच थोड़ा मुश्किल लग रहा है. पहला मैच थोड़ा उनको वो देखेंगे ना. आंकेंगे, परखेंगे. It's a good place to play. Being able to peek up and down off the back of it is unfun to work against. Benonction Red Force, they're up first. JS9 in the hands of XZY. क्योंकि मेरा पनौती मुंह है. अगर मैं बोला सच्ची में Godlike जीतेगी तब तो भाई खत्म है फिर से. इसलिए मैं बोलूंगा ही नहीं Godlike के बारे में. Nice first knock round the backside, nade in to attempt to convert something from this as well. So many teams breathing down each other's necks here towards the stadium. चलो Alpha 7 का Carrillo से रिकॉल हो पाया, बाकी दोनों में रिकॉल नहीं हो पाया. It's on brand, it's on point. Where does it go from here? Tony K with a quick pop of the stims, get himself back up. Surf going to start coming in as well, ushering those teams forward. We saw that recall play from Alpha 7. They do reset the squad. At least 2 of them alive and kicking. A duo is better than just one. और मैं जो बोलता हूँ हो जाता है कई बार. देखते हैं आप Godlike मैं और स्टिंग भाई आप किसका सपोर्ट कर रहे हो? And the scrap continues. The first wolf shut down as the response from E-Arena's good. E-Arena not been slow about at all. They want to get thick into the action. It's a good nade, bounced off the wall, not quite finding connection though towards them. But Wolves, they are down on their feet, looking to get the reds off as quickly as possible. Sonic got very, very low. E-Arena looking for these flushes now. Emergency cover flares brought in because this is an emergency at the moment. One nade. अरे वो नॉक भी किया, फिर नॉक भी हुआ. Sonic getting him back up again. Elementrix goes down. So some shrapnel on the side. E-Arena looking to clear out space though. They know they have to do this. They were here very early on the game, but I like how much presence they're showing here. Carrillo मारा हो रहा है पूरा के Carrillo ने finish. चलो full tag standing. अरे बाबा 1 मिनट 2 नॉक फिर से. This fight just doesn't stop either. Wolves up. कोई बात नहीं वो नहीं कर पाई. कोई बात नहीं Vitality करेगी. Vitality का चिकन है. Vitality का चिकन है भाई. Vitality का चिकन है. Taking the hit towards that reigning champions in Yangon. Yangon has been playing real slow into this one too, but for E-Arena, it's good to see
Feels almost like the torch has भाई been अल्फा passed सेवन को down देख from रहे हो Vampire W now पे to the W arena. सपोर्टर्स पे This Thailand team A7 जीतेगा doing फर्स्ट मैच incredible A7 का work मुश्किल है रे so far. बनना नहीं है सिर्फ TT Project. अरे पावर ने मारा To लेट्स get गो themselves out of this awkward situation. Alpha 7 still up and kicking now. मार पावर But down to one player. 7 elims on the Mac. It's not bad, क्या बात है but it could be better here. But at least they didn't go out with absolutely nothing. मैं जीता तो आप 10 रुपए देना मेरे को अगर मैं हारे तो 100 देना Goodness me, so many teams afraid to head over towards stadium मैं क्यों दूंगा now just एक्सक्यूज मी because हेलो it is fairly locked down on बीसी these outer बांगड़ा edges. चल रहा है क्या वहाँ भाई गॉडलाइक कर रहे भाई क्या We शिफ्ट do है have a circle on our ये hands सोल here. वाला A lot of किस्मत teams on that अपने eastern इंडियन side टीम को quite क्यों लग गई pleased है how this has जोन worked हमसे out. दूर क्यों भाग रही Vitality, है Razy and Razak, the famous duo. Improved from Indonesia, now looking to pump up a little bit more फिनिश हो damage. गया Grab himself the old master at the moment because he has been putting in work. A 13th elimination added now. A chicken dinner here would be fantastic for the point tallies. ऑब्स्कर And for Alpha 7, the end finally arrives. Try as they might to keep themselves alive in our opening game. They did well, like you say, Blank, to at least draw a few more points out from it. But it finally bites the bullet on the wrap back over to stadium. But like you say, the 14 arena right now, kills है ruling bro the roost with some of the fights they've been able to pick देख रहे off हो on. ये EFC Softening वाली up the टीम है क्या competition that's been coming their way as well. If they can lock this down, Second could be a prediction very ही है tasty position. Already 14 अरे आपका elims. फर्स्ट How far प्रेडिक्शन do तो they एलिमिनेट take हो गया it? अरे What टीटी does वर्सेस Godlike गॉडलाइक do here? Effect with the Let's go. comeback. Nice. Good for one. Nice nade from S Power, but FS tries to hold अरे on गॉडलाइक to के it. 3 नॉक कैसे हो An गए intense encounter between these two sides. Godlike down to 2, but S Power making the difference for now. Godlike on our edge is a tough position to be in. S2G on their sideline. मार ओ पैचो क्या क्रेजी मारा The Joker from a distance. कोई बात नहीं भाई In their tracks. Nice The try, bro. productivity from the arena has been Crazy insane so mark, far. There's not a bhai. fight that they have not been unwilling to be a part of. क्रेजी मारा भाई Like you best duck your head Huh? down because Erie are Crazy मारा कि नहीं? absolutely farming Huh? in this battleground right now. क्यों क्रेजी भाई Heavy hit coming over to Hustler Crew. You got Welcome to international lobby जहाँ पे इंडियंस ऐसे ही डोमिनेट Behind करके the मारेंगे vehicle. They want to close the gap onto भाईगन S2G. हाँ भाई, Godlike. Vitality in the साहिब भाई मैं distance बोला ना as well. परखेंगे अभी थोड़ा रुक जाओ A single knock. अपने इंडियन टीम ऐसे ही हावी नहीं हो Back सकते down, trapped behind the ridge. we read and then we dominate just like OG did Just went out just then. Now needs to get a move on. Vitality S2G, करेगी भाई, they post चुप्पी up. चुप्पी A7 है, taking अभी a Vitality के huge ज़्यादा amount points of नहीं हो पाएंगे, damage. but The तुम blue देखना। might just do the trick here. We'll take him out. S2G with 9 limit on the game. It's crazy the sheer distance we're looking at as well. 9 elims being second place, 15 points for first right now, and the split on the actual क्या minimap मिस is किया insane बे what we've been set up नेपाल with. जाके The only Godlike team को that's एक comfortable ओवरव्यू मिल realistically गया has been है Arena यप from the position they've been in. बहुत अच्छी बात है अच्छी चीज है Even a single inch right now. कौन And they कैसा have खेलता cleared out the है entire Vitality northwest आई side. Now खड़ी they हुई can Vitality pretty much shunt most teams down मारी towards एक that southern edge. Excellent. Schweppes opening up. मार मार up the GS once ओए again. And they are शुक्र just swarming on them. Another goes down in Malik. And the arena looking for more and more points. 17 elims. Can they go further? Can they hit the 20 bar? भाई क्या भाई Well, कितना टाइम finally, it seems like Hello. someone's willing to test अरे वो them. पिछलों को भी The खेलते arena हैं वो भी taking मेरे साथ casualties, but they're looking to reply back. They एक will सेकंड keep मैं मैच themselves देख रहा हूँ alive फिर until मैं the आता हूँ मैं game मैच seems खत्म over होते the ही आता हूँ ठीक stadium है amidst बात Vitality भाई तो pushing on to क्या 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 S2G. करूँ मैं तब तक A back मैं and क्या forth करूँ fight. 5 मिनट 10 मिनट रुक जा मैच खत्म होगा मैच हो गया 20 cards मिनट close to their chest, but अच्छा, they've got ठीक to है, fight ठीक है, for रात है। control right now. Looking for the royal flush over towards S2G. All 4 players down Come on. potentially. Axel. VIT Velour Institute of Technology Quick spray over towards Hamzy G. Quickly drops back down to his Nice. belly. Some more damage. I mean, he's hitting every shot. Just continue with it. nice The numbers dwindling for S2G. Peak round the क्या back knock of the दिया rock. रे Axel hits it swiftly. Let's Good go, God, good Vitality. Starting to get some energy going their way. Meanwhile, Ida taking it straight to the face of the rain. क्या बात है Yangon inside the back of Four the man warehouse. strong. Emre incredibly low and Vitality smelling the blood in the water. They can wrap off, play this safe, get into a better position. But can Yangon hold on?
Emre flexing those big muscles here inside the warehouse. Nade starting to go through. Romeo in a difficult spot now. Will swing out the side. Desperation play indeed, but doesn't find the swift shot through the smoke here. Rita moves up. Smile goes down. Ida putting a frown on the faces of Yangon Galacticos. Last play incredibly low. Romeo is out. They fall down and out in Rondo. And one by one, we whittle through our squads. The only fight we've seen taken to पूरा vitality ये foreman strong है, DNA भी है. They reset from it and continue to live on. You ask the Vitality question, can they push आके to 20 elims? They only need 2 more, Black. But can Vitality suck up some of the points as they do advance onto the weekend? Ishbe गाड़ी blast. On the vehicle, Vitality, you're going to have to recover from this swiftly. What's the decision making? That's a rough one. Rita playing inside building. Good burnout from him. Tries to get back Nice inside. knock. Good shots from Axel. Has been on an absolute tear this game so far. Good damage all around. Feels like a lot of the eliminations have been stolen away from him. That is an insane from Razy. Gets a lot of damage done towards Emre. He was not expecting it. Almost jumped into the अरे ये क्या था? Razy from Federale. हाँ? ये क्या मारा? अरे what the fuck? Back down to Ida. Man with the quickest fingers in front. तुमने देखा? Could not believe what I just saw. I don't think either could Ida, honestly. They witnessed that and it was terrible. Lufa will move up from Dopeness, takes down the first player so far from the arena. They are down to 3. Vitality still sitting pretty with 4. And teams have to push out into them. 2 fights happening back to back. Stereo setups from our teams. with Hora taking the hit straight to क्या movement था वेंजो? keeping his eyes peeled over onto the भाई ये का 3-man हो गए भाई. भाई लेकिन kills देखो 18 finishes. For another one, but on the peak takes a Oh few my shots. god. 10, 6, No 5, fear with the steel versus 4. Vitality. 22 पॉइंट तो लोग Douglas actually कंफर्म करके ही जा रहे हैं. defend themselves now. Great Molotov forces him through the doorway, opening up the lines. मिनिमम 22 पॉइंट तो लिए ही हैं. 2 मैच का पॉइंट तो एक ही मैच में ले लिए ये वाले. E-Arena need to break their way क्या out आग of मुत here. रहे भाई ये लोग. 19. ये तो 40 को भी पीछे छोड़ दे रहे हैं. 22. An unbelievable game. Speaker has to make the crazy play, and there it is. A 22 elimination game. The first match of Group B. E-Arena is bringing it. Not only are they looking for an opening game win, they're looking to do it by sending a message. And for Hora, they weakened Vitality amongst all this, but they were able to इंटरनेशनल प्लेयर चल के या कोई भी शॉटगन मारने से क्विक स्कोप इन करके मारते ताकि वन शॉट के बाद का वो थोड़ा टाइम गैप मिस हो जाए. ओके एक बुलेट स्कोप इन एक बुलेट स्कोप इन. भाई होरा और वाइटैलिटी 4-man बची है. Razy playing the backside of the tree here has to drop something. The cover ले flares. कितना पॉइंट्स है ये का 25 पॉइंटर तो मार ही दिए लोग. 25 पॉइंट्स तो इजी है. They're going to hold down here. Aura coming in with 4 players. यहाँ से और किल निकाले 30 पॉइंटर हो जाएगा. Arena though, they are on fire so far. This team is warm, ready to go. वाइटैलिटी को जोन में आना है बे. Have to put some more वही है. eliminations in the books. Vitality with a quick rescue. ओए Can क्या they make it ट्रेसिंग है. back? They do. Goodness me. पूरा टॉप 3 आ गई बे. मेरा वाइटैलिटी प्रेडिक्शन अभी भी चल रहा है चैट. margins between these teams. अरे To the top side. अरे Playing it Naughty. cheeky, Blank. अरे ले भाई खत्म हो गया भाई. Yeah, they have 22 already एलिमिनेशन done an incredible amount of work so far. बे 27 पॉइंट्स निकाल लिए ये लोग. Taking shots, Yeah, getting the high babu. ground is insane. The cover flares come down underneath. Moment left behind. He's crazy. Jiggle moved down. Might have seen him though. Might have spotted him. Cover flares on the roof. You are wild for it. Jiggle, I don't think he's had any idea. He doesn't know. He doesn't Le. know. No way. इश Now he knows, बे Blank. Joker. बेचारा. With a headshot unloads from the top of the roof. जोकर. It's damage onto it. जोकर भाई का हमेशा किस्मत खराब ही होता है यार. The emergency कोई भी cover जोकर flares हो. down. Now give them incredible peaking advantage up against Vitality. A little tank here and there, but
goodness me, the blue's going to push them out to the open. This is more eliminations for E-Arena. They have the perfect setup. You have entered E-Arena's arena at this point. The gladiators here in France as they are ruling from the top side, control of the ground floor as well, with Mormon in position. And Vitality know that they are forced to advance eventually. You're exposed either way. And Joker's looking for the peak back towards the warehouses. How far can they take it with the elims? They look for more damage. There's another knock from Schweppes. Instantly trying to flush out on that one. 24 in the bag. Blow up the vehicle. Don't let them go any further on the back of this one. Aura can do nothing but stand by and watch. Come on. एक नॉक दे दे वहाँ पे रियाक. ओए नाइस कवर रे, लेकिन नाइस ट्राई. Finds the peak off the back of it. Mormon holding the angle. उनका हेलमेट तो खत्म ही है. But they're patient. They're real patient about it. और ये क्या मारा? देखा मैं बोला ना हेलमेट खत्म है. 3-4 में उतरेंगे लोग. To not be greedy. That tree saves his life in that moment. The sightline just not quite there. ओए दिख गया इसको. That's the issue, Blank. The duo so heavily focused at the cover flare setup on the roof side. If they leave themselves exposed, can Mormon steal this away from the ground, draw the crosshair off, guarantee himself something to play with? क्या फालतू जोन का vitality का now. It gets spicy. Center dots towards this loot crate. E-Arena may need to drop down at some point, but they'll see what they can get done in the meantime. Vitality playing it slow, but will have to move. Even more emergency cover flares dropped. Building themselves barrier after barrier. Oh, shot down again. Joker gets the peek out. Federales cowering close towards the limited cover he's got, but no fear. Sees an opportunity and swings round. Federales with a hold. Some clean connections. एकदम सुला दिया है. भाई नेड knock. अरे बचा रे. Razy has to back out. One more nade over the top. It looks on target there. It's unreal from up on high. They are dropping bombs down towards 3v2 actually. This is insane work. Sky goes down. ये क्यों करने का है? Here might take them to 29, Jackie. One away from the big 30. And there's only a single member of the squad left to try and fight against them. The dream of E-Arena on Rondo, as they've been living their movie, elim after elim. And Sleepy is all that remains between them and an unbelievable game one. Schweppes looking down upon their arena, their stadium. What a ridiculous result here for E-Arena. It has been sublime from start to finish. The circle begins to close. We're getting right into those final moments. Just one more minute before it all finishes. मेरा prediction है. आपका वो second prediction था. पहला आपने Alpha 7 बोला था. सबका prediction wrong ही हुआ है. Two crosshairs going to be swiftly on his angle. Can he withstand the duo drop? That's one. Bro, don't tell me. Horal निकाल लेगा. Tries to withstand the peak. Sleepy on the double up. Quick shots can't quite connect. He's going down. अरे वो reload कर रहा है. अरे इस Ewc, an incredible 39-pointer. They've got half the points that some teams earned yesterday. At the end of it all, it was by 39 points. A game one chicken dinner with an unbelievable narrative. 39 points. It wasn't even a single pop-off play. It was the entire team working in unison from start to finish. The mechanics, the movement, and the setups. They read the game perfectly. And they hit their shots. I mean, respect to Revo. I mean, he's smiling. 39 points. Everyone should be smiling. This is record. अगर ये मैच के बाद ये लोग इरेंगल 3 विरेंगल लगातार विप किया ना. First game of all things. They've done it. Like they're in, right? They're in at this point. Yeah, they're not dropping out. Bro. It's incredible. I didn't expect it. I mean, it's just disbelief on players' faces.
देख रहे हो एडमिनो भाई फ्लाइंग किस दे रहे हैं मुझे। शर्मा आ गया मैं। टिंगो पी ही कहते हैं। 39 माधुरी दीक्षित नाने। यश भाई आओ डिस्कॉर्ड पे लेते हैं भाई। हेलो हेलो हेलो। यो यो रिक भाई। यो बॉयज बोलो क्या सीन रुद्र भाई बोलो। क्या रे भाई क्या किधर यार किधर यार मतलब बुट कैंप पे। आप तो मैं इंगोर कर रहे हो इंगोर। क्या इंगोर कर अबे इग्नोर होता है। अच्छा इंगोर। अच्छा वो ओके हाँ बोलो। लेजिट मैं सुबह 3 बजे सोया ठीक है। मेरा आज मीटिंग था 10:30 बजे सुबह और मैं 7 बजे उठ गया। फिर मीटिंग में गया फटाफट आया। 1 घंटे सोया हूँ मतलब 5 घंटे टोटल देख लो ना। मैंने कहा चलो लाइव कर लेते हैं फटाफट। भाई गेम तो भाई लेट्स को जीत गए। खेल रहे हो क्या ये करो। हाँ जीत गया। वो करो वो खेला था एआई वर्सेस। अबे नहीं क्विक मैच खेलना है आपको। भाई मैंने वो किया टॉप किया भाई। क्विक मैच खेलना है और शेयर स्क्रीन करो। करता हूँ स्क्रीनशॉट मार। ये कुछ आया है इसमें मैं दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट दे। बताओ रिक भाई क्या करना है। साहिब भाई डिस्कॉर्ड आओ। अच्छा लाइव है तू भी लाइव है। अरे क्या बात है लाइव है तभी तो मैं बोला कि मैं AWC का वॉच पार्टी चल रहा है तो मैच है। सही देख मैंने स्क्रीन शेयर करा है। हेलो हाँ बोल। हाँ देख ये इसका कुछ करना है स्क्रीनशॉट लेके डालना है। हाँ इसका लेकिन ये वर्सेस AI वाला है कि क्या है। ये वर्सेस AI वाला है। एक बार ले बट नॉट श्योर कि काउंट होगा कि नहीं बट क्विक मैच का काउंट होगा। क्विक यूजुअली ले लिया मैंने। क्विक मैच खेलना है वो ट्यूटोरियल पूरा खेला ना। हाँ पूरा वो स्ट्रीम पे पूरा खेला। क्विक मैच का एसेस लेना है ना। ये स्टिंग बाय क्विक मैच का एसेस लेना है। क्विक मैच का समरी का हाँ 3 उसके ऊपर तेरे पॉइंट्स मिलेंगे। 3 इज फॉर एलिजिबिलिटी एंड उसके बाद अबे कल PMVC देखा नहीं भाई। कल PMVC नहीं देखा मैंने। कल आई थी PMWC भाई। तो मैं क्या करूँ वो तो तेरी गलती है। तू 5 घंटे सोया है तो अरे भाई यार मेरी ऑडियंस मेरी ले रही है भाई। हेलो साहिब भाई। हाँ if they are able to solidify a win, they can get those 250 points that they need from the Lenovo क्या बोल रहे हो। stage alone. हाँ आ रहा है मैं बोल रहा हूँ आपने वो डिलीट किया दोनों। हाँ अभी स्क्रीन शेयर करो। मैं दूसरे इस पे जा रहा हूँ VC पे इनको बोलकर फिर आता हूँ रुद्र गैंग। हाँ स्क्रीन शेयर करो। We're heading into Group B today for PUBG Mobile. Whole new group of squads getting into our competition, and we're going to see how they manage to do today as well. So check back in just a little bit later. Thank you, Glitter, for that CC update. But right now, ladies and gentlemen, we are getting EWC records broken here at PMWC at EWC 26 as E-Arena puts up a cool 39 points, Max. Absolute madness, record-breaking Rondo, and just like E-Arena, हाँ क्या बोल रहे हो? the rooftops right now. Even hit one stadium. हाँ तो पहले उस पे मेरे लिंक पे जाओ फिर से। Lovely stuff indeed, and in particular, it's not just the rooftop in particular that was interesting here, Nipchira. ऊपर हाँ. They got so many eliminations. There was Tiamba, there was Wolves, there was Nongshim Red Force. You threw everything at create account. And that's what you want to see for a team of this caliber. They have ये Google situation just running through the basement, getting rid of all those players that were hiding out, going up onto the top and going, okay, now we have ऊपर देखो कुछ आ रहा है क्या सर्वर का? डायरेक्ट हो गया। अरे आपका ऐसा क्यों हो रहा है? आप ही का किसी का ऐसा नहीं हो रहा है, आप ही का ऐसा हो रहा है। वो देखो फिर से
वो जो वहां पे लॉगिन वाले टाइम पे ही वहीं पे आएगा, वो लोग बोले। और ये सिर्फ आप ही का ऐसे डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो रहा है, वहां पे लिखने का ऑप्शन आता ही है। आपका राउटिंग यहाँ पे सर्वर वर्वर यूरोप का हो सकता है, इसलिए शायद यूरोप का ले रहा होगा। यूरोप का सर्वर पिंग मतलब कम आ रहा होगा आपका वहां से, इसलिए यूरोप ले रहा होगा। ऐसे कुछ हो रहा होगा, तो आपका पता नहीं वो ऐसे रिडायरेक्ट क्यों कर रहा है। चुनने का मौका ही नहीं दे रहा भाई। रुको अभी अभी फ्लिक मारेंगे, ठीक है? आप कुछ भी नहीं दबा रहे हो ना कीबोर्ड पे? नहीं नहीं नहीं, कीबोर्ड पूरा ठीक है मतलब। अच्छा रुको 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 रुको, ऊपर देखो राइट साइड पे साहेब 24 आ रहा है, वो वाले को ड्रॉप डाउन करो, क्या आ रहा है? ये सब आ रहा है। अच्छा ये लॉग आउट करो। हाँ अब इधर कुछ आ रहा है, क्या है योर लोकेशन? गो टू द वेबसाइट। हाँ गो टू द वेबसाइट ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन, वो करो। हाँ अब करो गूगल पे। एक्सक्यूज मी। अबे आपको फिर एक नया वो बनाना पड़ेगा, ईमेल आईडी। ये दोनों तो ऑलरेडी यू से खुल रहा है ना। और इस बार आपको वो लॉगिन करना है, टाइप करके लॉगिन करना पड़ेगा। जो दूसरा है फिर उसको टाइप करके, गूगल नहीं क्लिक करके आपको टाइप करना पड़ेगा। अरे हटा दो ना टैब, इसको लॉग आउट करो और वो टैब ऊपर से काट दो ना। इधर आएगा नहीं आएगा, अभी वो इसी में खुला है, अभी इधर ईमेल एड्रेस मारो। 39 points guys, fucking bro, crazy. 29 eliminations, 39-point game, record-breaking rondo from these guys, and we checked it earlier. Right? How many points were secured by the fifth place cutoff team in Group A? It was 88 points. They're basically halfway there in one game of rondo. I mean, that's how you want to do it, really, when you only have 2 days. I mean, we saw it from Fourth Thrives in PMGO Season 1, right? You do this, you have this kind of day, you have this kind of game, and you are kind of set for the rest of the day. They have to just be consistent, not a lot of points, not a massive win. They're good to go now. They can relax and they can chill now. Yeah, I mean, really having a good time in this game. You know what? Looking at all of these teams, it felt like it was not 16 teams, it was just one team. It was the E-Arena show from start to finish. But when you get to stadium early, when you're able to defend, the way that they were able to actually defend against Wolves as well. Wolves didn't even want to push out. Wolves just kept using up a lot of nades. But E-Arena, cool, calm, collected, doing their thing. One team that we actually got a chance to see do their thing, even though I wanted to see a win out of them, it was none other than Alpha 7. Alpha 7 ended up with 7 eliminations, and we're talking about expectations for this squad. This is not a bad match for them. Continue. Yeah, it was good in terms of overall eliminations. A lot of those came from the hot drop, which is what you would usually expect right in Rondo. The hot drop gets a bit messy. Obscure actually putting up some good numbers this match. But I feel like the rotation into the zone itself was a little bit uneducated, not a lot of scouting done, and because of that they clash into, I believe it was ETSH. वो वाले आईडी से लॉगिन नहीं किया ना जिसमें से ऑलरेडी गूगल से लॉगिन कर रहे थे। ये नया। हाँ देखो एशिया, अब हीट दबाओ, प्ले नाउ। क्या होगा? रुको रुको, अच्छा इधर हो रहा है। हाँ ऊपर वाले को क्लिक करो। यही ना? हाँ अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, अरे बाबा क्रेजी रे वो। क्रेजी। हम्म।
nations in that game. I think they ended up with 7. We saw them take the fight with TT Project as well. Huh. We got a chance to talk with S Power. They're very confident. They're looking to make sure they end up going to the finals like OG was able to do yesterday. And before we actually send it over to Barney, Max, show us again what were those peaks like? There you go, Barney Lace, take it over while we'll try to see if we can find a step line to get out from here. Barney and Lace are on the side of the stage with Alpha 7 Esports. Let's go. Okay, I'm joined by Camilla. I'm joined by Patala, of course, from Alpha 7. First, Camilla, I'd like to ask you, how many of you have come out here to support the team here at PMWC? We're एक काम करो मैं डाउनलोड करके आपको कॉल We करता हूँ ये ठीक है came all the way from Brazil just for this championship. But there are many of us still come and Wow, we've got more to come, Lace. Oh my goodness. And Patala, obviously E-Arena just had a 39-point game. Do you think Alpha 7 can catch them? Of course, we're gonna destroy them all. We're gonna destroy them all. क्या बात है? Goated team. I can't believe it. Camilla, obviously this year hasn't been the strongest year for Alpha 7 so far, but obviously that can all change. If you could give a message to the boys competing here on the main stage right now, what would you like to say to them? I'd like to tell the boys that we really believe अच्छा ये अल्फा वाले बांगड़ा कर रहे थे. we're taking this trophy to Brazil. अल्फा वाले बांगड़ा कर Taking रहे it थे. to Brazil. Alpha 7, do you think you can do it? Yes. I think they can do it. Monsters, over to you. Hands down, probably one of the best supporting staff and fans is Alpha 7. They are fantastic, always here, providing support to the boys on the stage. And again, they're always coming out smiling, no matter what. And you know that's because whenever they go backstage, they're always surrounded by love. So I think for Alpha 7, it is a good. Again, it's just one game. It's just one game so far. I really हार गए तो हाँ हारने का भी लो. the E-Arena show. अरे हमारी टीम वाले ब्लॉक कर रहे हैं मेरे को. वो एसएस लिए ना? हाँ ठीक है आप खेलो फिर मैं सेकंड मैच शुरू हो रहा है तो मैं उधर हूँ. कुछ भी होगा तो आप चैट में आके बोल देना. चैट आप किस बात? अरे वो डालना रहता है कि हमने ये रेफरेंस के थ्रू ये गेम खेला है. आप भी खेलो साथ में आओ ना रियुक भाई साथ में खेलते ना. अरे मेरा वॉच पार्टी है रे एडब्ल्यूसी का. अच्छा ओके. Rest for the day, boys. You've done 3 games in one. But we are heading down towards the south side. This is a hilarious score line that you can see on the left-hand side of your screen there. 29 elims. Next best is 8 because they stole all of them. But Aura, I think a lot of people expected Aura to do well. They got far into that game. Sadly, weren't able to deal with the 2 angels. हाँ मैं डिफेंड कर लूँगा तुम खेलो आराम से कोई दिक्कत नहीं. Straight back to hell, which was crazy. भाई सेकंड मैच में प्रेडिक्शन. सेकंड मैच का स्टिंग भाई अल्फा 7 मेरे को लग रहा है. मैसेज क्यों डिलीट कर रहे हो तुम लोग? If not Alpha 7, then it's gonna be Nongshim. This guy has been putting in work. He's doing a lot of good stuff. Let's see. Schweppes also glad to see he is continuing from throughout his career. ये वाले ये 39 खत्म है फिर तो. टॉप स्पॉट पॉइंट पे अगर किल मार दिए 20 किल. तब तो 59 इजी 59 हो जाएगा. 69 39 पॉइंट्स मारे एक मैच में. 39 पॉइंट्स. ये एरिना. Let's just qualify 2 games. We're good to go. Let's do it. नहीं. As do Alpha 7 though, to be fair, over towards the north side of Everest. Wolves might go past ruins, something like that. But wait and see. A lot of water in this one. We're getting a lot of space early on. Remember, there's this huge amount of fields down towards that south side, so rotating through there. Some of the sight lines might get sketchy for some of our squads. This one, like you say, cutting out a fair amount of that landmass with the first shift on the circle for some of the teams further back as well. हाँ तो मेरा था स्टिंग भाई यस अल्फा 7 और नॉन्गशिम इनका मेरा प्रेडिक्शन. आपका क्या प्रेडिक्शन है आप चैट में लिखो. मैं डिफेंड हो रहा हूँ. अरे क्या ये ड्रॉप फाइट है. गॉडल मानिया नॉक फिनिश. अरे
That's an opening pick. No follow-up. You were isolated to one free elim. Godlike down to a trio. That's a tough thing. That is a tough thing about this kind of playing path is you're not always going to get your ideal. यही जगह पे आरू भाई का भी फाइट हुआ था और आरू भाई भी नॉक फिनिश हुए थे. मेरा अल्फा 7 टियनबा ओके. जॉर्ज पूल जोन नाइटबोर्ड को पता है. अच्छा देखो अल्फा 7 ऑलरेडी जोन ले लिया है. क्या बात है. Playing a little bit fast and loose there, honestly. See if Godlike can bounce back with just the 3. Certainly possible. Revo obscure Carilo ये घुसाओ. So no need to hit panic stations just yet. Obviously does make your life a little bit harder on this one to be able to come out swinging into the first more consistent battleground we're going to see today for these squads. But Hora वाले ही मारे ना. A trio can still get move up from Hora off the back of it as well, clearing some distance swiftly as they welcome to the zone. Irangal करना पड़ेगा. The arena are taking some nice distance towards each other as well, splitting off to either side of the coastline so they can loot happily. No reason to stick into each other. Alpha 7 vitality. Tiamba. Again, these guys started really well on the last match on Rondo. They look good. इस मैच में नहीं कर पाएंगे. Happy to see them play the way they did. They are rotating to mill to power though, which is somewhat concerning. I don't know if they got the memo that the circle's on the northwest side. But loot is a necessity. And again, with that kind of playing path, you are sort of strapped for options. They'll pick this one up. Head on out later on. There's a lot of teams just not moving either. They know that moving into the circle is going to be tough as it is. I'm half expecting Aura, after situating themselves in Yasnaya, likely will make a northern rotate past shooting range, try and play off the back of that, potentially over towards box compound, take a stop off there. Bit of an earlier split off as well from S2G. Handled themselves pretty nicely in that opening game on Rondo, to be fair, with some of the situations they were thrown into. They had good mechanics at least with some of the fallbacks. I also thought that where they set up afterwards on the pillars, that's good. That was good, right? Their initial engagement was clean. Then they had a game plan, set themselves up center, and then we kept pulling over towards stadium. And it was only a matter of time before they got swarmed by tons of teams. But I think the game plan overall and the gun skill that they displayed last game is really promising for S2G. और बताओ साहिब भाई. Pretty happy about that. It is early doors though. Lunch वगैरह हो गया आपका? As the day goes on. Dopeness on the south Ryuk भाई एक सरप्राइज. बोलो सिंह भाई बोलो क्या सरप्राइज? Now TT Project similarly trying to rotate up on that west coast. ये the arena though they have 721 GS down. They're rallying around it at the moment. ये कौन सा वो है बे? 721 GS है? एक तो स्पॉन्सर है इनमें से GS तो नहीं है. 721 स्पॉन्सर है. 721 है to get themselves back into a better position inside of the zone and set up on this one. Non-Shin Red 4 starting to make their entry with a trio from Godlike on a bit of a split of either side. S2G going right down through the middle. This is the bridge crossing from Vitality as well. No one there to attempt to deflect it, so it's a free pathway out from Sivnovka to get back to the mainland. They'll be happy with that. They're spawning anyway. Again, I feel like this is nerves more than anything. अरे ये वालों ने मारा. अरे भाई ये लोग तो धोती खोल रहे हैं भाई. You genuinely don't really need to worry about making this bridge crossing. I think it would be almost a bad play. तो धोती खोल रहे हैं भाई. But it's always a possibility, right? So they're going to take it slow in the meantime. Axel's already made it halfway up the bridge and probably is going to try and get a little bit further up here. Federales holding behind. नहीं ये वाले पुश करते हैं उसपे. उसका वो Omnitrix भाग गया. Omnitrix लूंगी उठा के भागा है भाई. Need to get into position. There's not a lot of spaces to take up here. Yeah, you can't afford to have the paralysis by analysis of wasting too much time on that one. In the midst of all this, we did see that opening knock that came out from Schweppes, now converted into a full elim there. That was Wolves that got slightly too close. Sting bhai, thank you so much for the Ryuk ke those membership. Sting bhai. Thank you yaar, Sting bhai. Welcome to the members.
थैंक यू स्टिंग भाई। मैं वो वाला हटा दिया हूँ अभी के लिए, जो अलर्ट है वो फिर से लाऊंगा। वो अलर्ट में कुछ ग्लिच चल रहा है स्ट्रीम लैब में, बट बहुत जल्द लाऊंगा उसको भी। बट थैंक यू सो मच यार स्टिंग भाई, लव यू यार। एकदम भाई फ्राइड राइस खाने का मन था, एक लड़की को बुलाया, उसने बनाया पैंचो क्रेजी और चिली चिकन मैंने बनाया। ओ यार, एक लड़की को बुलाया मतलब क्या, कुक को बुलाया या क्या, दोस्त को बुलाया? What do you mean by एक लड़की को बुलाया? Alpha 7 back to basics in North George. Well, how that zone was off the back of the plane. Thank you asking भाई, love you दिल से शुक्रिया मेरे भाई। They've not had to really run too many risks early doors over the course of the past 8 minutes. Just been able to loot and sit pretty, getting a lay of the land established. Fairly late rotates for some of our squads as well. Obviously, we saw Team Amber fragment off go over the Milton. They're still going to be coming in late onto this one. Vitality now entering the safety of the zone. Looks about to move. अरे माधुरी, एक काम करो मैं पानी में खेलूंगा भाई। मैं ना ये टिप पे खेलता, अगर होता ना मैं ये टिप पे खेलता, इधर लेट जाता, किसको आना होगा आए, ना आना है नहीं आए, मैं इधर खेलता। Here they are getting magnetized again. But again, it depends how they want to finish this out. We have seen plenty of teams in Group A get good circles. King is into Ryuk army. Yes, King भाई, thank you यार, love you, दिल से शुक्रिया भाई। याद है भाई अक्षय कुमार ने पूरे स्ट्रीम पे थैंक यू बोलते रह गया था। अक्षय कुमार आए, समझा नहीं अक्षय कुमार दोस्त है, तो दोस्त बोलो ना। फिर एक लड़की को बुलाया था, व्हाट डू यू मीन बाय एक लड़की है? लड़के किसी को बोलते हो तो ऐसे बोलते हो ना, एक दोस्त है वैसा, दोस्त को बुलाया। ये जेंडर को बुलाया, ऐसे क्यों साउंड कर रहा है? एक लड़की लड़का बुलाया, ये नहीं, ये वाले फिर से मारे भाई, ये वाले नाम ही नहीं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे बे लोग तो। बेस्ट पूरा कंज्यूमेबल झील कलेक्ट करके बैठे रहो। हाँ ना, एकदम उधर बैठूंगा आराम से, उधर बीच में चेयर बैठा के बीच ही वाइब्स लूंगा जब तक कोई आता नहीं है। जैसे ही कोई आएगा एकदम फॉर्म पकड़ के हेडशॉट। भाई AWM कोई ज्यादा आजकल यूज भी नहीं करता है ना, बहुत कम देख रहा हूँ आजकल AWM। Over these 2 matches so far, sat down there with TT Project. So I think that Nongshim Red Force want to turn that around. This is a team. Drop में आता भी है आजकल, लेकिन नहीं आता है, आता है तो लोग लेते नहीं है ना कैसी। This year. अरे अच्छा वो मिरर है, would love to go straight towards the final. गाड़ी अटक गया है, qualify through to the next stage of the tournament. But goodness me, if we took a look at the map right now, you can see just how jam-packed it is. We have one team playing on Everest and Aura. Everyone else, like I said, is in that horrible tunneled zone on the western side. देख रहे हो Alpha 7 का लोकेशन देखो बे, मेरे पूरा जहाँ पे मैंने मार किया था, देखो मैंने यहाँ मार किया था और वो लोग यहाँ खेल रहे हैं भाई। Alpha 7 is me bro, Alpha 7 is me। The fact that we still have about मॉडल वाले PMGC में लास्ट यूज हुआ था, बताओ भाई। इसमें यूज ही नहीं हुआ है, मतलब बुरा लगता है। आर्टिक वॉरफेयर मैग्नम जो इतना तगड़ा नाम है गन का, और उस गन को यूज ही नहीं हो रहा है। Seeing how much of a backup plan you've got in terms of adapting with these circles, like you're saying, it's not a regular game. It's not normally. No, it's not, but. Oh no! भाई पानी में ही जाते जा रहा है ये तो। भाई ये तो 50% पानी में है, 60% पानी में है ब्रो। अब देखो गॉडलाइक क्या करेगी भाई, 3 मैन वहाँ पे तो भाई मुश्किल है। Alpha 7 चिकन है, बस उनको डिफेंड करना है अपने एरिया। The best spot Alpha 7 can be in right now। क्या रोटेशन मारी है। AMR ग्रोजा फार्मस ये 3 रखते कैसे हीरा हाथ लग जाएगा। क्या समझा नहीं।
अल्फा 7 ने मारा उल्स, अरे किल चोरी की, ओमनिट्रिक्स को मारा, ये ने मारा, टीटी ने बैटालिटी को मारा, बैटालिटी ने टीटी को मारा, बैटालिटी ने फिर से टीटी को मारा। टीटी के बाकी दोनों चले गए, ये पीछे दोनों बोल रहे होंगे साले बैगन तुम लोग को लिए में हम लोग फाइट लिए और नॉक होते तुम लोग पार हो गए। कैसा टीममेट है भाई, ऐसा चादर मोड़ टीममेट से अच्छा दुश्मन है भले, ऐसा ही बोल रहे होंगे। अरे वो घर में चले जाना भाई, वो घर में घुस जाना भाई, घर में कोई अगर 4 मैन लाइनअप आ जाएगी एकदम स्प्रे में हड़ताल मचा देगी तेरा तो। घर पे क्यों नहीं जा रहा है? Ada now moving forward, adrenaline shot in at stage 3. I mean, it's got to be done. The boys got 2 of them. You need a lot of adrenaline. Seriously bro, मैं बीजीएमआई पे सेफ कॉम्बो खेलता हूँ, अच्छा जो भी M4 AKM कॉम्बो अच्छा How well can they weather it? सही है, सही And है। they grit their teeth. रेगा मेंटेलिटी फॉर रियल है ना, वो एम फुल सेट एके क्या Still doing well, honestly, over towards this eastern side. Godlike. You see the sheepish nature of it. I'm going to replay here of the fight. Oh my god. Cinematic on that one. That was the follow-up pick onto Aphis. Neons was already down in the back line. Good defense there to make it very uncomfortable for TT. एकदम सोच रहा है अरे लॉन्ग रेंज नॉक है, रिवाइव तो हो सकता है भाई, एकदम सोच रहा है केजीएफ स्टाइल एंट्री मार के। उम्मीद ही कम है इस मैच में जैसे जोन कटा है। देखो ये बंदे को देखो चैट, ये बंदे को देखो, ये बंदे को देखो, मैं बोल रहा हूँ ना IM गॉड कौन है वो बंदे को जूम इन करो भाई, जूम इन करो, उसका ही बंदा है मेरे को लग रहा है ना। हेल्ला ब्रो हेल्ला, देख रहे हो मेरा आइडिया कॉपी किया है, मेरा स्ट्रीम देख रहा है, वो गेम भी खेल रहा है, साइड स्क्रीन में उसका स्ट्रीम चल रहा है मेरा माँ बैगन, मैं बता रहा हूँ माम, एनालिस्ट फॉर अ रीजन, क्योंकि लाइट में PUBG 2018 वाला ग्राफिक्स ही रह गया। PUBG लाइट बैन नहीं है ना, होना चाहिए था, वो किसने पहले से पुरानी आदत उठी। ट्रू ट्रू पावर भी है, एक ही बचा है आपको। necessary making the necessary maneuver, hanging out all the way towards भाई क्लिप किस चीज का क्लिप मैं बोल रहा हूँ भाई, एनालिस्ट hoping he can clutch on to his life at this point. ETSH, after completing their long rotate, do run into Yangon once again. And for the reigning champions, it's not been a great start to the tournament so far. Back-to-back blows taken their way. Vitality trying to win out versus Non-Shin Red Force. Yangon left with just smile, but that might turn into a frown if they can get the angle onto him. Cleaning up with the elims, make it uncomfortable for ETSH at least, but this goes both ways. Good molly, good molly. Ensures he can try and get the res up upstairs, but he's got to be quick about this. Fajita with a nade, looks to post it up. It's looking decent, tries to get the airburst on the balcony, I like that. But Smile dropped off the top side. He's doing good work here. A grin appearing on his mouth. Now look for one more. Okay, nice bro, 1v3. 1v4, oh my goodness. Crazy bhai. Welcome to international lobby. क्या मारा है भाई. भाई लेकिन W क्राउड, जो भी बोलो W क्राउड में ग्रुप ए में एक बार भी ऑडियंस का आवाज नहीं आ रहा था. ग्रुप बी में देख रहे हो ऐसा लग रहा है क्रिकेट के स्टेडियम में बैठे हम. कॉन्स्टेंटली आवाज आ रहा है.
With a good setup on this northeast side. We've got to go further though. रिक भाई आपका प्रेडिक्शन कौन सी टीम्स थी? मेरा अल्फा 7 और नॉन्गशिम तो बाहर हो गया, अल्फा 7 बची है। Don't know how they managed to snake their way over towards that spot. भाई वो देखो, उसको देखो, रायता को देखो, वो रायता एकदम बैगन बिरयानी खा के पानी में तैर रहा है बैगन। ओए ओम चली, अरे ओम लेट्स गो स्टिंग बाय। क्या बोला था? मैं जो बोलता हूँ वो होके ही रहता है। कमेंट नॉक हो गया, फिनिश हो गया, फिनिश हो गया। चलो कोई बात नहीं गॉडलाइक भाई, इसका तो इम्पॉसिबल जोन था। सिंह भाई, रीराइटिंग द हिस्ट्री, यू आर वाचिंग द हिस्ट्री, ये याद रखो। हिस्ट्री के क्या बात है भाईगन। बड़गो ये एक ही बात बोले जा रहा। कौन? क्या बात है, देख लिया। अब पता नहीं कब देखने को मिलेगा ओम से उठाना। बताओ वे, मतलब मैंने ग्रुप ए के मैचेस में नहीं बोला, ग्रुप बी के फर्स्ट मैच में नहीं बोला, लेकिन सेकंड मैच में बोला। और बताओ देखने को ही मिल गया स्टिंग भाई। Just disgusting. I mean, no one's having a good time right now. Morman bhai, the wall's been pretty much giving themselves a lovely little lifeline here as they get towards the top 8, and necessary might just make it through. Some loot crate off the back of it as well. See how far this lone wolf can go. क्रेजी था कि नहीं? इसी बात पे लाइक कर दो चैट। कम ऑन लाइक कर दो। Going for his wrap on his own. Razy looked to try and close the distance, going for a similar crazy play. Had a bit of a vehicle there down towards the coast to at least get some distance on it. Alpha 7 meanwhile they've been sitting and waiting for a fight to come. उसका भी बचा हुआ एक बंदा भाई, लोन Vitality have been farming up the ELIMs as well. A bit of a sleeper team with how they've just third party. 11 finishes, Vitality. Finally, their eyes light up and they want to go for the wrap straight in. This is what Irina had to do. It's a miracle, by the way, that they get 3 players over towards this location, because Vitality, they were waiting for that moment, waiting for them to leave the building. Luckily, they rotate over towards the roadside, get a tiny bit of sightline cover. अरे S2G मार मार मार। S2G तो गई भाई, S2G तो गई। S2G also similarly tries to make a good rotate, but it's Alpha 7 still taking those shots. Irina similarly also sending bullets their way. Aura makes a move in the midst of all the chaos on the northern coast. ओ भाई, A7 रोटेट करने पे खत्म होगा भाई। A7 को रोटेट करना ही नहीं पड़ेगा मेरे भाई, जोन में है वो ऑलरेडी। Is Alpha 7 with a peak जोन में है, क्यों रोटेट करेंगे? Good shots in. Vitality finally take the fight back over to E Arena. They wanted to catch them on the egress. Instead, they'll push. भाई Vitality आई, EA को भगा दी अपने पोजीशन से। लाडले, क्या बात है। टियान भाई भी गया अभी, दोनों भाइयों का अभी अल्फा 7 लास्ट प्रेडिक्शन हो गया है ना। क्या बात है। Let's go, let's go. Vitality forcing them out the way. A 12 elim game here on Erangel is pretty damn good, honestly, from where they were playing. Alpha 7 and Vitality. Two organizations that will look to take blow for blow right here and prove how much Vitality is also looking strong by the way. Necessary deep back on the tip of the map that's still in play. Rita still going for his lengthy rotate to give himself a chance to steal away points from the other remaining squads, and Hora keeping it calm on the coast. Rita's come on right now, looking to make landfall eventually. Razy, Vinade up front. Surprised Carrillo was able to sidestep that one. It is scary though, having Razy and Razak together here. M79 pulled out to try and create a little bit of cover in front of them, but don't know if he's got any more shells left in that bad boy. Revo moves up though, nade in hand, pulls out his a little bit later. वहाँ पे एक तो फटेगा। Vitality. अरे पहले रेवो फट गया। We want to see what's going on. कारिलो भी फट गया।
Carrillo's down, Obscure might be next, leaving them just one player now. Guizhou on top side gets absolutely obliterated, and Vitality full of life with his end game. They line them up and knock them down. Vitality के पीछे Wolf Punch. 15 elims on the game so far. And for Alpha 7, it all falls onto the solo. What can you Fata, oh my god, ये need भाई. Goodbye, Razy. As Alpha 7 are looking to clap straight back and give as good as they get, but Horror see them. Backstab shots from No Fear. क्या need मारा है भाई. Rolling towards him. It's an inexorable approach. Smoke नहीं है ना बेचारे पे. Wolves को देखो बे अकेला lone. ये को knock करेगा. अरे नहीं रे. His stream as he gets up towards the top 4. Horror might have been pipped the post last game, but they're going for the chicken. ओए 1v3 अरे almost रे 1v3 हो जाता. Tries the might to hold on. He got the 2 clean knocks with the utility, but it's not enough in the full fight. But this has left a broken and bruised Vitality with only a solo, forced to get their players up. Horror cleared out Wolves. होरा वाले तो ड्यूक भाई का प्लान यूज कर रहे हैं बीच के पास. देखा मैं बोला ना बे, मैं होता तो वही करता और वहां से बैठे बैठे एकदम चेयर में आराम से बैठे एंड ऐसे करके अभी फाइट करेंगे और चिकन लेके चले जाएंगे लास्ट मोमेंट में. देख रहे हो कितना 5 किल निकला है, वो भी किसी और का किल मारे होंगे, धापे होंगे. मैं टीम गलत यूज कर सकता हूँ लेकिन स्ट्रेटेजी कभी गलत नहीं हो सकती, ये याद रखो. प्रेडिक्शन क्या लग गया है ना. 4v3 है अभी. अरे ओम है भाई. The sniper with a hell of a scope, waiting for the opportunity to leave them broke on the peak over the top of the ridge. If Vitality come into this, it's going to be on the back foot, an uphill battle. Down a man. क्या लगता है ये ओम से एक नॉक होगा? अगर यहाँ पे नॉक हो गया just waiting to strike. होरा नहीं कर पाएगा. उन पे जोन नहीं है ना और ओम है उन पे. एंगल फ्लैंक एंगल भी स्काई बिठा के रखा है. देखो अभी wraps round. Sky also similarly layering on the backside here. बड़ा body लगा शायद. Digging those bullets into the backside of the vehicle, creating those dents, but Circle moves away now. How do they approach this? It feels like an impossible game here for Vitality. अगर यहाँ से Vitality गेम निकाल दी ना तो गोट. गोट. Sleepy with a warning shot. The buggy comes by. Close quarters engagement as Vitality looks to hold on. No fear down. More damage done. 1v2. It's all on a solo of Axel as he looks to cook his way through them. Sleepy up front pulls out the AUG. The AWM doing nothing for him. Axel first left alive here. An incredible player on 9 elims this game. It's a hard fight though. A 1 versus 2. More top. अरे लग गया मौली लग गया. ले लवले लग गया. Backing off into the nades. It might be lights out for Axel soon. ले लवले लग गया. Oh, that's the nade to do it as Horror with a hefty bombardment on the. बोलो ना बहुत मुश्किल है भाई, फिर भी वो लोग बहुत अच्छा ट्राई किया था. गुड ट्राई. And light up PERIPHERALS once again. गुड ट्राई बे. Horror though, it was instantaneous response. The speed. क्या fly high निम्स है अरे. Oh my days. Gains pulled out in the second game. True भाई, true भाई, really true भाई. Beautiful action there. Locked in, Rest in peace भाई. The best opportunity to try and force Wolves out of that solo position that was giving them so much control. Legend. To third party into the back. Like one and only legend. And left Vitality effectively in an open island. No cover, no chance. Salute for this bro. Team Horror. But an upward battle. I mean, Axel, he was spinning like crazy that game. Smoke on the tires because 9 elims almost made it more than that. What a wild performance from him, not only on that game, but shoot miss so crazy bro. Yes. It is funny that we had Aura crazy. Top 3 on Rondo, now in the top 3 again here over on Erangel. We seem to have a couple of favorites here, Jackie. Yeah, already establishing some of our lobby leaders. Hello.
And not even one of those statements where we'd say at the end Hello. of day 1, at the end of game 1, now going into game 2. आवाज आ रही है? It's just becoming भाई very सही crystal. टाइम क्लियर आ रहा है। Incredible out here. हाँ क्या बोल रहे थे बोलो। 3 गेम्स हो गए। हाँ हो गए। हाँ अब वो डिस्कॉर्ड पे जाओ, लीडर बोर्ड रजिस्ट्रेशन देखो लेफ्ट साइड पे। वैसे 4 गेम खेले इसने, 4 में से 1 जीता 3 हारा। 3 हार गया भाई इसकी। हाँ अभी अभी उतना जम नहीं रहा है। लास्ट के 3 के वो अपलोड कर दो। देखो एक सेकंड ऊपर करो, ऊपर जाओ थोड़ा ऊपर जाओ, थोड़ा ऊपर जाओ और थोड़ा और एक और थोड़ा। हाँ ये देखो, नहीं और ऊपर जाओ। हाँ ये वाला फॉर्मेट कॉपी करो, अपना आईडी आईजीएन के जगह अपना आईजीएन लगाना पहले। नहीं प्लस पे जाओ। हाँ ये वाला कॉपी करना। अबे दोनों एक साथ कॉपी किया है गंड। अरे पता है, रुकना। कैसा बैगन है भाई, एक काम को 3 काम करेगा वो। अरे कैसा बैगन है भाई। अरे चलना चल। हो गया। हाँ देख हे प्रभु बैगन। हो गया चल। हाँ अब अभी मेरे को टैग कर नीचे जाके। हाँ देखो ऊपर आया टैग, उसको कर। अब प्लस दबा के स्क्रीनशॉट अपलोड कर एक करके। लास्ट से कर, लास्ट से। हाँ एंटर दबा दे। अब सेम तीनों स्क्रीनशॉट के साथ। अबे टैग तो कर पहले। अरे कर रहा हूँ पता है मुझे। इतना भी मैं वो नहीं हूँ, ठीक है। अरे ऊपर आ गया, वो नहीं है लाला। अरे एकदम झंडरी है वो तो नहीं हो, झंडरी हो। हो गए दोस्त, हो गए। अभी इसके ऊपर जो भी तू अगर मैचेस खेल रहा होगा अभी स्ट्रीम पे, तो वो लेफ्ट साइड में देख बैटल रिजल्ट दिख रहा होगा। लेफ्ट साइड पे देख। अबे इधर नहीं, उधर ही डिस्कॉर्ड पे गांडू। हाँ बैटल रिजल्ट देख नीचे, जस्ट नीचे जा। हाँ देख, हाँ यहाँ पे अपलोड करना तो तेरे को पॉइंट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। ये ऐसे फॉर्मेट में अगर अभी खेल रहा है। इसमें भी डाल दूं मैं इस? नहीं वो सेम नहीं डालेगा, इसमें अप्रूव नहीं होगा। अच्छा ओके, सेम डाले। अभी अगर करेगा और भी जो मैचेस खेलेगा इसमें डालेगा, और कोई एजेंट अनलॉक किया उसका भी डालेगा तो उसका भी अलग से पॉइंट्स है। तो सिर्फ लास्ट में मेरे को पॉइंट्स मिलेंगे, कौन मेरे क्रिएटर के अंडर किसने ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट किया उसके हिसाब से फिर गिव है। तो मैं ऑफलाइन पे बैठ के यही करता रहूंगा। हाँ कर लेना। यप सही है ना। देख अभी ये कैंपेन 2 हफ्ते अगर चला, मान ले फॉर एग्जांपल, अगर 10 दिन भी चला यहाँ से, तो ये इफ यू प्ले 3 या 4 मैचेस एवरी डे, इट्स अराउंड 40 मैचेस। समझ रहे हैं? तो एजेंट्स अनलॉक के भी अलग पॉइंट्स हैं। ओके ठीक है। और अगर शॉर्ट्स अपलोड कर रहा है, शॉर्ट्स का भी यहाँ पे क्लिप भेज देना अपलोड करना। तो वो भी यही बैटल रिजल्ट? हाँ बैटल रिजल्ट्स पे, नहीं तो हाईलाइट क्लिप्स पे भेज सकता है, नहीं तो बैटल रिजल्ट्स पे भेज सकता है, जैसा तेरे को मन। सही, तो मैं शॉर्ट्स में बोल दूंगा ये बना के दे देगा मेरे को। हाँ तेरे को अगर वो भी अपलोड करेगा तो उसके ज्यादा पॉइंट्स एक्चुअली। हाँ तो वही करते हैं ना भाई, तेरे को पॉइंट्स मिले तो अपने को गए। सही भाई, तो मैं कर देता हूँ। चल मैं अभी फिलहाल तो स्ट्रीम एंड कर रहा हूँ। ठीक है। तू स्ट्रीम कब से कर रहा है? मैं 1.25 घंटे हो गए। तो 1.25 घंटे क्या किया तू बैठ के? यही खेला मैं। 3 गेम ही खेला? हाँ 3-4 गेम ही हुए। 3-4 गेम? पागल है क्या रे? 10-15 मिनट का गेम है, 1.25 घंटे। सुन मैं समझाता हूँ तुझे, मैं समझाता हूँ। तूने 10 मिनट का जो ट्रायल बोला था ना, हाँ वो साले मेरे को वीडियो ऑन करना, तेरे को गाली देनी मेरे को एक्चुअली। मैं 3 घंटे का वो मैं 10 मिनट का वो खेला, ठीक है। पहले तो ट्रायल, हाँ ट्यूटोरियल। तेरे को मैसेज कर रहा हूँ, डीएम कर रहा हूँ, तू आ नहीं रहा। मैं वेट कर रहा हूँ, मैंने कहा चलो आएगा रिव्यू आएगा, आ ही नहीं रहा साला। और अबे तो तू, तेरे को मैं बोला था ना कि गेम्स खेलना, समरी का खाली तेरे को वो करना है, स्क्रीनशॉट लेना। अरे पता नहीं था ना क्विक मैचेस खेलने, वरना तो मैं कब का खेल रहा होता। अरे ये लाला हो गया अभी। टेक्स्ट में पूछ लेता मुझे। वाह कितने टेक्स्ट है देखना एक बार। साले तू हेलो क्वेश्चन मार्क कॉल वो सब कर रहा है, टेक्स्ट में वो पूछ लेता।
एकदम झटरी है रे तुम, एकदम ये तुम दिखांशु पैंसू के साथ मिल के तुम एकदम तुम भी झटरी हो गया। वो नहीं एड्रेनलिन के साथ हो गया होगा। एड्रेनलिन जेट पे है क्या? क्या पता है, लाइब्रेरी में होगा। भाई थंबनेल कैसा है भाई? तो यार थंबनेल बता। इसका मेरा मैं बोल लूं? ठीक है, ठीक ठाक। मत वही बोल दे भाई, बोल दे, कुछ बचा ही नहीं अब। ठीक ठाक ही है, ऐसा नहीं है कि मैं ओह माय गॉड ऑर्गेज़म आ जा रहा है, वैसा नहीं है। वो तो नहीं आएगा ना, मैं खुद बनाता हूँ। अबे तेरे दोस्त को जब बोला था तू बोला क्या बोले वो? दोस्त को मैंने मैसेज किया तो उसका कोई रिप्लाई बोला ना वो ट्यूशन या कहाँ पे लेक्चर में जाके उसको बोलेगा। हाँ वो उसने वो मना कर दिया, उसने बोल ये सब गेम नहीं खेलता। ठीक है ठीक है, वो काम करता है। ये पिक्सप्लोर है वो खेलता है, पर इसका लैपटॉप नहीं है फिलहाल के लिए। आई थिंक मैं डाउनलोड करूंगा, सपोर्ट करेगा तो खेलेंगे फिर। देखते हैं 2-3 गेम तो है बाकी। मैं फिर कोई गेम में वाला जो होगा, किसी को ऐसा इंटरेस्ट होगा तो देखता हूँ। कोई तेरे दोस्त में होगा जो पीसी गेम में खेलता होगा, उसको बोलना अगर हो रहा है। बोलता हूँ चल, ठीक है सही है, चल बाय। तेरा मैं करता हूँ। और ये वाला अगर ऐसे आज शाम को खेलना होगा तो मैं EWC के बाद मैं खेल रहा हूँ, तो तू आ सकता है, ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है तो कॉल या क्या मैसेज कर देना ना, मैं आ जाऊंगा। चल ठीक है, ऐसा 8:30 फिर भी अप्रोक्सीमेट टाइम पकड़े रहे। सही है सही है, ठीक है। अगर मेरे को बार-बार जाने का हुआ तो मैं फिर तेरे को बोल दूंगा कि आज नहीं होगा, बता देना। डन सही है, सही है। And because of that vitality, what an absolute banging performance. 23 points here on the second game of today. Whew, La France is looking pretty good. They are looking really good. I mean, vitality. Can I join Ryuk भाई? किधर स्टिंग भाई किधर ज्वाइन कर सकते हो बताओ? We were expecting teams to be a lot more aggressive. 3 गेम हो गए लाला, 3 अच्छा ये तो पढ़ लिया। गाइस लाइक कर देना प्लीज, जो भी स्ट्रीम देख रहे हो प्लीज मेक श्योर कि आप लाइक कर दीजिए, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना प्लीज। साहेब भाई हो क्या चैट में? अच्छा हाँ, वो लड़की ओम का साउंड निकाल रही थी, लेट मी सी क्या सीन। Sound possible. Keep in mind, sniping the there stuff, but Horror in general really able to circumnavigate a whole lot of traffic coming on through there, Max. रात को गेम में यार श्योर स्टिंग भाई क्यों नहीं? Only plays they could have made, and it worked really well. Max, remind me which bolt he was using. The arm. The arm. All right, Lace. Thank you for joining us. Glad to have you here. I want you to give me the best arm sound possible. Keep in mind, sniper is gonna sound amazing. The best sound. It's every shot is like pure ASMR. देखने में मजा आएगा। Boom. Baby. All right, Max, you next. Okay, on me. On him. Put it on him. On me. Get the camera on this, man. Boom. Mine was better. Nep, you're next. You said ASMR. All right, get ready. That sounded Arm sound. AWM. Come on. Choo. What? Did you sneeze? That was a sneeze. What? Okay, for everybody that has been making videos of PMWC at EWC 26, there you go. There's the challenge. Go back to that last game, have Sleepy, and replace those sounds and see which one was the best. Make sure you guys share it on social media using the hashtag EWC and hashtag EWC26. But talking about teams that were able to perform so good, we have to talk about Vitality, Lace. Man, the whole entire game from them was absolutely incredible. They basically had bridge. They were able to hold that position so early. They were the zone 3 gatekeepers of that entire match. They had direct lines of sight on everybody that was rotating in such a difficult choke point. Sneeze नहीं तो अभी suppressor sound है। On stream खेल रहे कि off stream? On stream खेलूंगा, ज़्यादा नहीं, ये खत्म होने के बाद ये अगर जल्दी तो क्या ही खत्म होगा। 8:30 तक हम एक्सपेक्टिंग खत्म होगा, एंड देन 1 घंटा खेलूंगा 9:30 बजे तक, so you can join.
And then obviously they set their sights on Alpha 7. Alpha 7 had nowhere else to go but to exit building, so they'll be able to do that. In first place with 46 points, with the amazing performance that this squad had in the first round, though. Not surprised. Team vitality there with that second. Remember, if you for some reason missed the first 2 days of PMWC at EWC 26, the top 5 teams at the end of tomorrow will be going directly to the finals. The bottom 3 will end up going home, and everybody in between will go to survival. And yeah, I mean, TT Project, Hustler Crew as well. One team that wasn't able to perform that well here in this Erangel was Godlike. Godlike started off hot, and we were kind of joking about it. The first game that they get a chance to experience at a global event is none other than a stadium finish. But here we're gonna have to see a bit of a bounce back. I mean, to be fair, I'm gonna be so fair to them. You said yes, their first rondo in a global is gonna be a stadium. साला कहाँ है मच्छर मरा कि नहीं मरा? Finish. The first Erangel on a global finish is north of Zarki on a beach, or not Zarki, but the South George. Thank you, yeah. South George on a beach. Excuse me, no, thank you. So you know what? I'm gonna cut him a little okay, bit. I'll join Ryuk bhai. Okay, Sting bhai. Then I'll start talking about them. Now we're gonna get a weird circle again. Thank you. You did that. I'm not cutting. आज अगर जॉनी होता Godlike में तो क्या कहर मचता? I want this team to start performing and performing now. Because we saw what ended up happening yesterday. And with Godlike, the thing with Godlike is we know that they can definitely put up the numbers. We know they have the fragging power and with the audience that they have behind them. And with what we saw on G coming out of them, I know they might be able to bounce back. And we'll see how they're going to be able to bounce back towards today. But while we're at it, before we start match 3, let's take it over to Colaris. जर्सी का कलर एकदम नियॉन टाइप है, पर चमकता है भाई. That's right. Well, you know what? Here on the stage, we could talk about Game 2. We could. Well, Game 2, sure, lovely. But what about Game 1 though? इस बात पे गुड नाइट का एडवर्टाइज कर लो. They swept the floor with everybody. एक मच्छर है, पता नहीं कहाँ से घुस गया है वो इस रूम के अंदर, और मेरी लाइट के सामने इधर उधर हो रहा है. पता नहीं मरा तो नहीं है. गुड नाइट वाले अगर कोई देख रहे हो तो यू कैन स्पॉन्सर. आई एम ओपन टू स्पॉन्सर. एंट्री का बात बोल रहा. अच्छा एंट्री एकदम मुंबई इंडियंस का जर्सी जैसा. मुंबई इंडियंस का तो ब्लू है ना, ब्लू में उसका गोल्डन का खाली स्ट्राइप थे जो नियॉन टाइप है. इसका तो पूरा जर्सी ही नियॉनिश है. To get straight into the action as soon as those recoil towers closed off, they were like, no, we're just going to play bread and butter. And you can see the double drop here as well to kind of look at how they're able to seal the deal. Not only that, are able to defend the zipline locations to make sure nobody else was coming up on the roofs. Mara. So it was picture perfect. And you know the finally Mara. That interview with Joker, he said it was lucky. Mara chat. I don't think it was lucky. Machhar. That's ridiculous. Anyway, thank you very much for this, John. It is time now to head on over. Mar gaya Machhar chat. Once again, game number 3, well underway. Finally, hit from John to get us back over to the commentary booth as we set the stage for another game here live from Paris. A lot of energy in the building, a lot of excitement. ये ओ बांगड़ा कैंडी ओए. W सपोर्टर्स है भाई, वो अल्फा 7 के W सपोर्टर्स भाई. लेट्स गो. एक बार खाली PMWC इंडिया में करा दो. Give us some of that. Let's get loud as we get into our third game of the day. क्या बात है. आज ryuk भाई का रील्स वीडियोस देखूंगा, मजा आएगा. बीसी रील्स वीडियोस not doing too badly so far. कौन सा रील्स Arena वीडियोस? took to the stage on that first game of Vitality or not. कौन सी रील्स वीडियोस की बात कर रहे हो? Been taken along to 16 points. S2G big surprises right now. 15 points so far, looking fairly good. 13 eliminations. What this shows me is that come on, Godlike, let's go. They've only been getting 2 points of the backup placements right now. Jai Mata Di. Bringing some of that action to the arena at the moment. Lovely to see. Another awkward play pan down from Sosnovka. Very east leaning here. आज अच्छा ये तो पढ़ लिया. ओमेगल. अच्छा ओमेगल, अरे ज्यादा नहीं है उसमें, लड़के ही नहीं मिले थे यार. ओमेगल वाले जो है मेंबर्स ओनली स्ट्रीम किया था, उसमें ढंग के कोई लड़की नहीं मिली थी भाई. लड़कों से ही बातचीत की थी. फिर मेंबर्स ज्यादा कोई यहाँ नहीं रहते तो मैंने 2-3 ही की है मुश्किल से.
कोई अगर मेंबर्स होंगे ना तो फिर मैं रेगुलर मेंबर्स ओनली करने का सोचूंगा, बट होते ही नहीं है ज्यादा। रुक भाई प्रेडिक्शन बोलो फटफट। प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन इसमें रुको, मेरे को पहले जोन देखने दो, जोन देखने दो फिर मैं प्रेडिक्शन करूंगा। जोन देखने दो, लेट मी सी द जोन फर्स्ट। क्या लग रहा है? अरे भाई क्या जोन है ये! एक काम करो ना, क्यों मिरामार में जोन बना दो, इरंगल में क्यों बना रहे हो? Seal comes through with it. Miramar में बना दो। Nice start on this one. Down towards the south side. No eking their way up past the coast. इधर नीचे बनाओ। They get to start in a good position. This भाई ये कोई जोन है? northwest side. But Godlike already taking 2 knocks. अरे Godlike का फाइट हो रहा है, लेट्स गो। Let's see if they can withstand the full front. अरे एक नॉक, एक फिनिश, अरे opens it back up onto Loco. Oh, close quarters engagement with a shotgun. Good pre-fire on the angle. He gets it done. It's not the start they wanted. Hustler crew has been dropping on teams all day today. Do not care one bit. They lose Loco in the process, but feels like they've got their job done there. I think Godlike might need to start figuring out how they want to drop this one out, because they are going इस मैच में मेरे को लग रहा है drop, right? They're going for split loot around apartments. I think personally maybe they need to start dropping together, because where they're dropping isn't bad. Vitality It's bad because it's bad now because people keep dropping on top of them all the time. It's Vitality, so tough to work with. और So Godlike might need to make a Nongshim. change in that category. Vitality Also, and Nongshim I mean, का Hustler crew has just been all over the place. It's hard to predict for Godlike. क्या हो रहा है बे लेकिन Godlike के साथ? Keeping them guessing. Drop That change of pace has certainly been hurting some of our teams. Brutal to position to be left in immediately blank. Less than 4 minutes into the game, you're down to a solo. Hustler crew getting away. Yeah, sure, you take some damage, but a trio could still look to weave their way through. Squeeze a few more points out of this one. The longer it develops. आपका क्या है स्टिंग भाई? आपका प्रेडिक्शन बोलो जल्दी जल्दी। Join Naruto Uzumaki himself with the new Ninetales Fury org skin. Looks fantastic. 2 versions of it too. Love to see it. Get angry. Feel that rage from the Ninetales in game, because it looks awesome as well. I will go with A7 and YG. Okay, young one बोल रहे हो आप? For Godlike, it's been मेरा just been an Nongshim unfortunate Vitality. start. I mean, starting off with Horror dropping on them into Hustler crew. ठीक है, I साहिब do भाई feel नहीं bad है ना for them. chat I really में? do. We'll see if they can pick things back up going in towards our 4th Erangel of the day and then to our Miramars. We've seen that anything can happen. They can still work their way back अच्छा up those ऐसा हुआ था, rankings. okay, Down तो towards मैं that यहीं south पे side, that knock हो गया S2G था। do move on through. A quick replay. I mean, S-Power did hold it down. He's only got micro Uzi to work with. It's hard. It's hard in those situations. A vest as well, level 1 helmet. The fact that he held on as long as he did was pretty insane, to be honest, as well. Yeah, it could have been way worse. Ooh, Axel again. VIT ने मारा, let's go. Me, he is fearsome again. Coming into this for Vitality. मारो VIT, धोती खोलो, X2G lost किया, knock finish, let's go VIT. These guys perform before. They look great. अरे भाई We got to get into the top 5. मितिका, अरे Omnitrix, अरे बाबा उतार दिया रे। And they're certainly living up to the hype right now with some of the plays that are being made. We've seen these awkward encounters happening down towards Novka as well with the shots over. Everyone taking a few casualties here, and there Wolves only getting away with a duo off the back of things, and S2G falling very early here. For S2G, they stepped a little bit too close to Vitality's home ground down towards this south side. They want to clear out more space. You got Ryuk as well as Federales holding over towards the bridge, whilst Razy as well as Axel currently holding down C block. They have a lot of area to work with. They are feeling unbelievably confident. Hustler crew still causing problems for people around the map. Oh, swing out. Close quarters connections onto the Hustler crew. That's your single knock to play with, looking for more as they do take the fight back over to Vinny. Nade in the hand for the close quarters shut down. It's good damage, but can't find a follow through with a shotgun. Not able to withstand it as they are down and out. Revenge there for their hot drop. भाई ले
HC तो पहले निकल गई भाई. Getting away with that one in school. Now they do certainly teach Hustler crew a lesson. But we'll need to get on the bus right now to get down towards the south side of the map. Curious to see where this next circle goes, because this could be another nasty one where we end up on the bridge. Wouldn't surprise me after the circles we've seen today. Alpha 7 still keeping it pretty chilled out over towards Milta. Moved away from North George over towards this location of the map, considering the plane path itself. E-Arena, though, they took way longer. I mean, they wrapped back up towards South George. Gonna loot in this area, get as much as possible. I think they understand it's going to be a late rotate in. Nongshim सबसे नीचे यार, come on Nongshim. Grab some boats. King भाई क्या लिखे थे? Retract कर लिए. Is our Alpha 7 cameo as well. All together, getting their move on with the hovercraft crossing from the mainland back over. Tianba had that similar rotation, of course, as they do glide their way around. A few more style points on that one, Blank. Oh, definitely. Glide for the air does feel good. I mean, for Alpha 7 though, it's अरे mic off था, on हो गया फिर अच्छा. Like a lot of times when they make this approach, they're always expecting teams to be holding a Novo. Yangon Galacticos, on the other hand, though, they've headed over towards Observatory. They've got a split there. They're trying to hold out all teams. Cloud down towards the south side, though, is peeking over towards Alpha 7, but the hovercraft means they can immediately get out of the water and get on the move. You can just see him there, off in the west-hand side. This was the S2G fight where they were taken out by TT Project, the duo that tried to get away after their encounter versus Vitality. TT तो मार रही है रे. Come on TT. Right here, right now, taking pot shots onto Dopeness TT bit क्या by bit. क्या घूम रही है भाई? 2-3 नॉक मार दी फिर से. I mean, for TT Project, they know they've got to get some aggression under the belt right now. They are low down in the rankings, and they can't afford to let this game keep going the way it is. Ewc finishing out Kenji, and I think दो टीम को निकाल दी बे. Dopeness out now. We've already lost 3 teams. Hustler Crew, Dopeness, S2G down to 13. DNE और S2G दो टीम्स को बाहर की बे. Crazy TT. Carnage. Still 4-man strong. Nice यार. चलो. Okay. A little bit more standard. Yeah, good one. Land पे. हाँ मान्या किधर है? Centering up. We do have those buildings that sit down towards the already side on the eastern edge. They're currently Vitality just have free reign over. Razak might try and regroup. I think it might be a bit dangerous now, holding over towards C block as long as he does. ये rotation अगर सोचो 4-man के साथ देता मानिया. Sensible. This is mature coming through from Vitality. पूरा अभी zone के almost center खेल रहे हैं. We know that a lot of teams would like to take up position Crazy towards match here. नहीं They निकल don't want जाता. to leave it up to chance. 2 players getting run down. And even as I say that, Wolves start to make their way up, but they're caught up in between. Wolves ने TT को मारा बे, नजर लग गया भाई. मैं बोलता ही क्यों कुछ भाई. For what it's worth, they're keeping the heat on TT with how Wolves have played this one. A good squad individually. Zerix cleaning out towards the ground floor, makes it look simple as he busts around the door, waving the 4-4. Zerix with a nade. Nice. Ooh, beautiful bounce on it. Might be able to pick up effect here, but Vitality's having none of it. They hear the shots, they hear the fighting, they take down effect, they can clear out another building. This is just space gained, space garnered right now for Vitality. You might think Vitality are going to clean up on this one, mate. Watch this from Zerich. I can feel the energy rising. Power के आगे AUG था, लेकिन लिया नहीं उसने यार. टाइम भी था. 4-5 nades. लेकिन वहाँ पे पावर देखो, अगर ले भी लेता है, he still had Uzi, right? तो अगर टाइम वेस्ट नहीं करके अगर वो सिर्फ Uzi से भी एज अ क्लोज रेंज बीस्ट है Uzi कर सकता था, लेकिन वो सिचुएशन ही ऐसी थी वे, मतलब समझ रहे हो. ड्रॉप फाइट्स आर ऑलवेज ऐसा है कि अगर आपको मेजॉरिटी रहेगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा बहुत. ऊपर से समझ रहे हो पिछले मैचेस खराब गए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ऐसे ही थोड़ा कम है. ऊपर से ड्रॉप फाइट में तुम्हारा एक प्लेयर नॉक, एक प्लेयर ऑलरेडी फिनिश. आईजीएल तुम्हारे उधर कंपाउंड में है नहीं, तो इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट टू होल्ड द कंपोजर, टू बी पेशेंट एंड टू प्ले. समझ रहे हो? Wide play space to work with. Decent amount of cover in between the trees.
happens with the best of the best, so Just trying to can't wait say for an anything about that overextension. situation. Can't really hard commit and hold the angle right now. If you leave yourself exposed to the crosshairs, and Alpha 7 don't want to waste too much time amongst this until they feel they've got an edge. TT और Wolves देखो दोनों बाहर हो गए अभी। Godlike अगर पोजीशन पॉइंट से मारने वहाँ पे 2-3 फ्रैग्स भी निकाल दिया ना, तो we can climb up a bit. Circle could shift. Big fan Ryuk sir, अरे अक्षित भाई, thank you यार, love you अक्षित भाई, थोड़ा लाइक कर देना अक्षित भाई। और व्हाट्सएप में मैं एक DM कर रहा हूँ, उसका आप देख लो ना एक बार। आप चले गए क्या? अगर आप चले गए तो ये वाला देख लेना, मैं व्हाट्सएप पे DM किया हूँ देखो। एक व्हाट्सएप समझ जाओगे। Like I said before, a strong team, but we have not seen a massive amount of that. And again, we have had these pretty crazy तीनों पहले ऊपर है circles so far. Maybe they haven't been able to excel on those. Potentially here, we can see power something a bit 261 में वो भी है, लेकिन वो कभी Definitely finish a हो known गया। quantity with a ton of talent. But like you say, maybe not just been the right place at the right time with the abstract nature of the first two games we've had today as we've kicked off the action. Group B, bring in the heat. लेकिन तुम एक चीज नोटिस करो स्टिंग भाई, अल्फा 7 का रोटेशन 1 पॉइंट्स है ब्रो, बहुत काम किया लगता है अल्फा 7 ने PMGO नॉकआउट के बाद। लाइक पूरा एकदम जोन सेंटर पकड़ रहे हैं, फास्ट रोटेशन सेंटर, फिर लूटिंग एंड ऑल। That's why we haven't seen them for some time. Arena, in the meantime, did make the cross, by the way. Over towards the western side. They are rocking up over towards that ridge. There was a 2-2 here from Vitality. Arena rocking up on it right now. It's a little bit scary here, but immediately Vitality's backing off the angle. But they have information now. That's the big thing. Will Arena catch any of them in the process? Manya now up against Yangon Galacticos as a solo. Could have had the drop on him. Manya was hoping to at least get that one clothesline play. Introduce him to the shotgun, but he's exposed to Smile through the window. And Yangon do shut down the final member of Godlike. There's another squad exit stage left. Exactly, रुक भाई, कोई ना मैच है, कल का भी दिन है। Playing this one slow at the moment. Again, I love the way these two teams have played this one out. Arena was cautious on the approach. Vitality didn't want to hold this position any longer. Quick regroup down towards the eastern side. Tianba कहाँ की टीम है शिंग भाई? Like honestly, Vitality's playing like कहाँ की टीम है a finals team right Tianba? now. This is really cool to see. Layering up towards Arena, they've got the hovercraft in play. I think for Razak's got to be careful here though. Yes, he can keep gathering information. Make sure he knows exactly when Arena moves, where they move to, so they can plan out the rest of the game ahead of this. It is slightly dangerous versus Tony K, who's playing on the top of the building. You talk about slightly dangerous. This could be somewhat lethal. IDA और ATIS का फाइट होगा। ब्रिज कैंप है, oh my god. Watching the bridge, crystal clear line of sight. Looking to fire some shots onto them. The zone shifting in favor of Vitality's current position as well, with Arena in close proximity, and that battle does break out. Knockback over onto Emre, it seems like, though, for Ida. It's not gone anywhere near as cleanly as they were hoping for. It's pretty messy both sides. I mean, Ida has the opportunity to get all the players back up again. They're outside China in की the टीम है, play अच्छा zone. China की टीम है। So one player goes down there. Emre potentially getting him back up पूरा आ गई ईडा के ऊपर। But Aura, they sense blood in the water. They move up. Darkin with a P90. Looks to take some shots over towards him. But again, Horror. This is horrifying, honestly, for Ida. They're just poking their head slowly over the top, making it uncomfortable right now for them. You think with that very delayed rotate, they went all the way around the east side over the other bridge. Haven't had too many opportunities to get elims on this game. 32 points coming into it in third place in the overall standings after our previous two games. They're going to want a chance to fight. बेकार का फायर क्या? अरे वो सामने जाके मार सकता था ना? Wasn't the hard commit onto Ada, like you say. क्या पता थोड़ा रिस्क लेके मार देता तो नॉक हो जाता। Maybe.
Rest of our teams now focusing on forging a path ahead. But लेकिन बहुत जल्दी Well, the thing is that stage 4 में ही 5-6 teams they know there's a ridge line that sits down over towards Nongshim Red Force. They can play that, but they also understood they didn't want to get too involved with Ida. एक team एक squad एक one man है, एक team two man है. Over the northern side, over the rolling hills, and then swinging by E Arena and then trying to play off that ridge there. So for Horror, I think they just take their chances. They move down towards the high ground. They're going to isolate a lot this northeast side of the map whilst keeping their back cleared from Nongshim Red Force as well as Vitality. Alpha 7 in a pretty good position as well to possibly rearm themselves with some higher tier loot off the back of the drop. One of the times we've seen them not really taking early casualties as well, so we get the full force of Alpha 7 where they play their best PUBG Mobile. E Arena seeing the wrap round from Ida. And that seems to have caught their attention, perked their eyes up a little bit, but they're going straight down towards Tianba territory. I mean, right now for Ida, they were just shepherded by E Arena in the hovercraft. Ida does make their way up towards the building, but this is an uncomfortable position to be playing. Alpha 7 off the distance also trying to get involved there in the midst of the chaos. Darko in the P90 goes extremely matches खेल लिए क्या स्टिंग भाई? Tianba, they don't want to really leave these buildings too much. Everyone understanding that there are so many positions to play here. There are so many sight lines at play as well. That it's difficult to be making those rotations. I mean, Ida just felt the full force of 5 different teams all taking shots towards them. Terrified of E Arena, forced into Tianba, and then skewered by the backstab of Vitality. Alpha 7 even assessing the situation to see when they want to make a move. Zone still crunching in. Last few squads making their rotate in. Yeah. I mean, this is playable though, right? That's the problem for Alpha 7 right now. This is very playable in terms of the ridge line. They've got ahead of them that slight slope that looks upwards. Until they're forced to move, I don't think they're pulling off this position anytime soon. Aura opens up over towards Smile. Behind the missiles. Want to see if they can find Romeo underneath. Sleepy looking to do his best. Anti-aircraft. Over towards these guys, clip their wings. अभी तो वैलो खेलने जाऊंगा नहीं, एक साथ खेलेंगे 8:30 को. ओके स्टिंग भाई, ओके ओके. वैलो खेलने जाऊंगा, आप वैलो भी खेल रहे हो? बहुत जल्द बाय द वे एक स्टोर के साथ एफिलिएशंस कर रहा हूँ स्टिंग भाई. तो मेरे कोड्स रहेंगे, एफिलिएशन कोड, जहाँ पे आपको वैलो पॉइंट्स भी आप खरीद सकते हो एंड वैलो पॉइंट्स भी आपको डिस्काउंट रेट पे मिलेंगे. समझ रहे हो? अपनी और की वन ऑफ द सिस्टर कंपनी का ही शॉप है. That's really good. They spot Affiliations opportunity over towards GS and able to find a fair few elimination of the back. So you can purchase your battle royal passes, battle passes, Valo points, UC, anything from there. Not the spot they want to be in. And सब बहुत सारे games करेगा neighbors here in Alpha 7. 2 champions up against one another now. But the issue is blank. Heavy are the heads that wear the crown. And it's Yangon Phantom की skin लेना है, क्या बात है स्टिंग भाई? I will be grateful यार. किस चीज के लिए स्टिंग भाई? It's a real big opportunity there for Revo. 6 names though, and a rough idea of where they're playing. That might just be enough. Good arc on the first 2. Initial chip damage to aid them in the fight, but no overcommitment. Seeing more of that dynamic tempo they were talking about in some of the early interviews this event, saying they know when to be aggressive now, but they know when to rein it in and try and reset. Yeah. Again, I think that was the big thing for Alpha 7 though. I think they got so in their heads that there was not a single team that could fight them clearly, that potentially that's their downfall. But again, this team has incredible gun power. Discount मिलेगा, yep, discount मिलेगा मेरे भाई. When to accelerate, when to pull it back. अभी कितना परसेंट एंड ऑल उसका एक मीटिंग होगा, हमारा मैनेजर एंड ओनर के साथ मीटिंग होगा. They'll ask take my opinions on it. सारे क्रिएटर्स के भी ओपिनियंस लेंगे एंड मैं देखता हूँ, पॉइंट रखूंगा that
क्योंकि हमारे और में पीसी गेमर्स में They do assess the situation as well. सिर्फ 2 है पीसी गेमर्स, उसमें से भी एक जो पीसी गेम्स खेलता है वो ऐसा पार्ट टाइम पीसी गेमर है, लाइक उसका मेन गेम मोबाइल वाला ही है. So it's basically me. तो अभी Valo is a proper PC game. या कोई भी ऐसा PC दूसरे जो गेम्स है जहाँ पे जिसके बहुत सारे गेम्स हैं, अभी कौन से मैं एग्जैक्टली जानता नहीं हूँ, आज पता चलेगा मीटिंग पे अगर आज होती है मीटिंग. तो I'll tell them कि if 10% is fine, नहीं तो 5% तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा. I'll say for 10% देखते हैं affiliations कितने का रहता है. Or down towards the southeast. Tiamba's got to move out from the buildings. It's very clear where they've been playing for such a long time. Potentially move up towards the loot crate. I don't know how far in this is, but you could play off the back of it if you still got vehicles to work with. Right, you touch on there, could this be a game where Nonshin Red Force finally come alive? They've had a pretty safe pathway throughout the zones we've seen so far here on Game 3. We know they're talented. We've been amping them up. We just need to see it, but let's see if Alpha 7 can bring the thunder on. ओए क्या एंट्री मारी है. Tiamba get hit by the front of the vehicle. Quick flicks coming out from A7. A single knock back onto him, and they're starting to take a bit of damage. Smoke कर भाई, नेड करने से पहले smoke कर. And although they've cleaned out the ditch, they've got a lot more to worry about. This is just the difference between EWC and when we come to any other tournaments around the world. PMGC very similar in that approach as well, where you cannot make any play without another team dipping their heads in. It's really, really difficult. Every squad knows when to pick up the key. वहीं से भी रायता को नॉक दिया. Massively on their entry. They just could not find a good VIT भी वहाँ से कूद रही है. क्या बात है. मेरा क्या नॉन्गशिम और VIT था ना, दोनों जिंदा है. लेट्स गो. दोनों 4-man strong है. Yangon still living on with a 4-man high hopes. Hillside position in play currently for them that they will have to abandon eventually. छोरा लेकिन आ रही है बे, हर मैच से consistently top 6 top 5 आ ही रही है. The duo Avida was consistency तो है हो रहा है. Off the back of this central angle that was taken from Alpha 7, arcing nades in towards the Tianba compound. Tiamba, despite suffering so much earlier on versus Alpha 7, still alive here, but playing a building that everyone knows is occupied. Darken and Tiamba. अरे क्या हो गया? Tiamba living the same nightmare. Right now, Alpha 7 need to make a move. Watchtower is open. Potential. दोनों भाइयों का prediction team दिन में. Yes, yes. आपको कौन सा Alpha 7 और कौन सा था? Tianba. On this map. Sting भाई आपका Alpha 7 और YG था. Same thing that E-Arena did. They were looking for any kind of entry point, but every single way in just feels like a tight, narrow alley. They've got to squeeze themselves through. मेरी टीम आपकी टीम को मारी. Let's go. Alpha 7 biding their time, know that they can strike now with a peek out. Ravo single-handedly has been the explosive force on Alpha 7. 5 elims tied to just this one beastly player. He's on his last legs for now. They need to play medic to get him back up, but Nonshin Red Force have had sightlines to make them feel uncomfortable. इस जोन डिसाइड करेगा इसमें विटालिटी है, नॉन्गशिम जीतेंगी या अल्फा 7 जीतेगी, क्योंकि वो दोनों उस तरफ ऊपर साइड है, ये लोग नीचे honestly, साइड for है. Alpha 7, they've had the roughest game. This is a really, really hard approach for them. I think they've played phenomenally this match. क्या पता लास्ट का राइवलरी आपके एंड मेरे टीम्स के बीच हो, हाँ ना? हो सकता है. It's never been easy, but they are running out of supplies, right? They're running out of meds overall. I think the gas is low in the tank. Let's see how much more Alpha 7 can get done in this game. I think this is where they really will need to take. ये वाला थोड़ा वो हुआ. The task to the next level. I think it's going to be पहला hard. The game's going to come down to Nonshin Red Force of Vitality unless Aura has something to say about it. But still, that is manageable. Nonshin Red Force just uncontested by any other squads. They've just got 3 angles to hold onto A7. And like you say, it's made it so मारो young one को मारो. अरे Vitality भी बड़ी मारशूट टीम है यार. Yes. Petrolus.
रोजमेरी का भी बाप है मादर चोद ये। क्या हो गया? सर्वाइवल में जाते दिख रहे हैं यार अपन तो। Still 9 matches हैं। Hold on. We can The still. jiggle there comes on through. Alpha Looks 7 really, गई, really young good at the gun, moment. I mean, Aura 2 man बची thinking है। of a chance to move Sting on भाई, that. Sting भाई go 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 होने के लिए ready हो? Managed to make themselves into a top 5 मेरी despite vitality और everything. नॉक्सिन Yangon दोनों 4 man Galacticos arrival, let's massively go। suffering to the Prediction sidelines and बोलते। pretty much just होरा को मार Axel दो बस। who has their number. But Yangon, I feel like their time is up now. And that could be a statement that you could attribute to every other squad in the lobby with how Sting by Vitality Gob is Gob. starting to play. A beautiful day from them so far. 10 elims in the space of this single battleground up to this point. A full 4 squad. The only other that's comparable is Non-Shin Red Force. No, भाई तकलीफ दे के चले गया रे होरा को। मारा था होरा का खराब करके चले गया मैच। ले मेरे दोनों ही टीम्स के बीच में प्रेडिक्शन गॉड बोलते। Vitality Nongshim top 2 teams prediction god बोलते। An economic play, thinking about the future of what's yet to come for Hora. But right now in the flesh, live in Paris, we're talking about the present that is this game. अगर Vitality या Nongshim या कोई भी 32 टीम्स के कोई एनालिस्ट मेरे स्ट्रीम पर हैं तो सॉरी एनालिस्ट नहीं कोई भी अगर और मेंबर्स टीम मेरे स्ट्रीम पे हैं तो यू कैन सी I'm a free agent as an analyst. I can join any team. So open for opportunities. That I can see in play. But Vitality having these cars still up and available is a really big deal for them, which is maybe why actually earlier on Ryuk was making such a big deal of scaring off E-Arena's angle, so they couldn't take shots down towards the tires because they knew they could need those wheels later on. Little plays like this can make the difference. Moving up towards that loot crate could be the big thing though. Vitality looking to make the first move. You can hear the engines revving. Observers, love you guys. Setting the scene. Right now, giving us the cinematics of the story on this one. And I think you're spot on with how they played it, mate. But that's the devil in the details that's really raised our opinion of Vitality just in the Meta space Ninja of का the previous कोच 2 की games, सीट with the खतरे fact पे that अरे strategically it's been on the money time and time again. नहीं मेटा निंजा का नहीं करूंगा क्योंकि मेटा निंजा फिर ऐसा होगा ना घर की खेती वो वाला सीन है। अगर बाई चांस कुछ हुआ लोग तो यही बोलेंगे साला अपने आप खुद तो डूबा अपनी और को भी ले डूबा। Clearing out space between the center of the buildings, in come the vehicles. Ryuk goes first, gets it up towards the next. Had to make the crossing without taking too much damage here. Again, everything is folding into this. Cerebral plays. The smoke wall providing the cover that they need to take space off of this. Second by second, edging further closer into a better angle to play off of. They want to cross. Smoke wall goes up. That's an A being primed from the top of the roof, though. If this is on point from Nongshim, it could be absolutely brutal. Goes into the back line. भाई वो छत पे नेड मारा है। ओह उसको क्या नेड से हटाया है ब्रो। भाई ये नेड देखो। Ryuk going to send a Molotov over the top side. Axel hurting. Nice one. He gets it done with a shotty. 1-for-1 trades. अरे एंटी रे। There's the spam in from the Blizzard as we see another player fall. Nonshin Red Force seeing red as they're bringing the heat straight to Vitality. Only a single player remains. He might have the heavy artillery, but he can't do it. Nonshin Red Force. नीचे थी पूरा नीचे थी and who believed in Nongshim? Strong inside the building, they say. Au revoir to Me. Vitality. C'est la vie. But honestly, for Nongshim Red Force, I half expected
Ryuk भाई won the duel. Yes, fight तो नोंगशिम और विटालिटी की हुई, लेकिन जीता कौन? Ryuk. अबे ये बताओ, अभी बताओ, अगले मैच में ऑब्वियसली फिर से हसलर्स के साथ अपना ड्रॉप फाइट है, हसलर्स क्रू के साथ, तो उसमें गॉडलाइक मारेगी या हसलर्स मारेगी? आप सिंह भाई ये बता दो. But you can see, Blank, it's not just what they've done for themselves, it's the reverberations they're sending throughout the other teams in this lobby, in this group. Alpha 7, trapped in such a horrific position. A squad that looked like they were really starting to build up energy in that lobby, in that game, held back by Nonshin Red Force, could not get out of their angle, forced to fight horror, and it all falls. But honestly, again, next map क्या है? Erangel ही है next map. Last Erangel of the day. Task ahead of them, but they persevered, and that really speaks volumes for Alpha 7 in my opinion. I think those boys really gave it all in their game. For Vitality, Nongshim Red Force, they had the best compounds since minute, let's say 10, right? But I think for Alpha 7, they had to work for those points. They had to work for their money there. And it's nice to see the synergy look good. And that's what Revo was talking about, that they feel better going to these games. So I think this is the difference maker today. Again, we got the Alpha 7 squad. We're looking to destroy everyone in the lobby, potentially. We're not sure just yet. But yeah, Vitality, E-Arena, Aura, they are stepping up at the moment. It's incredibly competitive out there, and I think that's the beautiful thing about it from what we've seen from Group B today. Everyone is keeping it so close. They're giving it their best. And you're spot on, man. I entirely agree. It's what they said in the interviews as well. And sometimes it's just words, but no, they prove that it's reality. Exactly. They prove it, like. It's not just false confidence. I mean, it's nice to hear from Revo when he just says, look, the synergy's better. Godel जीतेगी HT के against. And you can see it in game. But are you मैं prepared सोच to रहा go up हूँ against an arena? कि Are you prepared to go up against a Vitality, a revitalized Nongshim Red Force? I don't know, but we'll find out later today. Max and Lace here at the merch stand at EWC 2026. हो Now सकता है. I've heard, Max, you're a little bit of a card मैं ही बोल रहा हूँ Godlike लेगी इस बार, मेरे को feeling आ रहा card games for over a decade now, and I've never been on a card myself, but that changes today right here at this booth. Well, yes, here at EWC, you can actually choose what you want to go on your card. Fantasy, fighting, shooter, cyberpunk, horror. Max, I'm going to have to go shooter. What about yourself? Look, I love shooters, but fantasy is just so sick, so I'm going to go fantasy. But now the next one is you're picking your class. Usually in every game I play, I'm a healer, so I'm going to go with the healer class. And guess what? I'm a DPS gal. I'm right up in that action, so I'm going to hit DPS. Fire, ice, lightning, shadow, glitch. So now we can put a bit of an aura light around our card. I think you're a glitch. Glitch? I'm a glitch? I don't know how to take that, but thank you, I guess. But yeah, Esport World Cup is all about, you know, getting that technology involved. So I'm going to go with the glitch side of it. And next one is going to be Alien, Elf, Orc, Demon, and Undead. And I don't want to pick for you, Lace, but I feel like Elf would fit you perfectly on your card. Absolutely. I'm going to pick Elf. It's like you just knew me, Max, and I'm so excited for this card. Now we're going to open the camera here and take our photo. I'm going to use my mic as a staff. I think that's a good way to do it. Oh yeah, dynamic pose. Oh, I like that. And confirm. Avatar. Let's see how it comes out. I had to get the pose down, Max. There we go. Now, of course, you guys here तो crazy है to वे. the merch stand at EWC. Discord पे ही हूँ. ओके ओके आ जाऊँगा वर्ल्ड ऑफ टैंक्स खेलने. ओके स्टिंग भाई. ओके रिक भाई वैलो खेल के आया. ओके स्टिंग भाई. I think we're going to get ours printed. Yeah, we're going to redeem it right here at the booth and see how Crazy it है looks ये in तो. real life. All right, Max and I haven't seen our cards yet, but you guys at home have. Are you ready to have a look, Max? Oh yeah, let's go. I'm अरे excited. भाई. 3, 2, 1. Whoa! It really encapsulated my jawline. That's crazy. Yes, and I like that when you do the motion, it actually captures that. Yeah, you know what? If you want your own trading card now with you on the card, make sure to come and get it right here at EWC 2026. Yes. EWC 2026.
ओए Boy, oh boy, if we had any questions about Nongshim Red's Force, they were just answers that were able to stop Vitality in that last game. Finally. Nongshim return, let's go. I was watching and I was going, okay, they're playing for survival. They are trying to just get into that top 5, just try and do something here. However, I knew, we've been talking about this actually before the game, right, where it's like, this team does not have any pressure on them whatsoever. They are not a team that falters under that pressure. So for me, seeing that, I was like, okay, let's see what they got. Let's see what they got. And actually, you know, coming in, they had a fantastic defense. Vitality, yes, they did push one by one a little bit, but I think for Nongshim, they were able to come in having sat all game in one compound and actually go, we're under pressure. Let's still play very well, still go as a group, push as a duo, make sure we're safe, and that's what won them the game. And I mean, I gotta talk about Vitality again. I'm sorry that I'm harping on about them, but they were able to have a 11.3 average elimination rate to catch E-Arena. This is insanity after, obviously, the cracking game from E-Arena right at the start. But they created themselves such powerful positions in this zone. They had such an incredibly close gap in points that they were like, you know what? We need to make this rotation. We need to play it here. Obviously, right at the end here, I liked the way that Axel sort of made that push with the vehicle. Unfortunately, that communication wasn't really passed on to the rest of the team. They should have followed through after popping the smokes, but obviously 3 of them held back. It would have been a different game for them. But from the start, I mean, the recon that they had on every single building push that they were able to do, especially against, I think it was TT, they are playing absolutely insane, not only for, Really? Hey guys. Hello. I decided to join you guys for a little bit of a CC update because I've got some interesting stuff to talk about, okay? We've got a lot going on at the Lenovo Legion Gauntlet. We already had a 3rd, 4th place decider match happen, and Geek Esports was able to claim 3rd place, making Rock Esports be that 4th place squad. Once that was done, we now have a grand finals match occurring. We will have another EWC champion in just a couple hours. That's between AGAL and KSG. It's going to be massive, and of course, I'll keep you guys all updated at home for how that ends up playing out. But, I mean, now that I'm here, let's get back into the discussion. These matches are great, Max. I kind of want to ask, Max, do you have any thoughts about Vitality? Vitality. Get out of here. Get out of here. Don't be trying to take my job. Go find some more updates for the club championship. Yeah, she was going to ask you about, I don't even know what. Max, after these 3 matches, what has surprised you so far? That was a normal, it's a normal-ish game. Actually, it was kind of weird still. The circle was very far to the western side. There was a lot of water on phase 1 zone. But overall, the execution was fun, but it was very gifted. We know, looking at this game, Vitality, Nongshim Red Force, not contested. There are 2 buildings in the circle until the very bitter end, literally until circle 8/9, and they went to make it work out. But pretty an easy win, right? And we're going to have a replay very soon to check out how Vitality decided to commit to the push. But here we go, quick look at the overall rankings, and oh my goodness, the मेरे को कॉल करना है चैट में मेरे को कॉल करना है आप ये देखते रहो तब तक ठीक है I saw that in the beginning and at the end of game 3, right, or game 2 rather. I mean, I was looking at 35 to 16 points, and it keeps going. 41 to 25 is insane. 25, 20, 16, 15, 12. That's sort of more normal for a game 3. 51 is not. And I don't know how we've got here. E-Arena, Vitality, even Hora doing fantastic in what have been back to back to back insanely difficult zones. We do have to say, though, for E-Arena, they have slowed down Lays. They ended up getting 39 points in that first game, but after that, yeah, you've been able to get some points here and there. Obviously, just for everybody, I'm not expecting for you to get 30 points again, but if it does happen, that'll be amazing. But the squad just hasn't been able to pull off the gap that I thought was going to happen. See, this is what I see across several games, is that your game number 1 can be the crux of the whole entire thing. You can clearly
take everyone's weakness, go in strong. But of course, second, third game, people are going to start reading your plays, understand where that you are going to push and how you're going to make this through. And that's what's happening to E-Arena now. They had such a strong start, but everyone's reading them like a book. Everybody is reading them like a book. When we saw the overall there, at the bottom three, we did ended up seeing Godlike. And with Godlike, we saw this past match that they ended up getting into a hot drop. For this squad, but you know what? Before we even talk about Godlike, let's talk about this, because I know you wanted to talk about this, Max. Yes, I really wanted to have a bird's eye view of this push on Vitality that really can see the center of the circle, forcing Vitality out of their compound before Nongshim Red Force. So Vitality don't have the advantage anymore. They have to be on the offensive. Massive smoke road. I'm not going to lie, looking at some of these smokes, not great synergy and communication. It kind of all spread all over the place, not denying lines of sight properly onto Nongshim Red Force, but you can see the moment the two teams do get in grenade range, it's just a mini red zone here in this final zone, sending it forward. But this, I would say, is the biggest mistake from Vitality, and the main reason why they didn't end up getting this chicken dinner. They're sending it one by one. One player sends it, then an extra player sends it, but two players are still on the back end of that fight. This is the moment to send everything onto Nongshim Red Force to hopefully make it work out. But here, one player on the left side of the wall, he gets overwhelmed. That's the end for Axel. Another player inside the building gets 1v3 at that moment pretty much. No way, Jose, is that working out. The two other players still on the roadside. Unfortunately for them, that was a massive misplay, sending it all together. Maybe that could have been a Vitality win, but Nongshim Red Force, they see that mistake and instantly shut it down. And it was going to be a hard push for Vitality. The fact that they weren't even able to try to make that push was perfect to see. Now, going back to Godlike, one thing that I was talking about with OG is that I wanted to see aggressiveness. Here with Godlike, I don't want to see unnecessary aggressiveness out of this squad, and I'm talking about those hot drops. You don't need to do those hot drops. Right now, you started off hot in Rondo, but they have slowed down in a way that they're just having to do silly things. You don't want to be hot dropping. You want to be securing those points. Look, before this game, I said, I'm going to cut them some slack. We need a more normal game from them before I really judge them too harshly, right? Because bad zones are they're just horrific. And yep. We had a normal zone-ish. Wait, no, we didn't have a normal zone, but we didn't even get to the non-normal zone because they were normal-ish because they were too busy hot dropping. Why are we doing this? I'm gonna jump in again on your solo camera shot. Yes. Miramar's coming up, La Cobreria. So if it's happening on a wrangle, they're hot dropping the entire day, basically. That's so true. You're so right, actually, and I'm not here for it. Stop hot dropping. Play normally. We believe in you. Just stop it. I believe in them too. You know what? Let's all get into it cozy here. Let's go over, ladies. Yeah. How do we feel about hot drops? I freaking love it. I think it's fantastic. I think this is the 6 games you've got to make and do these plays. But you've got another 6 tomorrow to sort of calculate and figure it out. Hot drop. Go crazy. What if it's a hot drop with Vitality? Vitality gonna get you. I don't know. Maybe don't do that. Definitely. Read the game, VOD review, guys. Don't drop where Vitality's dropping right now. They're playing great. Just please, honestly, Godlike, stop hot dropping. You're a team that has the potential to make it to the finals, just like OG was able to do as well. So please make sure you keep doing that. And as we're at the halfway point here of PMWC at EWC 26 Group B, how about we send it over to Barney and Luty? What are they up to right now? Luty. Yeah, Barney, tell me. I've asked you to come down to the stage because I was talking to a few people and they told me that you have found out the formula, the secrets to win at PMWC. Is that right? Yeah, I spoke with so many specialists, so you have to listen to me carefully, okay? Because the secret, Barney, is like you have to... And the chicken, you take the chicken at this point. And this is how you can be the champion. Wow. I never knew that. That's some crazy insight into this game. And I tell you what, for those of you at home, if you're watching and you want to find out what it takes to win at PMWC, that right there, that's the secret. And so, casters, over to you. Hope they listen well. The secret is out, baby. Let's get it going. We're live in Paris, France.
match, man. I thought Group A was crazy, but Group B is not messing around. I'm Hot Jukes here with John Allen. Bro, are you kidding me? What's going on today? I mean, E-Arena, what a start to the day. And then Vitality just hitting those games every single time, always ending up in that late game and having a blast with it. Now they're neck and neck at the top, and they're pushing past those boundaries, Jukes. Man, those boundaries are long gone. We saw, in my opinion, the best start in a tournament in PUBG Mobile esports history here. And we got some teams actually competing with them still. It is unreal. The zones have been going all over the place. This first half has been nuts, and I'm expecting even more craziness as we get into the final 3 matches. There is so much still left to go, if you can even imagine it, right? That is so crazy that we've had such a bombastic start, but we've still got plenty more matches left. This is the last Erangel today, so we're going to be heading to Miramar later as well. The desert awaits, but we have to get through the last of the grassy pastures first in order to get there. We haven't earned that right just yet. Neither have our players, but they are getting locked and loaded and lobbied up as we head on into the match. It is time once more to see if Vitality can reach that late game. Let's see if they're going to be able to do it. This is the final Erangel. Like you mentioned, this is that place to put up some serious points. We finally saw Nongshim Red Force get their chicken dinner. They were at the down on the bottom of the leaderboards going into that match, but now they've got to be feeling pretty good. Which is going to be the next team to get it? We're about to find out. Let's get into it. The last Erangel here of day number 1 of Group B. Let's get stuck right in from the military island up towards Severny on this plane path. We're going to see a fairly fair distribution of drop spots available for everybody. No real big dramas here. Taking a look at those tables as well. Nongshim Red Force jumping up with that chicken dinner all the way to 5th place on 20 points right now. Just goes to show you these early doors don't mean a jot if you can keep it going. So for Hustler Crew, let's pick up the pace, you know? A UK team in the finals? Absolutely, I'd love that. Let's get it going. I mean, hey, we saw Nongshim before that last game. They had, what, 6 points? And then now we see them, like you mentioned, in 5th place in just 1 single game. So, when it comes to Hustler Crew, they could definitely get it going here. We can see the top players there on that bottom left side with Axel with 14 eliminations. Yeah, doing bits for the rosters right now. Vitality E-Arena are going to be slathered all over these top player cards. I'm guaranteeing it for you now with what they were able to do. They are looking very, very good. E-Arena, a little bit less legs into those later games, I think it's safe to say, but they still have done so much. And Horror keeping pace. I mean, in any other sort of day, that 41-point record for Horror would be pretty immense, right? After the first couple of matches. Oh my God! Let's do it to them again. You know, let's send the circle down south and see what they got. Because yeah, we didn't get enough military. What is going on today? These circles have been absolutely insane. And you're right, we're back down south once again. You got Vitality down there. I mean, it's wild to think that we saw a 39-point game in 1 match. Drop fight hai kya? Actually have a team tie. Drop fight nahi liye. Like, this is ridiculous. Yeah, I mean, since then, what is that? 12 points they've earned in the next 2 games, which Mention is still pretty good, right? That's pretty good. That's like a middle table performance right now. 8th and 9th, both on 12 points apiece. So yeah, they've still done pretty well. But Vitality's consistency for me is really interesting. And given this circle, Vitality are in such a good spot. If it does go south, because they do need to keep themselves nice and cool, calm, collected, and look good. Yeah, well, you guys got to make sure you pick up that Naruto skin. That Uzumaki event is going on, guys. Make sure you pick up all that good stuff in-game immediately. I'll tell you what, I make sure that I got mine, and I know that Maxman has got his. But which team is going to get this chicken dinner? अरे ये कभी कभार क्या हो जाता है? We can see the Wolves. They ain't messing around. They said, let's get down south quick. Absolutely. First over the bridge. Well, second maybe over the bridge. I think it's safe to say. अरे क्या चला रहा है ये?
say. You do have some players. Oh, are you kidding me? No. They're just going to अरे abandon it. कैसा बाइगन ड्राइवर था रे? I guess if you don't have any nades or anything like that. इंटरनेशनल लॉबी में भी ऐसा हो रहा है बताओ. That's actually really nasty for the Wolves. That's going to slow them down. The good news is that they are across. The bad news is we saw them do that. Yeah. So, you know, out of all the things, that's the most negative aura that I think I've ever seen of any team is from the NA team, of course. Out of all the things that could have got put on stream, has to be that one. Who was driving? I didn't catch. You know what? It was nobody that was driving. Oh, no! Oh, if only I had a vehicle. This just goes to show here, folks, at this level, one single with a pan. He got a pan knock. I think that was a thrown pan knock coming on through. Okay, they're not out of the fight just yet, but they are starting to bleed. The Wolves will struggle here, and I imagine the Raze is going to get back up. क्या blunder है bro. All by his lonesome. Ryuk trying to pull off some plays there. Oh my gosh, switching in that buggy necessary is done. क्या blunder है भाई. Getting destroyed. This is what I'm talking about. One tiny mistake, a domino effect into a straight disaster. Imagine being an NA team right now, man. Oh, that would suck so much. Wow. Look at his face. Hey, he's got, look at his vehicle. face. They found another. Oh, okay. I think. Wait, no. I'm wondering if Vitality found the flip turn vehicle, the beetled vehicle, and if they've pitched it back. That would be brilliant. This is what I mean, and the good thing is that Vitality is that this is their drop spot. They're already so high on the leaderboards, they can do whatever they want. They can chase this all the way if they feel like it. Let's take a look at the replay. Okay. Oh, what's this? No way! Oh my! On a moving buggy. And with a headshot, baby! Bad shot to the face! Are you kidding me? That was insane! If his team would have survived, that's going on the highlight reel for sure. Oh yeah, I mean, yeah, that's that. Okay, they get some aura points back for that. Yeah, so we can forgive the flip vehicle. You know, if you're getting a ranged pan headshot, that was cool. You're breaking brains and scrambling like eggs. You know, that's fair enough. You're gonna bring the pan to play like that. You can have that one back. Yep. Yeah, that officially is even. Aura balanced. Let's take a look here at Vitality, though. They're looking to put in some more work. Oh, look at that, though. We're going to see Lupa get a nice knock onto Ryuk. Can he hit this next one? He doesn't. The rest of his team not so lucky either. Will be taking 2 knocks their way. Looks like Ryuk will be resable here. They have got the backup. Axel's holding face, and they do need to send in for that recall as well. Ooh, as having the hovercraft rolling up to the fight juice. Yeah, and you can see Axel getting those thirsts really quickly here. Kenji, that hovercraft is getting beat up. Still surviving for the time being, but now it's on fire. Kenji has to back up. He's got the UMP in hand. It has to make a crazy play, but that nade hurt way too much. It's all up to Mitika. 3 players for Vitality. They should be able to hold this one down. The question is, how much time is this going to take, right? Because all the while, teams are starting to migrate south. They're moving in towards those bridge locations. Vitality losing time across these hills and may lose. Let's go, boys. Have taken We are back in advantage of action. this. They are now on the north side of that military base, and in comes Ida as well across the bridge. You're correct. One thing about Vitality, though, is they do have the ability to get straight to the finals in like 4 matches. That is one thing that is definitely happening, though, with how crazy they're playing here. I don't even know if this is PMWC or if this is a classic at this point, because Vitality are just running over everybody. Matika's trying to make something happen, though. Oh, it's actually from across with the AK. Ida chiming in with a third party. This is the bridge crossing team. They move forward to Vitality, starting to drop now. There's a flush sent their way. All of a sudden, this bridge crossing is going to come back. It's going to punish them. And Axel still down. Only Razy remains. He's going to go for the res here, and it looks like he might be able to get it. But yeah, they took a long time on this fight, and the longer they waited, those third parties are coming, and now you got Ida in the mix. So this is bad news for both of these teams. Dopeness is in big trouble. Vitality, I mean, they got 6 eliminations, and the fact that they're so high on the leaderboards, I mean, that's still not a bad game, but you're right. If they would have just made a few different plays, we could have seen a crazy match for them again. They had a big opportunity to take control of the hills. अरे पावर ने और मारा भाई क्रेजी पावर भाई अरे पावर नॉक हो गया we're seeing this sort of thing unfold. They got stuck in. मान्या एडमिनो It is unfortunate for Vitality, but going for the first place, maybe not a terrible idea.
नो फियर ही बचा है अभी तो, नो फियर ही बचा है, It's the sticking around. वन मैन बचे ये लोग, because the bridge is just so open. Yeah, I mean teams are going to 1v1 1v1 अरे Aura having one heck of a tournament. No fear, gonna have to make a play here. Gets enemy no. Godlike shuts down Aura, and they are क्या मारा 1v1 एडमिनो ने 1v1 मारा लेकिन क्रेजी मारा, बच गए, ऑलमोस्ट डेड फुल हो रहा, That's a really annoying crazy 4 kills, let's go 4 points. I mean it technically still has the ability to go back. Crazy मारा भाई. Yeah, you guys can see it there in the top right. This circle, just so much water in between them, and that zone. Don't tell me वो 1v2 करके जाएगा. Trying to put some Don't tell me वो 1v2 करके जाएगा. Can he win this 1v1? He's got the DBS. Speaker's gonna have to reload. He's got the pump shotgun. See what he can do. It's Og. He's gonna do the jump out. Let's see. Trying to make some moves, find those angles. Reload on the AUG now. Got 10 rounds behind. It should be enough. He goes for it. He's got the HP advantage. Let's go. Doesn't even need to sweat it. Razy will get back to his feet, but down on 2. The circle pushing out to the गए पावर ना हो गया, फिर माने लेट्स गो, फिर बोलता है हाय माने भी नो हो गया, रिएक्शन तगड़े दे रहा है. As you said, it's already a good result. वो मेरा बोलते नॉक फिनिश हो रहे हैं, नॉक हो रहे हैं ऐसा. As they try and hold it. मारो धोती लूंगी खोल मारो. 7-2-1 game GS. Yeah, you can see Fajita's got that nade. And just pulling the pin, scaring him off. Okay, and this is a tough fight here. This is way too long in the blue zone. But the fact that the zone did go up north, it does buy them a little time. They don't have to really panic all the way down to military base. But regardless, you know, you're trying to get a big game here. I mean, especially for 7-2-1 GS. Down a player, only 7 points. This is just rough for them. Absolutely. Very, very difficult stuff. Them and Hustler crew, well, everyone towards the bottom of these tables. चलो 4 पॉइंट निकल गए, गुड मोमेंटम, अभी मार सकते हैं हम लोग, अभी मार सकते हैं. दोनों ना हंसी तो आई थी बट छुपा ली थी बेटे. I think is going to play fairly well for them in this sort of a circle. Given how the lay of the land sits, they're going to be buffered around by teams trying to cross either side of them, rather than coming across, and they can farm up players trying to go for a swim. Let's hop back on board with the fight on our screens though. As 7-2-1 GS lost a player, we saw that on the crossing, and Etch trying to keep them there, but there is a knockback over to Fajita. Yeah, you can see Speed holding that angle. Flank angle to get with this team at this point. There ain't nobody in that direction. But we see the MG3s in play. Masco's got that S12K. That's the gun you want though in that CQC close quarters combat. And right now this fight is still ringing out. This is all the way over by Rosshawk, folks. This is going to take a long time. Now we're starting to see some util get thrown back and forth, and everybody's just trying to wait for that first critical knock. Oh, Alico should completely see NASA there. Uh-oh. Going for the nades. Oh. They felt like they should have known there was a player here. And that's going to be a big opener for them. But in the close quarters, SK12 is going to dominate. S721 GS will be able to clean out partially some of the team from Edge, and both teams now bleeding heavily. No one having a good time. They're losing players left and right, and they still have to get south. I don't think these two are going to get very far. Yeah, I mean, this is kind of a sacrificial play. I wouldn't have mind this fight personally if that zone was deep because it's like, yeah, our chances of getting down there are pretty tough. Now let's try to get these points. But considering where that circle is, I think they could have just avoided this fight and fought late game. But regardless, you know, that's the decision they made, and that's the one they went with. Let's take a look at Alpha 7. Alpha 7 are going to be going on the other side of the bridge, wrapping around. The next zone did head a little bit heavier into military, and for the time being, it does look like they're going to have a clear path to that circle. Alpha 7 looking at मैच के बाद हम टॉप 5 तो आ ही सकते हैं, बट 20 है बे, हम लोग 12 में. High ground near the lookout post there, the lighthouse. We'll be able to see if anyone's holding that bridge, which is definitely very possible. Maybe stop off for a little bit while you're there. Have a little bit of downtime, but you can't be sleeping too long because you do still need to get on towards this circle. You got to get moving, that's for sure. Let's take a look at their utility. Vest. Couple first aids, that's going to help them out here.
It is still pretty early. Stage 3, you can definitely afford to eat a little. Considering where the circle went, this is not a bad play from them at all. So far, Alpha 7, not doing bad at all. They're in 4th place right now at 25 points. This is really good to see for them, considering that they haven't hit a final all year long yet. So let's see what they can do. Yeah, the one final there's been. They haven't hit it, but they hit it. They didn't hit it in a very dramatic fashion. I think that's kind of more the point, right? They went down in group stages in bottom 2 of their lobby, which was on nobody's bingo card, right? Yeah. So to be able to regain a little bit of confidence moving here would be brilliant. Obviously, a top 5 is what they should be for, right? But even getting through to survival stage, I think for them would be a little bit of reassurance. Depends how heavy the ego sits, right? Yeah. If they're like top 5 or nothing, then fine, sure. It's a competitive spirit, I'll give them that, but you know, even survival is better than what they did before, and improvement is the name of the game. That's what it's all about. And when it comes to Alpha 7, you know, there's an old saying in the boxing world, you know, as you get older, the speed slowly goes away, but that power always stays there. And I think that's Alpha 7, you know, like, no matter what, they are so experienced, they're such a dominating team that these guys can get off the couch. आपका मेरे चैनल पे स्वागत है. चैनल पे आप नए हैं तो स्ट्रीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. Thank you so much for coming, for joining. What's up buddy? What's up हो रहा? Unfortunately इस मैच में तो नहीं हो रहा. They had 46 eliminations, only 12 placement points. कल जो कीबोर्ड दिखाया था ना वो दोस्त का वो सुबह खराब हो गया. डी और एफ की ऑटो क्लिक हो रही. अब क्या करूं? Circle as नजर लग गई. On over to them. Very, very lucky. Let's see if they can capitalize on it. I'll tell you who else has a pretty good position here is the Vitality duo, right? Up towards the north side, they've got Tiamba as well as Nongshim Red Force up to their north, so a nice little buffer. The difficulty, of course, for Vitality is they're playing as 2, so they do need to figure out how they're going to try and work this ground. You've got TT Project as well on that east side of them. अभी वो स्टिक हो रहे हैं तो उसका कुछ नहीं, वो तो खराब ही हो गया है. अभी उसका कुछ कर नहीं सकते. अगर मैकेनिकल होता तो स्विच रिप्लेस कर सकता था. Did Edge, अगर स्विच ठीक होते तो स्विच रिप्लेस करके 2 स्विच ऐसे सोलो खरीदता लगा देता हो जाता. On the western bridge, looks like we have Godlike coming in a little bit late. अबे वैसे समीर का आज रिक्वेस्ट आया आईजी पे बना लिया उसने लॉन्डे की तरक्की. यहाँ उसने नया फोन खरीदा ना H25. And they're going to hold that bridge, I think, all the way to the end here. Solke, oh, he spots him. They have no idea he's there. When is he going to take that shot, though? He's going to wait till the last second. Yeah, I mean, you're waiting to have multiple angles on the shot, right? Especially when you're so close to hard cover. You know that you can attack 1 or 2. You lose that element of surprise, but Lost will not lose on that face. Looks for more as well. The spray straight, not quite there. And is going to find some bullets sent back his way. अरे कवर दिया है रे. Now S2G are down to 1. All of a sudden, the Hustler crew seem to have found an opening. No real third parties on this one. And Hamzy, I think he just has to get gone here. Yeah, his whole team's going to be taken out. I mean, this is stage 4. The blue zone's hurting. Loco is looking crazy as he's on the move here. They should definitely get these confirmations before they push, because it's going to be difficult to get across that zone. Instead, they just said, hey, you know what? Let it ride. We are sending it down this bridge. But for how long are they going to make it across? MCG is up there up top. When is he going to take these shots? Let's see. I don't think he's going to have the angle to do it. If they break right here, they're going to crash straight into the angle on Galacticos instead. The Smile starts to unload the clip, finds Loco, pulls him out, switching into the driver's seat. वो वहाँ पे उसका प्लेयर H2G का दिख रहा था, तो उसने मारा क्यों नहीं? किल पॉइंट तो एक मिलता उनको. हाँ, एक किल पॉइंट मिलता, 4 उधर और एक पड़ा हुआ था, 2 किल पॉइंट मिलते, उनको मारा क्यों नहीं? ये क्या सीन भाई? अरे गॉडलाइक वर्सेस आईडी हो सकता है ब्रेक. पीछे अल्फा 7 भी है. It's going to be a hill finish. There are quite a few little dips and valleys that teams can hide under and make some plays in. So we still have 11 teams remaining here. Everybody just waiting for that next circle to pop and deciding just where that fight's going to take them. During the middle of all that, Vitality getting eliminated, allowing TT Project to take a central position here, puts TT Project in the driving seat of these hills in terms of stopping control. There are high grounds around them. Alpha 7 is ready. Oversight things, but they are a linchpin of it. Going to force nice! the fight around the sides, and one of those fights is Godlike. पीछे से Alpha 7 मार रही है, भागो. Will be next on the chopping block, and Alpha 7 maybe after अरे TT भी मार रही है वहाँ से. Steal a point away.
Darkin does get flushed out, and now it's Alpha 7 still. Look at her try and handle it. Rebel. Damage being done. Dishing out Jet and Godlike send them down. Alpha 7 standing with no force against Godlike. Ole is Obscure is now on the other angle here, trying to make some plays all by himself, but he's running out in the open. Nice little spray back in return. Abino's gonna go ahead and heal up, wait for his teammate, and that's Godlike taking out Alpha 7. What a roll-up from Godlike. Alpha 7 didn't know what hit him. And now from the west side, Godlike are going to look to push across. TT Project wanted the third party, but not enough blood was drawn against Godlike for them to find a worthwhile pursuit in going for a consistent, a sustained third party hold here. They're now regrouping out to the west, and they know where the major danger's coming from now. It's on the west side. It's Godlike. Yeah, Godlike fans right behind us going crazy on that fight. They like to see that. Alpha 7 fans not too happy on that one, but they're still sitting in fourth place for now. We'll see what the drums. Where's the Vuvuzela? What's going on? I can't hear him. Well, you know what? Well, you'll probably hear him in a little bit. That's for sure. As we get into the desert, we are 4 men strong. We got this match to look at. We got Tianba in the mix, and Tianba, man, in 12th place so far, haven't had that crazy pop-off game, but in my opinion, it is only a matter of time. अंदर का पानी सुखा दिया भाई. Absolute animal. In my opinion, one of the best players on the planet. He's a 20-year-old Chinese. 7 finishes में 4 तो power के ही हैं. In my opinion, only a matter of time. Go admin, okay. I mean, I'm still waiting for it though. I'm still waiting. Let's see it. Let's see it. You know, you got some real big boots to fill when it comes to Chinese superstars, right? Paraboy obviously is the forefront, the paramount of the Chinese superstar style. We got to see him. We got to see him recently at PMMI. Yeah, that's true. That was fun. Yeah. I mean, fallen off. I didn't say it. I didn't say it, but he's not here. You know, we got to see him in a little bit of a show match for those guys that missed it, and it was good to be able to see kind of like the old Nova squad compete once again. Now they did end up having to go against the likes of like Revo and Aurora, and that was pretty damn tough, considering these guys are the modern monsters of these days. पास हो गया 57%. क्या बात है? Congratulations. Going at it here. But you know what, speaking of OGs, we got Young on Galacticos, our previous champs, right? When are they going to get that chicken dinner? They're in 9th place so far. 2 eliminations in this game. They देख 8 पॉइंट तो पोजीशन पॉइंट्स तो मिल रहा है, ठीक है. 7 एलिमिनेशन, 8 पॉइंट सिक्योर हो गए इस मैच में. बस ऐसे ही और 6-7 पॉइंट निकल जाए यहाँ पे पोजीशन के 2-3 पॉइंट और. The opposing force on that party. That's a great. मान्यो. अरे यार ये क्या है भाई? Plan, honestly, wait for that fight to pop off, then get in the mix of it. TT. अरे. They're battling it out with Godlike. TT. अरे क्या है बे? लोडिंग क्यों हो रहा है? क्या ग्लिच है बिच? शिट यार. उनका एक नॉक है, हमारा एक नॉक है. नेट तो परफेक्ट चल रहा है. Make a crazy push like that. You got to do it full send, full Godlike attack. गई या Godlike बची है? TT गई. And do not waste time. They were able to take out TT Project pretty. पेरिस में लाइट गई, वाईफाई केबल कट हो गया. हाँ, मेरे को भी वही लग रहा है. पेरिस में थोड़ा लाइट वेट चले गए. नेट देखना मिक्स. मेरे को भी वही फीलिंग आ रहा है. Godlike जिंदा है. 10 पॉइंट्स निकल गए. Let's go, let's go. अरे मान्या. Mania taking out Schweppes. Godlike
is on a run right now. 2v2 now क्या between Arena and बात है Godlike. मानिया। Yangon Galacticos now moving Smile in to try and have the numbers advantage. Nongshim Red Force are taking shots from across the way. क्या from बात है across that मानिया। wall on the northeast side. Tiamba just hunkered down. They're happy to be out of it at the moment because it looks pretty chaotic on that south edge. This is getting wild right now. And you can see, yeah, Young Galacticos are starting to push into this circle. The fight has calmed down, though, so they don't have that easy opportunity to go for a third party. But hey, little by little, just try to get some more information. And you can see St. Cloud, he's got his eyes on Mormon right there. 2 points तो मिल रहे हैं। That nade in hand. That's going to be a long toss here, but he's going to, yeah. Once you saw him in that bug, he's like, I think I need to save this nade for now. और एक पोजीशन पॉइंट चाहिए, एक दो पोजीशन पॉइंट चाहिए तो बहुत ही अच्छा मैच है। 11 एलिमिनेशंस है बे, अपना हाईएस्ट है पूरा अभी लॉबी में। 11 एलिमिनेशंस, यही चाहिए था। यही मैच चाहिए था गॉडलाइक को। बाइगन spinning around. And Manya has a little bit of trouble. Joker spots him, and it's a flush, leaving just one player now for Godlike. But they've got deep into this game, Duke. 6 teams remaining. They've got 11 eliminations. This is a big, big match. They're up in 7th already. Huge match from the side of Godlike. That's going to put them in a great spot to try to reach that top 5. That Joker getting taken out as Young Galacticos are now like, hey, you know what, it's time for us to get some eliminations. They are controlling that south side. They're still outside the circle, though. They need to find their spot on the way in. से बात भी बोल रहा है, वो अच्छा वो मोबाइल नेटवर्क पर खेल रहा तभी मार दिया। हाँ ना, वाईफाई कट रहा है वहाँ पे बाइगन। बस come on, kill point, Smile forced to jump out of his vehicle. That's Mormon gone. That is now the top point sponges in this lobby are out. This is a huge opportunity for teams in that mid pack to try and catch up to him. You still got Tianba there, right? We're waiting for them to pop off. All the way in 13th place. They have their whole squad up. Let's see what they can do. But like you mentioned, look at that. Our previous game winners, Nongshim Red Force, they are spread out, controlling this circle. I love it. I mean, SCY on that high ground position out across the way, controls the low ground between them. Unfortunately, he's going to have to move here, as is TZ on that off angle, and they have to send forwards. Yangon Galacticos finally take down the last player for Godlike, but they should be so proud of what they've done this game. They are being brutally efficient on those fights. 19 eliminations. Wow. Dukes, that's all but 4 of their points right now. Monster game for them, and a huge bounce back. Let's see what Yangon Galacticos can do, though. Now, with taking out that player, they can have some real estate to control. We still got a few big teams here. We got 3 full format squads and a solo on the side of Ida in this match. And let's just see where this is going to go. One last circle shift to go, and then we're going to find out where this end game is going to happen. Yangon Galacticos kind of corralled now onto the south side. This is what I was worried about, that overcommitment potential to that southwest edge, but they do still have quite a bit of ground to play with. The Tiamba are going to start to look to flex out. You can see Hyunbin, he's got that AUG and the P90, right? What an absolute monster. This guy's only 18 years old, and he is one of the best PUBG Mobile players in the world. One of MaxMan's favorites, that's for sure. And let's see what he can do here with that P90 in hand. That's the squad wiper. He's going to need it, though, because there are some monsters in this lobby still here. You got our previous champs, Young Galacticos. You got Tianba, who, by all means, should have won PMMI, but it was Nongshim Red Force at the last second to smash and take that tournament away from them. So let's see who's just going to win this one. Rita. Oh, yeah, and there's Rita all by himself in a shack saying, please, guys, leave me alone. All by myself. Don't want to be Rita all by himself. Don't want to right be in now. that shack, I'll tell you that. Yeah, right it's pretty nasty, especially with Nongshim Red Force bearing down upon you. You're right. I mean, you're right. Hyunbin, one of the most successful breakout performers, one of the most brilliant rookie performances we saw from him. He's looking to try and build that that resume, that CV.
to become that veteran. अच्छा यूनबिन नॉन्गशिम में आ गया है. Moving up towards Rita. He's got a nade to bobble out. Looks good, but only takes half the HP. In the meantime, Tiamba getting descended upon by Yangon Galacticos off in the distance. XZY will look to try and challenge and doesn't quite get the full gut shot there as Rita getting chipped away, and they will find him down. It's the P9 to do it. DRX में था. I'm telling you, that's the weapon you want here in the end game. How about some nades though, as that is going to be the big bell to ring to get this fight started. Smile getting knocked there is going to be brutal. Yeah, and Tiamba are going to probably throw all the utility they have to try and take him out. This is so well orchestrated by Nongshim Red Force throughout all of this. They have taken so much ground. They've stopped movements. Tiamba being reserved in their compound. Now looking to try and break out. And Yangon Galacticos, they are now trapped in the middle of Nongshim Red Force, out of the blue zone. They are going to get pushed by it, and I don't think it's going to go well for them, Jukes. I think it's a back-to-back chicken dinner from Nongshim Red Force. They have so much control, and these two teams are fighting each other, like you mentioned, outside of the circle. Yep, here it goes. So easy, and it's feeling like that for them because the blue zone's on their side. It's how many eliminations can Nongshim Red Force get? First game, Yangon Galacticos trying their best to stay alive, but they're two players now. Tiamba do still have a chance here, but Eagle is going to step straight to the firing line of the backstop Nongshim Red Force position. Say Cloud trying to stay alive, but TZ's just making it so hard, and they are really, really going to find it difficult to get out of this divot. Has the hovercraft as well to fade away with the nade. Finds another knock, and now Yangon Galacticos only playing as one. Say Cloud spotted out, but has to back off the volley of fire. Going to leave the hovercraft on about a quarter of its HP and is draining quite quickly, but now he's got a huge amount of ridgeline cover as Romeo gets flushed away. Man, that just it's like such a crucial wall. Oh, and those nades are disgusting. Dizzy putting that cover right where it needed to be, and having this hovercraft right towards the end is even better for the side of Nongshim. Is the final circle here, folks. This zone's gonna go down to nothing. Nongshim Red Force have the dead center spot, and Hyunbin gets a Molotov onto the side of Tiamba. These guys are completely trapped. Yeah, Yangon Galacticos finally going down. Tiamba starting to bleed on the low ground too. They are having a real tough time of it. And this high ground angle, TZ has been so operative, so commanding in these off angles over the course of these last circles, and is looking to open another can of water. Nice. Ooh, and that's exactly what's happening, because you got another can of Hyunbin down south with that P90, and that is it. Bye. It's a back-to-back chicken dinner. Back-to-back chicken nikale de. That is how you do it. Masterfully orchestrated in those final circles for Nongshim Red Force. As soon as Yangon Galacticos stepped out of that middle position. अशोक कुमार जी, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है. चैनल पे आप नए हैं तो यार स्ट्रीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. क्या हाल है, कैसे हो मेरे भाई? इंडियन टीम का नाम क्या है? इंडियन टीम का नाम है टीम गॉडलाइक. एक टीम ओरंगुटन ग्रुप ए में थी जो भी फाइनल्स में क्वालिफाई हो गई है. इस वाले ग्रुप में टीम गॉडलाइक है. ये मैच अच्छा गया अपना. कितना 2 पोजीशन या 3 पोजीशन पॉइंट्स, 11 एलिमिनेशन, 13-14 पॉइंट्स का मैच निकला ये. That saw them so nice, and it's a lot to do with how vitality felt in that early game as well. Getting stuck into a fight instead of maybe even allowing other teams in the area to hold that bridge for them, so that they could establish more. इंडियन टीम का नाम क्या है? टीम गॉडलाइक मेरे भाई, टीम गॉडलाइक. Bad match in terms of point scoring for vitality, but still maybe a lost opportunity. I think I would be way more critical on vitality if they just have such an insane amount of points, right? But considering that they are like all the way at the top of the leaderboards. मैं बता रहा हूँ ये कुछ है. पहले मैच में जो सबसे नीचे रहता है ना, ग्रुप ए में भी पहला मैच निग्मा गैलेक्सी का बहुत खराब गया. वो लोग 0 पे थे एंड वो लोग 16th में थे. इसमें भी राउंडो के बाद नोंगशिम वेर एट द बॉटम, एंड थर्ड और फोर्थ मैच में चिकन दोनों बैक टू बैक और अभी टॉप में. सेम फॉर निग्मा गैलेक्सी, क्वालिफाई कर गई. टॉप में थी, फिर वो सेकंड डे पे थोड़ा सा डाउन आया, लेकिन वो क्वालिफाई कर गई फाइनल्स के लिए. बताओ.
You know what? That's a great point though, because if this इंडिया किस नंबर पर है? आई गेस टॉप 10 में है अभी तो फिलहाल. 10th में तो आ गई आराम से. 7th 6th में होगी. 7th 8th में होगी अभी. 7th 8th में होगी. So critically, you know. So yeah, you know what? You're right. I mean, I think that you definitely अभी gotta दो take मिरामार every बचे हैं. opportunity you can. Let's No see matter how high Miramar up on the goes. leaderboards, just be relentless no matter what. Yeah, Huh? got to keep that train going. You've got to keep that momentum. Yep. It is the most important thing, especially when you're talking about shorter game sets, right? Where you're playing 12 matches in your group. The single match is so much more important. When you start to expand, as we will over in the finals too. Well, technically at least 14 matches. With a smash rule. It is going to get a little bit harder to stay towards the top. But Vitality will hold that accolade. Let's send it down to the stage with Kalaris. Yes, thank you very much. Down on the stage here to get a word from Axel after looking fantastic throughout the day so far. No chicken dinner just yet, but a third, second already here. Very much on the way to being able to qualify. So first question, TT के साथ फाइट हुई थी उसमें वो लोग 2 man down हो गए. PMMI, it didn't look as great for you guys, but here हाँ, so fight far जीते थे. today, it looks amazing. What has the preparation been like coming to PMWC? Jadi tentunya buat turnamen PMGO atau PMMI itu 3 टीम के साथ फाइट लिए थे. तीनों के साथ full proper जीते. persiapan kalian dan perbedaannya It's good. dari turnamen terakhir dengan turnamen kalian di saat Good ini. progress. Yang pertama yang pasti dari PMGO dan PMMI kita kayak belajar banyak banget, kayak banyak hal-hal yang baru kita dapetin bareng. Jadi kita datang ke PMWC dengan hal yang udah kita bawa dari turnamen sebelumnya, dan kita pasti belajar banyak lah dari hal-hal itu, dan semoga kita bisa terapin sampai ini ke final. So yeah, I mean we learn a lot. I cannot go into details like what we are learning, but we are like bringing it here in PMWC. So far we're doing good, and just hopefully that we can continue this until the finals. All right, and from what we've seen so far, Axel is obviously looking fantastic in the IGL position, but also putting up a lot of eliminations to try and challenge for that MVP spot. Is that something that Axel's kind of looking at, and does he think he can keep that up? Oke. Dan tentunya kamu hari ini memberikan performa yang bagus banget. Bisa dibilang MVP level performance. This time match start होगा. अभी तो 10 minutes में start हो जाएगा. Mungkin ada pendapat tersendiri. 10 minit में 5th match start होगा. Kebetulan nggak ada sih, karena dari dulu aku kayak berusaha selalu ngalah buat ngasih temenku main enak aja. Cuma mungkin hari ini lagi wangi aja. Cuma nggak ada ke arah sana sama sekali. So usually it's not like this. Usually I've tried my best to make my team perform more, make my players more comfortable in their roles. But I don't know. Probably today is just like a beautiful day for me, and yeah, we can see. All right, well, thank you very much, Axel. You're looking awesome so far here. That does it from us down on the stage. Back to more for PMWC. आशु भाई, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? आप कहाँ से हो भाई? मैं हूँ तो ओडिशा से, बट फिलहाल दिल्ली रहता हूँ. आप कहाँ से हो आशु भाई? बाय द वे लाइक कर देना यार आशु भाई स्ट्रीम को, और अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना. इट्स टोटली योर कॉल, बट प्लीज लाइक कर देना. 잠깐 용이 오고 뽕 왔다 얘들아 왼쪽 보고만 와 형 나무 기절 나무 중간 나무
나누라스 해단대 나이스. Nongshin Red Force with that back-to-back. Just look at Hyunbin. He's so happy right now, Max, with the way that team is performing. But by the way, for everybody currently watching at home, don't forget that the PMWC Lucky Spin is now live. You can get 3 exclusive sets made by PDP creator Nana, the Electron Energy set, the Pro 10 Power set, and the Stunned Alien Fusion Grossa. All bring in the PMWC spirit. Log into PUBG Mobile and take your spin before it's gone. Because looking at that one, honestly, that Grossa looks so sick. And I wouldn't be surprised if, Max, you already have all the skins. How did you know this? I actually spin for one of them and I got them all. I had enough coins, I got everything. And it looks really cool, so I like him, so I'm using it right now. I just know you, okay? I know every single time we do an event, you always try to get whatever exclusive skins are out in the game. But we gotta talk about that last game. Nongshin Red Force with the back-to-back. I love it. Can I just say that? Look, Great. I do like my one-word answers. Nice. No, Hyunbin, Nongshin Red Force, I really like what they did there on all of it, honestly. What I will say, the biggest point for me here, Max, maybe you'll agree with me, is that for me, when Yangon and Tiamba were finally going head-to-head there, rather than spreading up and around, which they did do eventually, but rather than waiting for that fight to finish, they took advantage of that fight to actually spread into zone a little bit, maintaining that control, getting that high ground, and their reward is 18 points on the board. You know what? I'm going to steal your thunder right now. 14 points nikale. Let's go. Nice one coming out from Nongshin Red Force. Godlike. Pointer. That's a back-to-back chicken dinner, as we already said. Loving it from South Korea. I'm getting those G+ vibes right now. I'm getting Nongul 2.0 vibes. Loving what we're seeing so far. Really happy. But going on to the second slot here, Godlike. Interesting to see, right, 7. No hot drop, how it can do for you in these games. Exactly. Don't worry. We'll get a chance to talk about Godlike a little bit more. Tiamba. How about Tiamba? Tiamba with that great performance as well, putting up those numbers. Tiamba really hasn't been putting up much. And also another team that I wanted to touch base on, Lace, is none other than Yangon Galacticos now having back-to-back good performances. Yeah, I mean, top 5 in the last 2 games, but not too much to show for it. Then coming into this match, and as the PMWC Championships, they have finally picked up the phone to their goddamn wake-up call, because I could not understand why this team had to take this long to get to this point. Now, we're obviously in this final zone. They didn't have the cover to sort of protect themselves from it. They had to just bide their time to make sure that they can get those placement points. But I mean, it moves them from 15 to 6. Yeah, it does end up moving them from 15 to 6 because of the sponge points. Something that we ended up seeing there is in the top 5, there was none of the top 3 teams, so allow other teams. And you were talking about Godlike. Guess what, Godlike? This is what happens when you don't hot drop. This is exactly what I've been talking about. And we can look at the stats here as S-Power was able to get those 4 eliminations. Finally, just give it up. It's just not worth the hot drop. They're really happy behind us, though. They're not hot dropping. They're really hype about it. But no, going to see when you don't hot drop, look at that. 4 eliminations, 3, 2, 2. Especially SONY. What a save earlier. Yes. He got the entire team reset. This team is looking great so far. Man, I just want to talk about Manya's decision to make the largest rotate over to the eastern, well, not from the eastern side, the western side's bridge. They were able to scout. There were 3 teams on that east bridge. They made their way around to the western side. They obviously moved their rotation into there. They were able to obviously protect their 4 eliminations early on, but my God, they actually then took notice of IDA's split hold, took them down, and quickly advanced and moved their rotation in. And then Alpha 7 came out of nowhere. Oh, we're going to third party this here. No, Godlike read that like a book, were able to defend them off. And look, usually, you know, we're going to say मैं दो टीमों को सपोर्ट करता हूं. कौन से आशु भाई, कौन से टीम को सपोर्ट कर रहे हो आप? Because that was an absolutely insane performance to be able to defend through certain teams after that entire long rotate. It's the next one. It's it wasn't you. I dodged it. I was so quick. I can't throw him at Max anymore. It's my turn. It's my day today. I got in trouble. But my God, what a performance. No, it was really good. I And kind of need those. You can't damage me. we were kind of talking about, right, how you were like, look, Godlike's a really aggressive team.
don't be so aggressive. And this thing is that actually Unnecessary aggressiveness. unnecessarily, right? This was very necessary because once they stopped hot dropping, they took out Hora, A7, and with a little help from Yangon, EA as well. E-Arena, the top team. Well, second place team now, but you can see that this is a team that actually can go up against the big names in this lobby as long as you मैं कराची से हूँ, अच्छा आप कराची से हो, क्या बात है Unnecessary यार, बहुत aggressiveness बढ़िया। from Godlike. You don't need to see it. Just wait for the right time. We know you have the fragging power. Snacks is currently watching. He's like, yeah, you know what? We're absolutely right. But you know what else we were watching? Wolves, Baton, what the heck? स्नैक्स का नाम नहीं है अपने स्नैक्स भाव के लिए चीचा का नाम लिए क्या? That's so you love to see that. अपने चीचा का नाम लिए क्या? Plays like that. Come on. The pan is the deadliest bullet. Look, it hit me. You got me. Why is this a boomerang? Okay, If well only done. we could have a real pan. So actually, you know what? Sorry, I gotta be that guy. Actually, According to my not like we're talking calculations. about no hot. According to my calculation, that sounds like John Allen. Anyways, no, we'll see. Thank you. Looking at these drops going into Miramar, which is going to be the next coming map, right? स्नैक्स की जगह नाम लिए ना, वो गलती से क्या है I पता did नहीं an चला। interview with them just yesterday, and they said, Godlike, they're going to commit to the hot drop. So did Sky from Hora, but that's not all, because apparently, Yes. what I've seen in the announced drops, Chiamba and also Hustler Crew could also send it over there. Chiamba, I think they're going to put their ego aside, go for maybe water treatment. I wouldn't be surprised. But Hustler Crew, maybe. They're a bit of a troll team, and they like ruining teams going into these games like they did on Godlike earlier. Exactly. In Apartment. They might do it again. Tactical sabotage is what it's called. Oh. They're also going to be sabotaging their own performance if they keep doing that kind of stuff. Said Well, it, let's not me. take a look at this head-to-head between Vitality and E-Arena, because those two teams have just been sponging up so many points. I mean, right now, 25-26, Vitality 25-34. eliminations average is absolutely Let's go, we are in the 8th insane. And that's position. why Lays, they're truly sitting 6, at 7, the 8 top का of तो those 22, 22, 22 है, Yo, क्या anyone बात है watching यार? before saying प्लेसमेंट like, पोजीशन oh, अपना you एकदम game from 3, Melbourne, you know, blah, blah. एलिमिनेशंस But can I just take you through a story? Riza, 19. with the drive-by giggle, this team is having so much fun in this game. पहले which is पेज पे आ चुके absolutely हैं, insane. अभी 2 And मैचेस after, में अगर you हम know, a अच्छा cost of खेल their लिए fight, 5th पोजीशन तो आराम से कर the सकते हैं, duo of the 3 पॉइंट का firepower of डिफरेंस है Ryzen 5th Axel पोजीशन is के just लिए। another level. They were actually able to obtain another 5 eliminations हसलर as a क्रू duo, है, which is हॉट more ड्रॉप than any करेंगे, other उसमें squad did से early on in that match. 3 पॉइंट्स तो हमारे ही हैं, हॉट ड्रॉप में अपन दे दिए उनको, वरना तो 7 का 4 पॉइंट में and then बैठ Hustler रहे Crew. थे। Talking about those drops, talking about them actually wanting to spoil, right, maybe sabotage a little bit. Neptura, with them being at the bottom, I mean, they're just going to continue on sabotaging their own style. I really hope they don't do that. Yep. They need to actually try and find some points more organically than just hot dropping. However, I don't feel like we're really going to see that today. I think they're going to try at least one Miramar to see if they can actually make it work, which it's not going to, but you know what? You just have to find out for yourselves. Well, yeah, hopefully they're not going to be throwing anything. Ha! I got somebody! And as we're going into game 5. Yeah, oh. Naruto! You see that? Let's go to stage. Anytime now. Right now, in fact, yes, of course, as despite, of course, we had that amazing win at the very beginning of the day, it's Vitality in #1 here, Blank, after insane consistency throughout the day. Yeah, it's been an incredible day for Vitality so far, and honestly, I think the Indonesian crowd can't be happier for this team so far. They'll be very, very proud. Even in that last match, yes, they come 13th. However, of the 8 eliminations they got, they took out everyone else and then went out by another team. So these guys are on a great time. Consistency's through the roof, like you say. It's also awesome because it feels like a spiritual successor right now. You've got Ryuk and Razy. Yeah. It's like Zuxi and Luxi the past. You've got Axel who's doing incredible work on his own. Kind of like the Ryzen of the past as well. It's like we're bringing it all back here, and this is the future of Indonesia. I saw on socials one of the twins was milling around in Paris as well. Luxi is here. Yes, yeah, Luxi is here. I saw him the other day. He's a good lad, yeah. He's a lot more mature than he used to be as well. But yeah, it's always good talking to Luxi. He's a really, really cool guy. No, definitely. I think that also Vitality not only is able to bring the gun power, but also the positional awareness as well, right? Yeah. When it comes to that beach situation in Ehrenkel and having to sort of weave your way behind the strong Alpha 7 position in a lot of that, they understand where they need to go and when they need to go, because sometimes you could be in positions too early, but Vitality was there when they needed to be, even though the circle eventually goes against them. Well, I don't know if you agree
with me, but I think maturity is a great way to describe them at the moment. The way that they are just regrouping on one another during these games is fantastic. It's really, really good stuff. I've been very much enjoying it. All right, well, thank you very much, Blanket. It's time to head on over to the commentators once again here for another game at PMWC. Absolutely, we are ready to get stuck in. Thank you very much for the Blank Jutsu breakdown there. It was a real treat to hear about the maturity, the development, the further progression of our teams. Because it is getting OG दूसरी 40 क्या बात है यार आशु भाई जॉर्ड. Back-to-back chicken dinner is going to be pretty soothing for the nerves on Nongshim Red Force. Vitality going to be feeling pretty chill. You know what I'm slightly worried about though? What's that? क्या बात है Is the arena. Okay, Where they've been at since that chicken dinner at the start of the day. That's a good point. I mean, they've been putting up some decent points, right? But considering that they had 39 in one game, they set that pace like we would not possibly believe. But you know what? और आशु भाई that's it for Airgale. इसमें तो फिर आप किसको सपोर्ट कर रहे हो ये वाले ग्रुप पे क्योंकि आप जो दोनों टीम को सपोर्ट कर रहे हो वो दोनों तो ग्रुप ए में थे ग्रुप बी में किसको सपोर्ट कर रहे हो फिर आप some hot drop action here that is going to make things mighty interesting. As we look at the leaderboards, Vitality on top, 59 points. 6th place cutoff right now, Yangon Galacticos with 22. That is a 37-point difference. 37 points from 1st and 6th. That's almost as many points as Nongshim Red Force have here. I think I would definitely say that would be big. A big difference. That's a big one. Yeah, definitely. I would classify that according to my calculations, as apparently I like to say. Back how we say it back home, a biggin. We say that too. Oh, really? Yeah, it's a real biggin. You know what? It's international. Yes, it's pan-Atlantic. Like ETSH might have been a little bit of a hot drop situation, and all the players going up north. अपन लॉस क्लियरनेस में You उतरे can हैं. see some shots out of some cars. Yeah, Edge and Yangon Galacticos going to be going toe-to-toe a little bit on a hot drop there, but they have taken either मतलब नहीं आप दो टीम को सपोर्ट कर रहे हो OG और 40 वो दोनों तो ग्रुप ए में है ना ये वाले ग्रुप में नहीं है तो आज जो ग्रुप बी के मैचेस हैं इस वाले ग्रुप बी में आप किसको सपोर्ट कर रहे हो उनके मैचेस तो कल खत्म हो गए ग्रुप ए के alone in Los Leones, and we are going to be seeing that western side start to pack in, I'm sure, as teams make their way out that way and try and make themselves look as good as possible. If you want to look as good as possible, you need to be heading over to that Uzumaki Naruto event, grabbing those fresh-looking skins. Look at the firepower on that skin. Ooh, that Nine Tails Fury right there, and it is insane. मेरी कंट्री पाकिस्तान है पर मुझे इंडिया भी पसंद है क्या बात है You're able to take down the Nine जॉर्ड Tails, that man does not mess around. I mean, one of the most difficult bosses बहुत बढ़िया I have fought in the game, that's for sure. इस वाले गेम में कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही है 16 टीम में कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं बताओ अच्छा ये बताओ इस वाले मैच में कौन चिकन डिनर निकालेगा आशु भाई 1 से लेकर 16 पोजीशन में जो टीम कौन सी टीम निकालेगी नंबर बताओ That kind of felt like a similar sort of kaiju level threat in this game, but so far that hasn't been repeated, and we're going to be a little bit more sensible. They definitely, channeled his chakra, that's for sure, in the first match. But, just like in Naruto, it fades away. You know what I'm saying? So... Does it fade away? I think it lingered a little bit because they still have a whole points here. But Vitality, somehow we're able to pass them up, which is just crazy to me. But the one difference that we have from Group A versus Group B is there are some serious points bunches here, right? It was pretty close for the most part when it came to Group A, where we felt like any team could make it in the top 5. The thing is, though, with these next 2 matches to go, if we continue to see, Nongshim, Aura, EA, Vitality, even Alpha 7 get a win here, it's going to be pretty difficult for these teams to try to make it straight to the finals. Yeah, absolutely. But I mean, to be fair, 5th place being 25 points, like that's one kind of good game, right? From a team all the way down towards the, well, I say very good game, a 15 elim chicken dinner. That's doable, right? Sure, that is a very reasonable thing for a team to be able to achieve. So literally anyone at this point could just jump straight into the top 5 if they've got that firepower behind them, if they get a position. And by top 5,
You mean just 5th place? Oh, wait, yeah. 5th place is top 5. I checked. That is true. I mean, that's what's so crazy, though, considering that, I mean, 38 to 25 from 4th and 5th is wild. So, yeah, I mean, we still have that 5th place spot that's looking good. But, you know, if you continue to give breathing room to those top 4, then that only leaves 1 slot available tomorrow, and you do not want that. And there's some serious names below that top 5. You got our previous champs, Young Galacticos, right there at 6th. Our PMGC champs barely holding on right now in 5th. And Tianba, a monster squad right below them. So, man, it's going to be pretty wild to see how things ring out here. You can see the coach corner as we take a look at these guys. Every single time we see the coaches, I want to see them smiling, getting hyped. You know what I'm saying? Like, let's get, but it's just serious business from these coaches. Hey, look, they got to be digesting all of that information as fast as possible, because you don't have a long time to convey it to the team, right? So you need to be looking at those early stages. I think they'll be focused in now much more than maybe in about 5 minutes. Then they'll come back into it a little bit later in the game. But these early game negotiations with the lobby are going to be pretty important. So I think, you know, fair enough that they're locked in. It's almost like they're trying to take this seriously, Duke. You know, which, you know, now that I think about it, kind of cringe, actually. Kind of wild. I mean, now that I think about it, like in pretty much in every sport, anytime you look at a coach, you don't look too happy, right? No matter what's going on here. Hey, if you're pleased with your team, you're not thinking about it right. Yeah, it's right. That's right. Whoa. Could have won by more points. And look at this. QZZ. He's on a horse. Idiot. And he's out of it. Some real high jumps on that guy, you know? Yeah. That's powerful, back legs there. We'll need to consult Neptura to see if that's a reasonable amount of height for a horse to jump, you know? She is our equestrian expert on the panel. Very much so. Take a look at Alpha 7, though. Alpha 7 love El Pozo. This is their drop spot. They know this whole city like the back of their hand. So for them to be able to make it up here nice and safe and sound is going to be a great sign for our PMGC champions here. As far as teams that are not in this zone just yet, we got Nongshim Red Force, who just won 2 chicken dinners. They're all the way down south in Minas. You have Vitality in Los Leones, S2G, and Hustler Crew still trying to get into this circle. Yeah, up on that north side. Hustler Crew and S2G going to have to try and negotiate around water treatment. La Cobraria as well, potentially. Going through the Crater Fields area is going to be very, very difficult with where Horror sits. So I wouldn't be too surprised to see Hustler Crew try and swing wide out over the north to past La Cobraria, past the west side of Crater Fields, and try and find a way in that way. Either that or get much closer to San Martin, but I just don't think you can move freely on the north side of this circle by going straight past Crater Fields. I just don't think it's going to work out well, and I think that they may have read that. Yeah, they're going to be trying to find themselves their best spot possible. But oh, looks like we do have a fight. And it's going to be Slownik battling it out with TT Project. Going to go for a little 1v2 action here. Pulls a pin, fakes it, jump shots. Oh, he's got to watch out for that S12K. Yeah, back it on up. Now getting hit by that. He's going to have to find some cheeky angles here. Oh, the jump shot ends up catching it. But here come the rest of the Wolves. Are they going to be able to save their teammate? Looks like they might have just done so and just in time. And now in comes back to hold the angle, get the flush as well. Slonic is very, very low though, Jukes. They do need to get him picked back up right now if they want to try and make this one work. Neos is still on the top floor. Slonic is bleeding. He's bleeding out, and down he goes. And down goes Neos. He's dropping down for the fight, but it's not going to go well. Necessary does what is needed. And FPS steps forwards to try and challenge it yet again, but he's the last to stand for TT Project. This is going to be the Wolves all day. TT Project, take a tumble. Oh man, and what a play for the Wolves here. Our NA representatives getting that fight done, and they are in elimination range. They are all the way at the bottom 3 here, so with that fight, it does push them up a little bit. Hopefully to try to at least make the survival stage and extend their tournament life just a little bit longer. But it looks like we may just have a true El Pozo circle here. As now we're going to look at Vitality getting some shots downrange as well. Getting stuck in as and needed. Ooh, 2 of them are down though, and it's up to Federales and Axel to try and hold off against ETSH. Against Etch, that's a good start. Leveling the playing field now on the numbers. Fajita
being as isolated from the rest of the players as he is going to make it a little bit easier to get these reses, but Ryuk may just be a bit of a goner here, Dukes. He is very far afield. Axel launching the nades, a volley sent from the back lines as well as Federales has one looping over the top. Razy likely going to get picked back up, but I think, yeah, that's that flush down. That's that nade. Thank you. As it comes on in, Fahita actually not stopping off to go for the flush. Instead, wants to bolster the position for Edge. Oh, Fahita is sizzling right now. He's going to have to make a play all by himself because these nades are really starting to hurt. Federalis is just on point with them. There's another airburst, and that picked him off a little bit. He does Fort, but that fada. nade's going to hurt a whole lot, and that is ETSH out of there. एक सेकंड के लिए वाइटैलिटी बैकफुट पे थी, 2 नॉक हो गए थे, बट कैसे संभाले देखे। बड़ी टीम्स की यही पहचान होती है बे, तुम्हारे 2 नॉक होने के बाद भी यू कैन फाइट बैक। Outside, but they do need to get a move on. No one really too close enough to cause any worry for them in terms of पैनिक नहीं किए, पुशेस नहीं किए, होल्ड कंपोजर रखे, यही चाहिए होता है भाई। where they can slot on in. यही चीज एक्सपीरियंस लाती है। Lobby and Hustler crew did in fact go for that wide north rotate. S2G didn't. They sent in and they're now south of Crater Fields and have kept all 4 of their players alive. So I didn't expect them to be able to do something like that with Horror taking up that high ground, but seems like they made it work. E-Arena got to follow on that north side behind Hustler crew. So potential for the northwest side. ऐसा लग रहा है ग्रुप ए का जो 2 दिन में जितने टॉप पॉइंट्स थे वो आज एक ही दिन में कर देंगे। Into that top of that circle here. Alpha 7 dead center of this zone. You got Tianba there down south, and we're going to see some crates start to fly in this Miramar match. So Godlike because of the playing path, we didn't see any crazy hot drops. ईस्टर्न पूरा अपने पे है, बोलते कटा बे, जोन बोलते कटा। So take a look at the top players so far. Axel on top, and then no surprise. भाई अभी इटली आगे जाएगी। मैं दोनों इंडिया और पाकिस्तान दोनों को सपोर्ट करता हूँ। आशु भाई आप लगता है बहुत पीछे देख रहे हो मेरा, एक बार लाइव दबा दो, लाइव का बटन दबा दो, बहुत आप पीछे देख रहे हो। और ये वाला मैं आपको 15 मिनट पहले 10 मिनट पहले पूछा रहा हूँ। मानिए मर कैसे, कौन मारा? Those fields that are overlooked by Ida's position now gonna make it pretty tricky. Okay. Oh, I kind of like this approach. Hops out with the parachute, jumps on top of the mesa. Okay, looking pretty stylish with the stunts there. That's how you get it done. The question is how is he going to get down? Yeah, I was just thinking that. That's the problem. So we got STG. They said, you know what? We don't have to worry about getting down. We're getting into this building here. And now they're looking for some angles onto Alpha 7. So this fight starting to ring out, which is a little bit wild. I mean, they are in center of zone. It would pay off for these teams to kind of just hold their position and then wait to fight until the end. But with Zhao kind of out of position here, it is going to make things a little bit spicy. Yeah, with Dopeness sort of cutting through the middle of that position, it's going to make things hard. S2G are going to start to get angles on it too once they figure out how to park a car in their little garage there. And there's that nade. That's what you're worried about. That's exactly what you're talking about. And Zhao goes down. Too many noisy neighbors. They didn't put in the complaints early enough, and now they can't do anything about it. Yeah, they're not going to be able to do anything about it, like you mentioned. Looking at Revo here, trying to do something, though. He's looking at those 3 peaks, just trying to get a little bit more intel. I won't be surprised if we don't even see a fight here happen at all. I mean, this is still dead central zone. I think right now it's just about getting information, just making sure no team just randomly pushes up into him. Now, the fights that could definitely ring on out are there on the south side. You got Vitality, Tianba, Wolves, Mighty close to each other. But meanwhile, in El Pozo, we're going to see just a lot of teams just taking little pop shots, trying to knock down a little bit of armor. I like what Ida are doing on the eastern side of this circle, right? They have that super duper high ground that you know overlooks those El Pozo fields. They're going to have a lot of angles to try and make that one work. And I like what Rita has done here. Moved down. They know that they're not under threat from their east side anymore, which means that they can, well, almost certainly not under threat from their east side, not technically guaranteed, but
certainly a little bit assuaged. But moving Rita out, I really like that. Gives them a foothold to move down because they're very likely going to have to leave this high ground. Yeah. So they can start to scout out the angles that they can crash towards in those fields out on the east side. So hopefully we're going to see a Turkish team have a good game here. Yeah, the zone definitely goes to them. Oh, and it kind of does. I mean, it still have some of that play in for them. So this could be a huge opportunity for them to get some points. If that next circle definitely hard shifts onto the east side, they're going to get a crazy game. ऊपर पहुंच गई है हाँ Disgusting. रोटेशन मारी है बे One of those little crazy hay bale areas. You're committing crazy to the rest of rotation the game. oh but my now god we're going to see Vitality, Team Vitality getting into it with Tianba. This is a huge fight. I mean, Tianba not really getting into it at all, actually, sending straight across the open field. Okay, Vitality and Ida both actually vying for the warehouses on the south side of the field. Ida committing there. Tianba trying to get across out in the open, losing another player. And now, I mean, Ida crunching in Vitality. It might just be working out beautifully for them. It's going to send Vitality away, deny them access to the eastern portions of this circle. See on the west side. We're looking Yeah, at la la. Nongshim Red Force. Ooh, yeah. Webs catching हो गया काम XCY. Gonna be looking for some more players here. Hyunbin mighty आया close. ही नहीं He heard that pin get फालतू में pulled क्या and he said, let me time to back it on up. This is a very difficult area to nade. You have to throw it literally in the perfect position if you want to get it on. And now Tizzy from across the way, putting a little bit of pressure. Gonna go ahead and get his teammate back up. And it definitely looks like this fight's going to ring out all the way to its bitter end here. Because this zone is not finding either of these teams. And yeah, co-founder, sponsor. Some room to work with. Trying to roll on up to the back lines, take that 2 versus 2 fight. And it's going 1-for-1, but they're hitting the drop shots. It is brutal. And Nongshim Red Force serve a lesson straight on up to half of the arena, and the other half is nowhere to be seen. Big इधर दो नॉन्गशिम के प्लेयर्स इधर एक टीम को फाइट ले रही है उधर दोनों ऊपर फाइट ले रही है क्या गजब गजब डिवाइड करे खेल रहे हैं डिवाइड एंड रूल कर रही है नॉन्गशिम Hyunbin wants to load one more into the old arm cannon. 30K trying to make a play here. Putting some shots on the Tizzy while he's in the blue zone. And you are right, man. We saw E-Arena go crazy in Rondo. And oh, that would have been so good. फटा क्या अरे क्या नेड मारा है Tie squad. Tourniquet's got that nade though. This could be dangerous if he hits it. Doesn't quite get the mark. And now Nongshim Red Force are getting their whole squad together. This is not good on the side of E-Arena. Yeah, they didn't manage to win that fight out on the east side. I mean, it was a little bit of a gamble, but probably a necessary one. Unfortunately, this time around, it did not go their way. And Nongshim Red Force are looking pretty stalwart in their hold. So easy. Moving across through those smokes, waits for the nade, darts past it, and they are just moving across. Vitality in the meantime, को मार पाएगा and this is going to make things tricky. ओए क्या डॉज किया बुलेट्स लेकिन ये ले लेगा And the arena are going to strike immediately, snapping the points where they can, but no, not going to happen. What? All of them go to Vitality. That's crazy. Somehow Vitality फिर से wasn't चोरी able to steal that चोरी तो नहीं elimination. Just बट looks like ये he ढंग से just shot चोरी him भी down नहीं to कर पाया half an बताओ पूरा HP क्लियर and कट ticked दिख him रहा on था down. Unfortunate. बेचारे यार नॉन्गशिम यार पीछे वाइटालिटी आगे ये अरीना एकदम पीस गए अरे नाइस पूरा डाल अरे नाइस वो बताओ यंगन मार रही है दूर से नॉन्गशिम बोले आ रहा मारो मेरी गाफ में मारो इस पे मारो सर पे मारो इधर से वाइटालिटी उधर से ई अरीना पीछे से यंगन सामने भी आ जाओ कोई मारी दो चादर मोद Another chicken dinner, which they're probably hoping for. Not going to happen this time around. All of that fight was exacerbated by the earlier engagement, the earlier descent we saw from Ida from that high ground. भाई वाइटालिटी तो रुक ही नहीं रही है 8 किल कर ली है क्या करके मानेगी भाई क्या करके मानेगी भाई जो जहाँ पे लोगों के बाइनरी डिजिट में किल है इस अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है फाइट वो 8 किल करके बैठी है 67 total and we are not done with match number 5. There's still more to go. If you could believe क्या है Godlike का यार एक Godlike crazy entry है zone में this is एक crazy rotation मारे हुए इस मैच में careful with that sort of numbers. But we are going to be heading into match number 6 after this as well. And yeah, it's pretty nasty to have a team like Vitality putting on this sort of a show.
with the 8 eliminations they've got so far this match. Ida potentially vulnerable to losing retest. They chase on in. Meanwhile, over in El Pozo, though, there is a charge through the high street. They say the high street is dead, but it might just be dead to rights for 721 GS, but maybe not. In the meantime, Tiamba, they were cut down to 2 earlier on. There's already a lot of damage done, and Moscow once more will not be able to chew. Nice try, Ray, Moscow. 721, I believe, just run straight through as they try and make a mad dash out. इनके पास बहुत crazy dip है भाई. बस ऊपर पे आ गया वो हो रहा वहाँ से अगर नेट वेट मार दे तो that's a different case. This little dip is dangerous considering that it's kind of hard to get even near there. इंडिया की टीम का शॉर्टकट नाम क्या है आया क्या है भाई 9th वाली टीम इंडिया का है GODL जो है. And for the other side of that weakness, when it comes to the side of Aura, Tiamba did set up that vehicle. भाई आप इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहे हो और आपको इंडियन टीम का शॉर्टकट नेम ही नहीं पता. ऐसे सपोर्टर हो बे. इससे तो सपोर्ट ही मत करो बे. लजवा रहे हो तुम सपोर्टर के नाम से. Oh my. लजवाओ ठीक रहे हो भाई आप तो. No, Emre didn't want to take the shot certainly. हाँ ना बे. साला मतलब सपोर्ट करता है इंडियन टीम को और इंडियन टीम का वही वो एब्रिविएशन नेम ही नहीं पता. ओ बूम क्या स्नाइप किया है रिजी. Love to see some sniper action. आज इतने दिनों इतने सालों के बाद स्नाइपर यूज में देखा भाई. पहले एंगल में AWM ये वाला क्या है बे. DMR नहीं DBR क्या है ओए वो क्या है बे. AWM के ऊपर में कौन सा स्नाइपर है वो. AWM के ऊपर में और एक जो स्नाइपर है जिसका बड़ा मैगजीन है पूरा. देखना देखना नाम this run, but maybe they'll be able to sneak 1 player, maybe even 2 through, but even then that is a too tall of an order for them and they fall down. Alpha 7, they are down to 2 players despite starting here and really haven't had the best. अरे ये जोन तो फिर से गॉडलाइक के पास है वो कंपाउंड वाला जोन तो है. नाइस बट नेट वेट का थोड़ा देखकर करना पड़ेगा. When it comes to circles has just been the most toxic, ridiculous zones in one day I've seen. His zone has just been brutal. Now we're going to see a Rebel get taken out by Smile. This is Young on Galacticos. These are 2 championship teams battling it out, and Young on Galacticos are going to eliminate Alpha 7, and that's brutal for them considering that they were right below them on the leaderboard. So now Young on moves into 5th place. Yeah, they're taking that mantle now, and they are winning on that tiebreaker. They are in that 5th place spot. AMR AWM और AMR guys. ठीक है. Well, QCZ holding his nerve. पूरा फोरमैन है थी पे अभी क्या फाइट हो गया. बची है चैट बची है. इट्स गुड दे हैव द फुल ईस्टर्न कंट्रोल पे. नॉर्थ ईस्ट कंट्रोल है भाई पूरा के पास. लेकिन यंग वन भी देख रही है उन्हें एकदम ग्राफ में गोली मारेगी उनको भाई. ये रीजी तो रुक ही नहीं रहा है. AMR से पार्ट दे रहा है. 3 शॉट्स मार दिए उसने अभी तक. गॉडलाइक वर्सेस S2G होने के. अरे ये तो ओपन वाला है बे. कंपाउंड है ही नहीं. क्या हाँ वो तो भाई 70 पॉइंट निकाल लिए. एक मैच बचा है. एक दिन पूरा बचा है. Keep themselves right to the edge of El Pozo, but this is about to go off like as you like 71 ले ऐड कर ले. अभी तक रुकी नहीं है. फोरमैन अभी भी जिंदा है. 12 एलिमिनेशन निकाल चुके हैं. ये तीसरा 13वां. ये क्या मूत रही है भाई. ये तो 40R को भी ये तो 40 को अपने L पे रखती है भाई. ऐसे क्या भाई. Proper domination. Is big boom after big boom. What can you say? And the nades भाई coming ना on now for this El बॉट Pozo. ये है असली डोमिनेशन ब्रो. 40 तो एक में अच्छा खेल रही थी फिर दूसरे में डूब जा रही थी. ये तो हर मैच ही अच्छा खेल रही है. हर मैच ही टॉप 4. better spots in terms of the El Pozo teams. Horror really can't step up to them. It's only going to be vitality across the way that might be. एडमिनो ने एयर ड्रॉप लूट किया. यहाँ पे भी एडमिनो भाई एकदम लूटिंग वूटिंग नहीं छोड़ रहे हो. Pressure is building inside these buildings. पावर ने लिया. लूफा किल ले लिया. टेक्टिक चोरी. लेट्स गो. पॉइंट वी नीड पॉइंट्स. गुड. अरे पावर नॉक. S2G putting some shots on the Godlike मेरा as मादर well. जात. And S2G are just holding this warehouse. It's such a अरे dominant. सौम्य भाई शैक में बैठ के क्या कर रहे हो. Look at this.
Godlike with the M249. Oh, that hurt though. Yeah, time to heal up. Okay. खोपड़ी गया रे सामने भाई का खोपड़ी. अरे शार्क टी एंड डोबी. डोबी नहीं डोबी सॉरी. डोबी. Wanting to try and make it work. Two players alive. S2G looking to fight towards the outside now. आग लग गई रे आग. In steps Hamzy to take up the mantle of that. भाई रीजी भाई सच्ची में ना मान रहे भाई. लिटरली बता रहा हूँ 13 किल 14 किल हो गए भाई इनके. ले 15वां. As well from that up to 14 eliminations for Vitality by the way. As Yangon Galacticos रिवाइव हो गया. पावर रिवाइव हो गया. Admin power. 14 eliminations, Jukes. I said it before. I didn't even believe myself when I said it. This is unreal. I mean, Vitality का split देखो और Vitality का map control देखो. Razy is just going nuts. I mean, knock after knock after knock. I'd love to see his POV here because he is dominating right now. Meanwhile, I mean, this अच्छा गाड़ी लेके हम निकल रहे हैं भाई. प्लीज पहुंच जा प्लीज. अबे होरा पे जा रहे हैं हम तो. ले गई टीम गई. होरा पे ही कूद गई रे. होरा पे ही कूद गई. It's all up to Salme on the off angle here on that high ground. He's not in the next zone, but he's got अरे ले. and he's going to send it forwards. Takes सौम्य भाई ने denying the point. सौम्य भाई ने किल ही नहीं दिया. आज क्या खेल रहे हिमांशु भाई? आज वो खेल रहे हीट खेल रहे. आओ ये मैच के बाद खेलते हैं. डिस्कॉर्ड हिमांशु भाई. पोजीशन पॉइंट निकालो अभी सौम्य भाई आप. वो किल पॉइंट मिला होगा को. आई डोंट थिंक मिला होगा. वाइटैलिटी का ये चिकन आ रहा है. ले इसमें ही 90 पॉइंट छू लेंगे ये लोग. बैगन इधर 3-4 किल निकाले अगर वहाँ पे 87 हो जाएगा. 87 88 हो जाएगा. Could dash straight towards PERIPHERALS on this angle here. Maybe getting with a chance of doing it, but that's kind of the only way I see this not going to Vitality. It was 88 points on that 5th place bubble yesterday for 5th place. They're within striking distance of that right now. And that nade, oh, that one is much too close for comfort. I like the fact that Wolves are throwing out the the smokes देखो just to try दौड़ते and make it आ a रहे little हैं. bit more difficult for this light पहुंच जा सौम्य पहुंच जा. इश में विटालिटी. Elementrix is pinned between that vehicle and अरे नहीं अपने टीम आउट हो गई ना इसलिए. विटालिटी के डाउनलोडेड गेम कट सीन रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल कंप्लीटेड. साहिब भाई अभी गेम खेलो. मैं आ रहा हूँ साथ खेलते हैं फिर. आप गेम खेलो डिस्कॉर्ड पे आओ. डिस्कॉर्ड पे आके खेलना है तो खेल सकते हो. नहीं तो आपको ऐसे नॉर्मली खेलना है तो खेल सकते हो. स्क्रीन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ. स्क्रीनशॉट ले लेना याद से. Well, here comes Team Vitality looking to take this chicken dinner, and it's Razy. He's got the भाई उस वाले बंदे के पास तो हील भी नहीं है बे. He throws it. Oh, starts getting some shots on himself though. Now hits the deck. But with this utility usage, Vitality are just भाई कैसे बचा है वो कैसे बचा है. Sends that Molotov forwards, finds Sleepy with the explosion. Razy wants जिसका HP था वही नॉक हो now गया. there as well as necessary out in the open field. इसमें Joining in for the 1-2 punch. Razy goes down and Sky stays alive now with the मानिया फिर से नहीं. Razy getting flushed away. और पेज पे अभी तो थे. अभी इसके बाद का पता नहीं. मुश्किल है. अल्फा 7 यंगन दोनों ही अच्छा खेल रही है. देखो 5th पोजीशन ही है. टॉप 4 में तो आ ही नहीं सकते. इम्पॉसिबल है क्योंकि टॉप 4 वाले कंसिस्टेंट एवरी मैच टॉप 5 आ रहे हैं. वैटालिटी वो तो छोड़ो. वैटालिटी ई अरीना ये लोग इनको तो छूना इम्पॉसिबल है. बचे हो रहा और वो 56 60 पे बैठे हैं अभी. 60 पे बैठे और 3rd पे हो रहा है और 4th पे वो कौन है नॉमशिन. इन दोनों को छू नहीं सकते. ये लोग हर मैच में टॉप 5 में आ रहे हैं. तो गॉडलाइक खाली 5th पोजीशन ही बचा है. Either 5th
map when it comes to team vitality. And look at that no reaction. These guys are just too cool for school at this point. It's just like, hey, you know what? Another day at the office. How you know when you're a giant striding amongst the pigeons, do you look at the birds? That's no, right. you got your eyes on the horizon and you're stepping towards those finals. Like that is what Team Vitality are looking to do. That is so impressive. We talked about consistency from this roster from the start of the day all the way through and all the way to the end. They've got so much punch. Oh man, what a game. You can see all these other players right now. I'm looking down at the stage and you can see them just kind of talking to each other, being like, what do we do for this next Miramar? Last game of the day, how do we do this? And I'm looking at Team Vitality and they're just like, hey, what kind of croissants are we gonna get here at this point, right? Because I mean, we're good. Hey, you can't be saying it like that. We're in Paris, you know. You got to go full French. You got to throw out the croissant. Well, we are gonna head over and see if we get some better pronunciations on croissant. What do you got? The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. Hello everyone, sorry. This is Media Day at EWC 2026, and I'm going to show you guys exactly what the players go through every single day whenever we're taking pictures, recording content, and basically everything that you see on the streams. And I'll show you a little bit of a walkthrough once I'm done with this, so give me a second. What's up, everybody? It's Jukes. We're here backstage at the Esports World Cup here in Paris, and while watching all these players get all their media shots done, let's give you a quick little behind the scenes of what we got going on here, right? So you can see these different stages here. The production value of this is absolutely wild. We got some of the boys here as well from Nigma Galaxy. What up? How y'all doing? It's great. Organization is great. Everything is perfect, you know. As always, EWC on top. Let's go. Let's go. All right, we'll see more of these guys in here in a little bit as we go and take a look at some of the player photos that we're doing. Look at that. Look at that right there. So sick. Perfecto. Perfecto. Do I look bonita? I feel bonita. Thank you. Okay, now let's get to it. So, first things first, once our lovely players get their hair and makeup done, we start taking them towards hero shots, we start taking them towards like content ideas and such. And this is only the first stop. So, at the moment behind me is one of the teams and they're doing their hero shots. So, there's two kinds of hero shots and they usually do either solo shots or they go for group shots together as a team. And of course, none of this would be possible without our lovely sponsor, SONY, for providing us all the incredible cameras that we're using at the moment to give you the best quality pictures of our lovely players. Now, this is only one of our stops for the day, so नॉर्मली खेल लेता हूँ, वैसे भी मुझे निकालना है अभी 5-6 निकलना है, जो 5-6 खेल लेता हूँ और डीसी पे आके फिर से बोल देना क्या क्या अपलोड करना है. ओके साहब भाई. ये कहाँ है अपना हिमांशु? कहाँ है? Where is Himanshu? Okay, we're good, we're perfectly fine. But yes, one of our many areas here that we use for Media Day, and we want to get the players to be a little bit more creative, Himanshu, more places where they can use different kinds of poses and stuff like that. And listen, I'm already out of air. This is crazy. Oh, that's what they use. They have a ladder. I wish I have known this was a thing before. It was only one climb as well. You see, that was the problem. I thought I was a little bit more athletic than this. Turns out, no. So, अरे ये सफ अलग कौन है भाई? Now we're gonna go on over to the next set. सफ अलग का चैट तो मुझे दिख भी नहीं रहा है. सफ अलग मिस्टर डिस्ट्रक्टोइड ब्रो, आपका मैसेज मुझे दिख भी नहीं रहा है, बट जस्ट बिकॉज नाइटबोर्ड बोल रहा है तो स्टॉप स्पैमिंग. तो
यस ब्रो, आपका मेरा चैनल पर स्वागत है यार। चैनल पे आप नए हैं तो स्ट्रीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। विराट कोहली 2.0 भाई, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आप भी चैनल पे नए हैं तो स्ट्रीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फ्री फायर खत्म हो चुका है EWC में, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। अभी PUBG मोबाइल वर्ल्ड कप चल रहा है तो उसकी बात करेंगे मेरे भाई। Spiderman, and you can also earn some rewards. Make sure you log into PUBG Mobile and get some exclusive rewards. But Max, Vitality, my goodness, they just looked like a boa constrictor that just kept squeezing and squeezing and squeezing. Look, me and Kalaris were talking about this game literally from start to finish. We're like, okay, well, this game, you know, Vitality just stay in the warehouse. You're going to be super chill. A very easy game. Warehouse. It was the warehouse by the end. And they decided to just send it to the west side, like, no, this is getting a bit boring. How about we get like almost 10 eliminations, then go back to the field finish. But looking at the overall stats from these players for the entire day, an average of over 4 eliminations for the day, then almost 3 for Razy, Razak, and Federales. Insane numbers for literally the entirety of Vitality. It's consistency to a T. I mean, they're doing very, very well right now. I feel like I've been talking about Vitality all day today. I'm like their biggest fan or something like that. But realistically, they are playing well and they're having fun with it. And they get to the point where they can have fun with it because it's feeling like it's going to be difficult to knock them out of that top 5 with where they are playing. But this is incredibly greedy. We have to just quickly take a little look at that. I do like it, but you can be greedy if you are the dragon of the lobby, which they are. Exactly. And with that said, I mean, with this team, you were saying it's going to be hard to get them off the top 5. The cutoff for Group A was 88 points in Neptura. Right now, it looks like, depending on what happens next match, actually, we need to see the overall too at some point, because they might have even already hit that, or they're about to hit that as well. No, I think they might have already hit that, which would be absolutely insane. And you know what a great team to actually have that happen too, right? Because we have seen them be so consistent throughout today. We have seen them just take control of everything, all the way from the western side down to the southwestern side, clearing teams left and right, pushing Ida out of their compound, which I think should have never happened. What? Look at Ryzen. He's just giving them the lucky high five. Oh, yeah. wow. Very nice. He gave him the dap up as we see Hora Esports getting 13 eliminations as well in the last game. And a big one too is going to be none other than Wolves Esports. Wolves Esports was in 15th place coming up before this match with 13 points. That's going to be pushing him up. And keep in mind, you want to be outside of those bottom 3. No, it's very true. Wolves were able to just, you know, get as much points as they needed to, just keep that momentum going or move up onto the last match. But I want to talk about Hora here, because this dip is actually incredible for them, because you've got the back end of you right there is completely covered. Nobody can see you in there. In fact, when we saw, I think it was 721 GS move in, it was a complete surprise that they were even there. Out in front of you, it's too open. The only place a team can go is within nade range. So actually that was a fantastic dip for Hora to be in, and they were able to get 3rd place because of it with quite a few elims. That's right. That's very correct. I mean, it's a great position to play as well. I think a lot of teams tried to pick this place up. Tiamba, though, they're kind of disappointing me right now. I think Tiamba has a lot left in them. नहीं They तो originally had this spot quite early on, 6th, 7th पे ही were है, evicted तो fairly वो लोग quickly. जा सकते हैं top 5. They played fairly उनका decently over mainly at Young One के PMI, and I साथ ही think they fight had है. some really pop-off moments. I mean, QZZ was looking fantastic, but where is that Young now? One Galacticos. Tiamba has been down on the tables for a long, long time at this point. That's got to change. We've got one more chance to see it through. I hope it happens, Max. Yeah, I mean, it would be really nice. Come on, to see some Chinese domination here. I mean, QZZ had a really good moment that right from PMI going into this one too. But that's what I said. Yeah, sorry, I'm just stealing your point. I'm leaving the desk now. That's why I don't want you on the desk. Otherwise, he's too good on the desk, guys. There's a big issue. There you go. Your game MVP is going to be Razy from Razy and Razak, also known as Ray Ray. That's why I call them. Yeah, we should get that changed. Razy by जो इसके AMR के shots थे. Just Ray Ray. My boy Ray Ray. By the way, Racy was able to make that push up. It ended up backfiring because he ended up getting knocked. But you can see that was going up to par with what you're saying, the greediness. And with this squad, if they're going to continue to perform like that, I see that greediness getting worse and worse and worse, which is going to make it even more scary for some of the other squads that are outside of the top 5. There are some games as well where that greed comes back into play. But my boy Ray Ray, okay, sometimes you got to lay one of the Rays down, all right? That's the way it's got to be. Actually, Erangel game 3, I believe it was, they greeted a res. It was Razy. Axel had gone in, Razak had gone down, and Razy was like,
my boy. And he went back for him. So it's greed in other areas as well. And I think Vitality, what I've loved about them today is that maturity, that ability to be like, we can't take this 2-2 split. I don't want to let it go to their heads. This is why it is not called. They're smiling. First group was fire, second group bomb. True, bhai. But let's bring back what we saw from game 1 and 2. Yeah, I mean, actually looking back. Group B, drama after drama. I don't know if you would agree or not with this, Blank. Okay. Looking back at how they played in PMGO Season 1, right, which was a tough tournament for Bigatron, this looks like a completely different team. So confident, the synergies of this it. group isn't strong. As time, which is what you just said, but this does not feel like BTR we had earlier this year. Well, it's not a horrible overcorrection. Group of death. Group of death. Group of death. No, sorry, I'm just looking at the contradictions here between people on the Twitch chat, because one of them said this group is not strong. The next one was like, this is the group of death. Make up your mind, chat. Which one is it gonna be? I mean, but look, the thing is, it's not the isn't the group of death. अभी तक तो 8 में बने हैं भाई. Yeah, they've got 80 exact. This is not the group of death. It has a selection of ridiculously strong teams at the top. When we say group of death, we mean it's very even across the floor, which Group A was. It was very hard. We had different teams stepping up all the time there. Here, it's quite obviously not the group of death because they have the same teams time and time again perform well. I would say it's the more unfortunate group that you have Team Vitality, Aura, as well as E-Arena all in it at the same time. Yeah, the sponging of points is something that we're just going to continue to keep in mind here, especially from the top 3 teams. You can see there between top 3 in 6th place, already 27 points difference, which is going to allow for some of the teams to have even more freedom later on, especially tomorrow. I mean, for Yangon Galacticos right now tied up at 30 for the defending champions. Do you think they can stay in that top 5? I think actually they can. Easy on kya just? I really like how they've been playing today. I didn't have that तो क्या खेलोगे? ये stream करोगे? going into today. खेलेंगे, stream करेंगे. Okay. You know, we just haven't. They won last year. खेलेंगे भी, stream भी करेंगे. तो stream start कर दो. किसके लिए wait कर रहे हो? Really nice team that's able to actually compete अभी very तो बैठा. well against everybody else, and I'm very excited for what they got. तो बोला मैं पहले आते ही बोला अभी just बैठा PC पे PC on करके. Sorry, I got sidetracked here. This guy does not. Shiva from X-Force Rejects. मैं पहले सोचा face cam करूँगा और करने light ले लो. Because you guys did end up getting eliminated from PMWC at EWC 26. किससे बोला? But anything. कुछ नहीं. First of all, hey, बोला. Join Paris outside of getting eliminated. वो बोल रहे हैं वो face cam करने वाले. अच्छा face cam करेगा. अय्या. कौन बोला ये? Face cam करेगा रे. I've never thought of something like this in my life. Face cam करेगा ठीक है. करो मैं देखता हूँ. अरे पर placement सही नहीं लग रहा मेरे को. देखो एक बार. क्या placement चाहते हो? कितना LP है? What have you learned from कर दी ना lented वाली PMWC that you can take on later into the year, right? Because we still got PMGO Season 2. We still got ये दिख रहा है, OBS दिख रहा है एक बार. Anything that you can take into those upcoming events? I think the biggest thing that we have learned is like to be a bit more aggressive, because I think not being aggressive, you stuck yourself in one spot and teams takes advantage. दिख रहा है, OBS दिख रहा है ना पूरा proper. Where you allow them to give get space. क्या दिख रहा है? If you don't do that, I think, yeah, like I said, like नहीं दिखा. दिखा रहा हूँ रुक जाओ. ऐसे क्या देखने के लिए? नहीं दिखा. Allow any team to come close to them. नहीं दिखा. Rocked up अरे रुक रे. kills. That's नहीं दिखा रे. It is crazy, honestly, with the way that some of these teams have been performing. It has Hey, been scary. Lanchat. Do you have any questions for Chiva from X-Force Rejects? I mean, I want to know because I was thinking that there was going to be, some big अभी plays दिखेगा. coming in from you guys, but we didn't really see you that much coming into the end of, the end of the circles, the end of the game that much. Was there like a rotation pattern cut off by other teams, or what went wrong in the mid? इसमें placement सही है कैसा है? हाँ अच्छा है. मुट्ठी मार दूँगा रे. मैं तभी बाथरूम जाना पड़ेगा. अरे ये देखो ऐसे भी करके रखा मैं जानते हो. That already makes your एक मुट्ठी 10 ml का 50 ml निकलेगा आज तो. Winning chance. बस आज के लिए इतना ही. Have 4 players in game. I think you already have a really good game. So for us, is try to what we need to fix on is try to have all 4 ये भाई चश्मा चाहिए मेरे को. On rotations and also be more coordinated. अरे ये लाइट वाइट ये अरे नॉर्मल स्क्रीन का लाइट अलग है. ये भैंचोद मुंह पे ये लाइट गिर रहा है ना राइट साइड से.
Thank you so much for coming on and just giving us an insight. And I'm hoping we'll get a chance to see you at PMGO Season 2. I'm hoping that we'll get a chance ज़्यादा पैसा है तो थोड़ा ब्लू-रे चश्मा आ रहा है ब्लू I want you to say अरे मेरे को पूछना था ये जो मिनी जीटी नहीं होता है जीटी होता है अरे अरे गाड़ी नहीं एक देखना एक कुछ बॉक्सेस में डाइकास्ट बॉक्सेस में मिनी जीटी लिखा रहता है हाँ पता है मेरे पास है आगे बोलो उसका मेरा 6 है फोटो भेजो ना एक बार फोटो डब्बे का मैं फिर वो बोल पाऊंगा कि हाँ ये इसी के बारे में बात कर रहा हूँ अरे बोलो आप आगे उसके वो वाला कहाँ मिलता है इंडिया बोलो ना कार्स एंड डॉल्स में मिलता है तो टॉयज कलेक्शन इंडिया में भी मिलता है नहीं मेरे को नहीं दिखा कोई प्रॉपर ये देखो स्क्रीन देख रहे हो देखो Absolutely. By the way, guys, make sure you go follow him on Instagram, shiva.ios. That's what it's all about here, guys. And we're going to get into the last match of क्या गाइस ओजी लास्ट मैच जो चिकन निकाली थी गॉडलाइक निकाल पाएगी क्योंकि लास्ट मैच और चिकन डिनर्स आर अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड ओ भाई ये चेंज किया रे वेबसाइट थोड़ा अपग्रेड किया है भाई क्रेजी दिख रहा है अभी नाइस अभी यहाँ पे ये देखो मिनी जीटी ये क्या वो गाड़ी का है या ब्रांड का नाम है वेब जो बेचती है डाइकास्ट जो मिनी जीटी बना डाइकास्ट बनाने वाला है इनका कोलैब रहता है इनका जो पूरा पीछे ना अब अगर निशान का होगा निशान का BMW लैम्बोर्गिनी का सब तो वो डब्बा वैसे दिखेगा डब्बा वैसे देंगे देखो अभी 2 टाइप का आता है देखो अभी यहाँ पे देखो मिनी जीटी का अभी यहाँ पे ये देखो मिनी जीटी लिखा है मिनी जीटी ब्लिस्टर पैक लिखा है ब्लिस्टर पैक ऐसा रहता है देखो एक ऐसा नहीं और एक डब्बा वाला रहता है स्क्वायर वाला रेक्टेंगल डब्बा हाँ ये देखो ये रहा डब्बा लेकिन ये तो उसके अंदर आ रहा है ना हाँ ये ब्लिस्टर पैक में क्या रहता है ब्लिस्टर पैक का फायदा क्या है अगर आप अभी सोच रहे हो नहीं खोलूंगा मैं सजाने के लिए रख रहा हूँ तो आई प्रेफर कि मैं मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि ब्लिस्टर पैक लो और ये कवर ले लेना ठीक है नॉर्मल में क्या रहता है ये रहेगा कवर मतलब ये वाला चीज ठीक है कवर के साथ मिलेगा ना ये तो हाँ कवर के साथ मिलेगा ये को लटकाने के लिए ये देखो एक्स्ट्रा ये नहीं मिलेगा ये नहीं मिलेगा मिलेगा भाई दिखाया मतलब मिलेगा अभी ये देखो ये सब है ब्लिस्टर पैक में क्या रहता है फायदा क्या है इसमें कार्ड आर्ट रहता है ये देख रहे हो कार्ड आर्ट अब अगर आप नॉर्मल मिनी जीटी में देखोगे तो वो डब्बे में आएगा खोलो एक ये सब जो सेकंड वाला खोलो अच्छा ये वाला ये देखो ना वो टट्टी क्यों देख रहे हो नकली F40 क्यों देख रहे हो इसका डब्बा फोटो नहीं दिखा है fairly chill, centering up west of the Cardo. And grab some, sorry, on that north side, I was saying Alpha 7 could grab vehicles, head over that north edge. I imagine that's what they're going to look to do here. चलो एक पहली बार एक इंसान जैसा जोन बना है आज के 6 मैचों में पहला मैच है over towards Biodemar at the start of the last match, but देखो फिर ये देखो आर्टिकल को मैं लेके आया रुको this game, and now we got it seems like a normal game. I don't know why I'm saying that because we thought the last circle was going to be okay, and it goes to the one open field in that whole side of the map, which is just unbelievable. But no crazy hot drops. So it does look like teams are going to be avoiding it here. They don't want to be dealing with any of those shenanigans, and that's the right play. I mean, guys, this is the last game. You have quite a few squads that have done a ridiculous match here. And now we're going to go ahead and take a look at some teams just trying to rotate and make the right plays. Hey, if you're talking about rotating, right, that's something that you could be doing on the lucky spin. Right, that is what you're going to be trying to look for. Hello? Getting those good rotations. देख रहे हो? We all know spinning is just डिस्कॉर्ड पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं हां वो तो देख ही रहा हूं लेकिन दिखा थोड़ी रहेगा दिखाओ अच्छे से खोलो अब ये जो बॉक्स है इसमें नॉर्मल हॉटल्स है इसमें से कुछ प्रीमियम है मैं कार्ड आर्ट है वो अलग जगह में रखा हूं इसमें है मेन चीज It's my favorite gun sound in the game. It really is. Me suppressed M24. It's just so nice. तो रेयर चीज दिखेगा ठीक है आपको पहला I'm not even gonna try it. I actually did try it. Yeah. Go on, Obscure. Give us the gun sound. Give us the gun sound. हाँ ये वाला जो बोल रहे थे आप हाँ Pop that lever. Let's go. Oh, he's not for it. What a spoil sport. Alpha 7.
currently in 7th place. They did get pushed off that 5th place spot at the end of that last match by Yangon Galacticos and actually by S2G as well, who now sit ahead of them. But it is still very much all to play for. We were talking about the difference between the teams from the bottom towards the top. It's still, even for Hustle, very possible for them with a big chicken dinner to jump on खोले नहीं हो क्या आप? 30-point margin. नहीं खोला, यहाँ से बस इतना खोला। 22 points. तो वो डब्बा ये बाहर है कि अंदर है? प्रोडक्ट Whilst they haven't shown their capability to get that just yet, it is possible. It's within their wheelhouse. Absolutely, definitely. Zoom in करता हूँ थोड़ा. The scary thing I think for me when it comes to Group B and this whole lobby is just looking at how heavy the top हाँ रुको वहीं पे रखो. are, you know, and besides obviously we talked about Vitality. कितना पड़ा ये? You just look even further on down. You got Aura, EA, Nongshim, कितना? Red Force get a good game 15, 16 कुछ पड़ता है। we could be looking tomorrow at वो डिपेंड करता है, अगर रेयर होगा तो थोड़ा प्राइस ज्यादा करता है। अबे लेकिन ये कार्स एंड डॉल थोड़ा प्राइसी नहीं है फिर? Pretty nasty. नहीं। For a lot of these यही प्राइस है ऋषभ? look to try and close that sort of a distance. You mean but $20 again, it does each? rely on performance carrying over to tomorrow. So I mean, for me, Vitality, they've already done so much today. They've almost guaranteed themselves a spot in the top 5. Oh, it's done. It's pretty much done. Yeah. I want to see what they're going to be able to do tomorrow, right? Because a day like this, मेरे पास प्रॉपर सजा के रखने के लिए जगह नहीं है ना, gotta let इसलिए मैं डब्बे में cooler minds prevail. दूसरा You've got to listen to your है coaches, listen to Lamborghini. people around you. And don't get carried away. क्या होगा? Sure, अरे they're हाँ, एक almost crazy certainly दिख रहा going है. to the finals. Yeah. But for me, it's about how they're going to perform in the finals that I'm going to be watching for tomorrow. आपको और You're right because you know this सब is सब कार्स एंड डॉल से practice खरीदो. you can get on the हाँ, ये planet, देखो. you know, and the यहाँ good पे thing देखो. when it comes to when you have such a ridiculous performance like Team Vitality. वहाँ पे वो ब्लू कलर का दिख रहा है, नीचे लिखा है यहाँ It's पे. literally enough देखो, for them कार्स to एंड डॉल really इधर. show up tomorrow and still be देखो. top 5. Like it's क्या है? 100% they're in the finals, बस कर right? रहे हैं. So with that kind of performance, देखो that क्या देखो. 2926 ऐसा? 6 matches tomorrow. to नहीं, उसका नीचे देखो. 26. अच्छा उसके नीचे क्या है? कार्स एंड डॉल and that's especially important for a 2000 team like Team Vitality 2000 because रुपए, अच्छा, when it 1 came to ट्रिपल है ना. PMGO हाँ, season कुछ 1 अभी देखो. in their own कुछ home में turf, क्या बोलते they हैं उसको? did solid गाड़ी देखो. when it came गाड़ी to the group crazy stage, है. right? Group stage, they popped off. We thought that, oh man, come finals time, they're going to really do something. And then finals, it wasn't really what they wanted to do, especially when they're at Doors home, खुलता है right? But इसके? now they're in Paris. नहीं, नहीं. They have the most ridiculous वो इसका day, खुलता है. किसका बोलो out तो? of all these teams here. Hopefully we don't see the same thing happen. इनो 64 का खुलता है. 107 points was first place for Correct. 4th Rise over in 64 Group A. Vitality, they could do it here and now with a chicken dinner. Just saying. सस्ते में भी एक है मोबिलिटी करके कम ब्रांड है, उसमें सस्ते में आपको ये क्या बोलते हैं डोर्स. Well, it would be difficult. It would be difficult, right? अरे मैं वो लेगो लिया It would need a F1 का. 19 elimination chicken dinner. Well, not even that. No, देखो it ये would be a देखो 9 ये elimination इसका है. chicken dinner, wouldn't it? Yeah. ऑर्डर किया हूँ वो आएगा अभी 14 Yeah, I think तारीख it को. would be. So देखो इसका डोर Porsche है? for them. So if they Porsche win this है. match, it's very likely GT3 that GT3 they RS. surpass 4th Rise score. ये वाला चाहिए मेरे को, यही वाला चाहिए. ये कहाँ मिलेगा? But that is a big if for Vitality to get another. नहीं मिलेगा क्या वो कार्स एंड डॉल में? First casualty, I believe, of the match. देखना पड़ेगा. Dopeness अभी able देखो to मैं drop अभी a ना shot अगर over towards TT project. Lufa with the car, 98 too. Love to see some sniper action here. It's very rare these days with just how अरे मैं तो भूल overpowered गया. the M4 shotgun meta is right now. क्या भूल गया? But you know what? When it comes to military or when it comes to Miramar, right? We're going to possibly see some of that. Yeah, over on the north side, we're on board with Alpha 7, who have got in and amongst it with Horror. ये में थोड़ा गाइस फाइट कम हो रही है ना, सिर्फ एक ही फाइट देखो एक ही रुक डब्बा दिख रहा है. रुक डब्बा दिख रहा है. हाँ दिख रहा है. An S12K. What happened? Kind of. Yeah, I'm not entirely sure. They must have. I mean, they dropped out from the plane over towards the north side. Maybe they were just really slow on grabbing those vehicles and trying to get out west, which seemed to be their approach. इसमें बुरागों कुछ भी नहीं है. Stall. They stymied over in these crater fields locations. ये भी मोजरेटे का है. Looking super good. They do need to get on towards a hot zone and probably get a little bit more loot if we're honest. इसका डोर खुलता है. That's exactly where they would be heading, straight in that direction. But now look at that, look at the player cam there. You see that? That gyro, just capping away with that mini. बहुत नीचे है. Making some great shots downrange, trying to catch Alpha 7 off, but it looks like they are going to be able to get away. So now Aura are still here, and this is why it's so important to have such a strong start in tournaments like this. It just gives you so much more freedom to kind of have your way with the lobby you do. Maybe not even the best play, you know, but just हम लोग जोन सेंटर है वे, लेट्स गो. ये देखो ये तो देख लिए. ये कौन सा है?
Next zone about to pop. Let's see where it decides to go. क्या बात है? Yoink all the way down. ये कौन सा है? Nongshim Red Force. ये देखो डेटोना का है। अच्छा हाँ। ये देखो पीछे टायर रखा है इसका देखो। Let's go बे Godlike Zone Center. Chicken are really. That is how you do it. Porsche. I mean, that is actually a really big shift for Vitality. They are going to be kept safe from a lot of the teams descending from that north side. The bit that you have to worry about a little bit is sweeps from the west, right? So for instance, Alpha 7, Yangon Galacticos, maybe even अच्छा हाँ ये वाला मेरे पास वो Forza में है ये वाला JDM है ना? to try and buffer any pushes coming from that east side. They might just want to get a little bit more central with it, but yeah, I think for Vitality this is great news. They guarantee themselves probably at least a 4-point game here. I think ये बहुत रेयर है। इसका जो कार्ड आर्ट है बहुत क्रेजी बनाते हैं लोग। We needed to get to 100, break that century in a single day, which would be monumental. A real record breaker of a day. Back to the future. For the arena kicking. मैं इसका 3D मॉडल बनाया था माया में। Saying 3D मॉडल बनाया था। We're going for more. Yeah, let's make some moves here. What a crazy. Vitality 88 points में है। एक दिन में 100 points कर पाएगी? क्या लगता है? The man, the myth, the legend, all by himself. He's got the DBS. He's got the stairs. Oh, he has to jump out. He hits the headshot. क्या मार रहा है? Hello. Gets popped in the back on his way out. But hey, he said, "I'm not going down without taking someone with me." ये कौन सी है? That looked real pretty. You know, he saw that nade come in and he was like, well, guess I gotta do it to him. Yep. Hops straight out, immediately puts him in the grave. The flush comes through. Nongshim Red Force, yeah, I kind of like this decision to disengage. You don't need to commit. They have the buildings. They have that defense. You've already lost your player. There's nothing for you there anymore. Hey, just a quick little handshake. Just said, all right, hey, you know what? 1 for 1. 1 for 1. Good job. See you later. Right, he's got the MG3. Look at that. Excellent. He'll take that. Don't want to risk it. No, इसके boxes कहाँ हैं? That's for sure. उसके वो मैं कार्ड आर्ट अलग से रखा हूँ। वो प्रॉपर ही निकाला हूँ मैं उसको कैसे ETSH getting a run over. Players getting taken out on rotation. And I wonder if Team Vitality are अभी ये देखो ये टोमी काटी है जापानीज ब्रांड है इंडिया में भी मिलता है ये देखो बोल सकते हो दिस इज माय फर्स्ट टोमी का That is a huge thank you on this. Actually, I used to say thank you in Indonesian. What is it? Right? That's it. Yeah. We were learning it whilst we were over there before. That's what they want to be saying. ये भी टोमी का है. And right now on the southeast side, they've got a really good spot on the west border of Los Leones to potentially hold this one out. I'm slightly worried about some of the buildings further out to their east. They might be vulnerable to that. But coming through fairly soon. The north side definitely more chaotic. अरे नाइस रे अभी भी Godlike center of the zone and then it takes it back. ये देखो Yeah, so you know what? ये Okay, we'll get a Jaguar little type close C. to you, but you're gonna still work for this one here if you want to etch your name into PUBG Mobile history even further. But you know, the one thing that happens when you have such a crazy performance like this, it really kind of puts a lot of expectations on your shoulder, right? So we hopefully will see Team Vitality keep the same energy, right? Not just going into tomorrow, but also going into the finals here. But who else is going to make it in the finals? That is the question. Wolves are saying, you know what? We don't want to get eliminated right here. They've pushed themselves up from the bottom to at least 11th place. That is a much more comfortable position to be in. They would love to rocket launch themselves at least into that top 5. And it is possible. I mean, top 5 from all the way down to 11th place, that's only, what, 9-point difference? That's pretty wild. So these leaderboards can definitely shake up here on that bottom mid-pack area. But ये क्या बोलते हैं ये प्रीमियम वाला है Hot Wheels का इसमें रबर टायर He's hit the shimmies. He's dodging these shots. He's moving back. भाई ये क्या डॉज किया है हेलो अरे भाई उल्टा स्काई नॉक हो गया ले और ये देखो भाई ये एक रेस टीम है ये रेस टीम था HSW करके भव्य सैबल जी एक सेकंड भव्य सैबल जी आपका मेरे चैनल पे स्वागत है और चैनल पे आप नए हैं तो स्ट्रीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू फॉर जॉइनिंग हेलो भाई हेलो भाई क्या हाल है कैसे हो
बोलो close to S2G. Carrillo ends up getting popped out the vehicle by Hemsg. Was out. ब्लैक वाला जो है ये एक और वाइट हाँ वाइट कलर का आता है Rebel eliminated. It's just obscure. Last one up for A7, and we're gonna see them in the finals. भाई Godlike बस इस मैच में चिकन निकाल दे ब्रो। Something happened to Alpha 7 on this drop. एंट्री हो जाएगा टॉप 5 का टॉप 4 हो जाएगा। Stuck in with horror. They didn't see that much loot on board. They've been out in the blue for ages. Now they've slammed into S2G. और भव्य भाई क्या सीन क्या हाल कहाँ थे वो भाई? Yeah, obscure. Trying to have to skirt through the alleyways around the Banana Wolves. बताओ यार भव्य कैसे हो? I don't think he's gonna make it. The NA squad will be फिर से वही चीजें दोहरा रहे हैं। death blow towards Alpha 7. The Wolves have problems ये of their वो own. लोग कंपोजर ही नहीं रख पाते लास्ट के कुछ On the मैचेस में। Chubasera foothills now. Over towards the rest of the circle. Things are a little bit more disparate now, a little bit more settled. Slightly worried in the south edge. I think Dopeness and Vitality is the engagement that's the closest. I'm back रुक भाई हो गया खेलना क्या बात है यार क्रेजी नाइस नाइस अभी भी सेंटर में भाई गॉडलाइक पे ही जोन है ये पूरा जोन बोल रहा है कि ले लो चिकन गॉडलाइक अगर इसमें चिकन नहीं आया ना गॉडलाइक का Time to relax, okay? Good old central zones इसमें अगर चिकन here. नहीं आया तो भाई Finally starting to play as predicted. Noxium Red Force are dead center of this one. They're looking to have a किंग good भाई game. Young Galacticos are going to be holding मुझे that south side एक काम arena. करना Craziest मुझे first लस्सी match देना ever, and then really letting लस्सी नहीं off तो the गिटार gas देना here towards the end. बेटूल से हूँ एमपी अच्छा एमपी बेटूल क्या बात है यार भव्य भाई देख लो एक और ये है माल्टा मियाटा पर ओपन out of the game with a nice little headshot from Lufa. Good shot. Needs to. भव्य भाई और बताओ बीजीएमआई पबजी देखते हो आप? आई एम रेडी फॉर वर्ल्ड ऑफ टाइम्स ओके ओके लस्सी क्यों मॉन्स्टर एनर्जी पियो मतलब आप चाहते हो गॉडलाइक चिकन ना निकाले ये कौन सा है क्लोजली दिखाओ मेरे को ये मिनी जीटी वाली चाहिए बे ठीक है लेंगे अपन लेंगे थोड़ा भी पैसे नहीं है ले एक किंग तो खुद ही गिर के नॉक फिनिश हो गया एडमिनो किल ले लिया लेट्स गो क्या बात है क्या बात है देखो देखो रिप्लाई मिस कर दोगे वरना Oh, you're going to see shots ringing all over the place. The Wolves are starting to get beat up. That's QZZ getting knocked by Tian, but there's fights happening everywhere. Eagle's going to go ahead and try to pick him up. Looks like he should be able to get that res. हाँ प्रो प्लेयर हूँ भाई प्रो प्लेयर हो मतलब प्रो प्लेयर मतलब आप T1 खेलते हो कौन से लाइनअप में हो मेरे भाई फिर Now in 12th place. क्या बात है यार भव्य भाई बहुत सही है भाई ये जो देख रहे हो ये जो मिनी जीटी देख रहे हो ये मिनी जीटी का पहला गाड़ी है जिसमें अंदर फिगर है इससे पहले ब्रो इज इन एपीजी किंग भाई ऐसे नहीं बोलते भाई ये नंबर से कुछ याद आ रहा है हाँ नंबर दिख रहा है नंबर नहीं दिख रहा है अच्छा 11 इसका नंबर देखो अंदर एक ड्राइवर दिख रहा है हाँ सेना सेना 7th place 27 सेना यस वो अंदर अगर डिटेल अगर आप सामने देखोगे ना वो अंदर हेलमेट पहना है हेलमेट में वो ब्राजील का जो हेलमेट है वो पूरा दिख रहा है येलो दिख रहा है really relying on that first game here. That was 39 मैं ज़ूम इन करके देख रहा हूँ थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा है for the others not being able to replicate even close to that kind of success. थैंक्स भव्य भाई बताओ यार कौन सी टीम में हम भी तो जाने कौन सी टीम में खेलते हो आप हमारे चैट में आए हो बोलो इसका सबसे डिटेल देख रहे हो यहाँ पे देखो सामने एक ये आगे बैच दिख रहा है मर्सिडीज का बैच दिख रहा है ये देखो साइड से देखो बहुत पतला दिखाई दे रहा है आपसे ज्यादा तो मेरे सब्सक्राइबर्स है क्या बात है भव्य भाई क्रेजी यार क्रेजी बताओ फिर भी आप मेरे चैट में आके बैठे हो इतना ऑनर्ड हूँ ग्रेटफुल हूँ कि मेरे से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाला भी मेरे चैट में आके मेरा स्ट्रीम देख रहा है क्रेजी है स्ट्रीमर बनना है तो ऐसा स्ट्रीमर बनो वरना तो जिंदा तो नॉर्मल स्ट्रीमर ही है ना किंग भाई सही बोल रहा हूँ कि नहीं
it's the teams from Shumasara that I'm worried about. It's S2G, मेरे से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है आपके, बताओ कहाँ मेरे को आने चाहिए आपके स्ट्रीम पे? मेरे को तो पता भी नहीं है आपका यूट्यूब चैनल है और आप बट मेरे चैनल पे हो। क्रेजी सपोर्ट, थैंक यू यार। अपनी टीम नीचे जा रही थी बट अभी ऊपर आ रही है, 7th में आ गए। अभी ऐसे कैसे करते हैं 6th में भी आ जाएंगे, अपने पे पूरा जोन है। आशु भाई cheeky little shots through the window, looking for the tiniest little pixel to shoot at. QZZ from अपना बंदा डैमेज कहाँ से खा रहा है? Share this real estate right now. They're dead center of the zone. They're saying, "Hey, Godlike, y'all are good. Look over there. We'll look over here, okay? And then once we get to the end game, we'll battle it out." Absolutely happy to play in the We're shadow. full squad, by the way. Yeah. Happy to play in the shadow of the bigger tree that is Godlike right now. That's right. They are cooling off in the shade for the time 3 being. मिलियन है भाई, क्या बात है। 3 मिलियन का क्रिएटर मेरी चैट में है, बताओ। क्रेजी। एंड 3 मिलियन के क्रिएटर को बताना पड़ रहा है कि मेरे 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। क्रेजी। ये देखो रिक भाई, मेरे पास और 2 छोटे-छोटे चीजें हैं, 3 छोटे-छोटे चीजें हैं। मेन वाला लास्ट में दिखा मुझे। ये दिख रहा है। गॉडलाइक क्वालीफाई कर लेगा अगर कल थोड़ा ट्राई हार्ड कर ले तो। ये ट्राई हार्ड मतलब अच्छा वाला ट्राई हार्ड करना पड़ेगा। मेन पता है उनका पोजीशन पॉइंट्स नहीं निकल रहे। ओजी का एक चीज अच्छा था, उनका पोजीशनिंग बहुत अच्छा था और पोजीशन पॉइंट्स के लिए वो लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे। किल्स तो एट द एंड निकाल ही लेंगे ना 3-4, बट इनके पोजीशन ही 3 पॉइंट्स है टोटल, बताओ। नहीं दिख रहा है, छोटा हो गया आपका कैम। न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, क्या बात है, पढ़ो। एक अभी ये इधर है। आप कौन हो? हिंदू मुस्लिम? मैं इंसान हूँ। ये देखो रिक भाई, गोकू, ये कौन सा है ये? I like this from S2G. They've read this fight is going to get a little bit stuck. रुको, They're moving ahead of it instead of trying to get stuck straight. अभी देखो रिक भाई, सबसे मेन हीरोइन बोल सकता हूँ मैं। Great oversight onto any position that they would third party from. ये कौन है पता नहीं। Going for the third party of the Yangon TT fight. They are going to go instead and put pressure. मैं देखता नहीं हूँ ना, पता नहीं। रॉबिन है क्या ये? They are stepping over these hills. अच्छा मजाक कर लेता हूँ मैं भव्य भाई। बढ़िया बढ़िया, एक दिन कपिल शर्मा शो में जाओगे। with 3 players up. Gonna try to find any space here. They're gonna be driving. आप स्ट्रीम स्टार्ट करो हिमांशु भाई। सेटअप देखोगे रिक भाई? सेटअप देखोगे अभी? ये 15 मिनट नहीं, अभी 15 मिनट में ही होगा, फिर देखता हूँ। अभी बहुत इंटेंस मैच चल रहा है, ठीक है? फिर देखता हूँ। एक बार देख लो, एक बार देखो। जल्दी दिखाओ, फिर जल्दी दिखाओ। अपने गॉड लेक के मैं फाइट होने से पहले जल्दी दिखाओ, वरना फिर मैं देख नहीं पाऊंगा। नहीं मत देखो, ठीक है? आप स्ट्रीम स्टार्ट करो, क्योंकि मैं ये मैच अभी 10 मिनट में खत्म होगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा हीट खेलना। मैं हूँ डीसी पे हूँ। क्या लगता है चैट? प्रेडिक्शंस बोलो भव्य भाई, आशु भाई। प्रेडिक्शंस कौन जीतेगा इस मैच? हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हम इंडियन हैं। Catching TG Project, Young on Galacticos getting peppered. Zarek getting shot in his back. Fights going in all over the place here. Nongshim Red Force looking to clean this up. 3 players now alive as Hyunbin does go down for Nongshim Red Force. TT Project full. They were able to do a lot of work. भाई ये Young on Galacticos भी एक बची है, ठीक है? चलो अपने लिए इजी है। अगर गॉडलाइक इसमें अगर अच्छा खेल लेती है तो we will be in the top 5 भाई। To try and solidify themselves towards that top 5. Let's go, मान्य ने नॉक निकाला, let's go. Push out beneath them. If they go down, S2G have a door. Come on. Yeah, let's see right now. XZ1. अरे स्माइल भाई इधर देखो, हंसते कट गए रास्ते। So Nongshim Red Force, Vitality. गॉडल कर लेना यार, फिंगर्स क्रॉस्ड, यस फिंगर्स क्रॉस्ड बे। वो लोग अच्छा, वो लोग अपना कंपाउंड छोड़ दिए। Especially like S2G
to make something happen. And they got some good sight lines here. कभी कभी PUBG का मैच देखता हूँ, नहीं तो मैं क्रिकेट ज्यादा देखता हूँ, जैसे IPL हो गया, T20 देख रहा हूँ। अच्छा, कौन सा T20 किसको सपोर्ट कर रहे हैं भाई अगर S पावर यहाँ से एक नॉक निकाला, अच्छा चलो 31 नॉक वहाँ से The question is how many points are Godlike going to get for this hold, because if Nongshim just take them all, that's a little bit of a drought. Yeah, let's see. We're taking a look there at Godlike. भाई ये नॉक होना था दे. They're going to have to fight out ETSH first though. S Power's got that nade. He's cooking it. Actually no, he's just holding on to it. Waiting to see the approach from ETSH. अगर वो रिबाउंड खाके आता ना, नॉक एक तो नॉक हो ही जाता है, इनके मुंह के सामने ही है भाई, क्रॉस भी नहीं कर सकते, ऊपर से पड़ेगी इनको। गॉडलाइक पुश मत करो, इजी है। हाँ ना, इजी है भाई, बस इनको साइड वालों को मारना है। I think it might just be a straight up back-to-back fight, but मेरे को आप पगला लग रहे हो। अरे come on, अरे नहीं रे, फटा, let's go, आराम से सौम्य, आराम से क्या सौम्य भाई, एडमिनो लेट्स गो भाई। लेकिन अपन दो नॉक कहाँ से खा गए भाई? एक नॉक दिखा, दूसरा कहाँ से खाया भाई? ऊपर से मारा क्या भाई? 1 सेकंड के लिए गोटे मुंह में थे भाई, मेरे को लगा गया गॉडलाइक। चलो अभी इजी है भाई अपना, इजी हम लोग टॉप 5 एंट्री कर सकते। दोनों ऊपर वाले अपन मर चुके हैं, देखो S2G और YG दोनों गए, बस हम लोग को 4 पॉइंट चाहिए, 5 पॉइंट्स वी नीड, दैट्स ऑल इट टेक्स टू बी इन द टॉप 5 गाइस, कम ऑन लेट्स गो। लेट्स गो स्टिंग भाई, एकदम स्टिंग पी के जोशीले हो जाएंगे। पिलाओ रे स्टिंग, पिलाओ सबको। अगर गॉडलाइक ये चिकन निकाल लेती है ना, अगर गॉडलाइक ये चिकन निकाल लेती है, इधर कमरे में 4 लोग हैं, 4 लोगों को स्टिंग पिलाऊंगा। किंग भाई स्टिंग पिलाऊंगा अगर मिलती है। really tricky now to make ground in this one. The reason Dopeness can't push up the roadside there out to their west is because of Nongshim Red Force and 7. भाई मेरा तो फेवरेट है एक अभिषेक शर्मा और एक वैभव सूर्यवंशी। अरे ले, रीजी जो पिछले मैच में स्नाइप कर रहा था, इस बार खुद स्नाइप हो गया, स्नाइप का शिकार। सूर्यवंशी इंडिया टीम का फैन हो, मेरे फेवरेट प्लेयर रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, MS धोनी। क्या बात है जॉर्ज, गुड चॉइस है, वेरी गुड। नीचे तक आने में प्रेशर बनेगा। ओए मार अरे He's getting the thirst. Nongshim Red Force doing a great job of stiff arming this team. Absolutely beautiful stuff. Tizzy does go down, but he does enough damage to make it difficult. 10 पॉइंट निकाल ली यार उसने। Nongshim Red Force are going to go low. This is the scenario that I was thinking about for Dopeness. They can start to move west because that fight has gone a little bit mucky. ओपन में सांप बना है, बताओ। Let's go, and Nongshim Red Force finally eliminate that threat behind them. They have their back against the wall now. Now it's time to look forward. Nongshim को टक्कर देना तभी मुश्किल है, but yeah, we can be in the 5th, we can take that 5th position. We just need 5 points. Position का 2 पॉइंट मिल गए, we just need 3 points more. 3 points. अरे हाँ 3 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट चाहिए और 2 पॉइंट चाहिए गॉडलाइक को। 3 पॉइंट पोजीशन के तो कंफर्म है। 2 पॉइंट 2 किल्स या 2 कुछ तो चाहिए। 13 eliminations for Nongshim Red Force. They're looking to play with the big dogs here, but Admino is in a very good position, but Admino को it doesn't matter if you got an MG3 logo. नॉक नहीं होना। और ये तीनों के तीनों Admino के घर जा रहे हैं। अब आईडीए पे अगर रश किया ना, आईडीए के 2 बंदों को मारे ना, that's very good.
alone. Let's take a look though. Come on, guys, you guys can do it. You can see. इसको पोजी पता है, मानने को पोजी पता है. अरे पावर. Guys, please इसको लॉक मत करना, 2v2 है. अभी एडमिन उधर देख भी नहीं रहा है. On that angle, the backstop's there, a little bit of damage, and S power now is very low. Admino can't step forwards. There's off angles to be dealt with. In the meantime, Hustler crew have gone down on that north side. The res, I think it's going to stick here. रायता का नेड खत्म है. रायता का नेड खत्म है. To try and take down this duo from Ida, this is the step that they need to take now. S power with another nade, but the shotguns are lying in wait, and it is vicious. It is brutal. अरे लेट गो नहीं. अरे पीछे से वाइटैलिटी आ गई रे. But Darkin still giving it a good go. Over the top they roll, and Vitality may do the unthinkable. Vitality pushing Godlike at the perfect time. ठीक है, चलेगा. We are in the top 5. Let's go. It's Vitality versus Dog Ship. भाई वाइटैलिटी का कंसिस्टेंसी देखो, खत्म है. वाइटैलिटी 100 पॉइंट्स, 6 मैचेस 105 पॉइंट्स, मतलब कहाँ 40. 2 दिन में 105 111 पॉइंट निकाल रही है. ये एक दिन में 6 मैचेस में कर दी है. कोई रोको रे बाबा इनको. वाइटैलिटी 105 थे भाई. 6 मैचेस में 110 पॉइंट. हम लोग टॉप 5 आ गए. हम लोग के जस्ट नीचे अभी अल्फा 7 और यंगन है. 30 है. हम लोग के 37 है. Matches. Nobody is going to हाँ, top that. 112 है इसके. दूसरे वाली का 70 है. At the start of the day from Arena, we were thinking, how's anybody going to top that? अरे वाह, आसपास कोई नहीं है. 88 में शुरू किए थे, 108. वाइटैलिटी वर्सेस 40 देखने मजा आएगा बेंच. भाई nothing but just kick back and relax, baby, because you made it happen. Number 1. But man, the expectations are now through the roof. Crazy, yaar, crazy. Right? You gotta have a good day tomorrow, and you know what? As a matter of fact, forget tomorrow, dude. Right? वाइटैलिटी 3 मैचेस में ब्रो, तुम सोचो भी 110 पॉइंट्स. Even if Team Vitality doesn't go crazy tomorrow, I want tomorrow to be their day of, you know what is it that we need to fix for the finals, right? Absolutely. Is it any little tiny little mistake that we can adjust, even if they do something so wild just to work on that? क्या डोमिनेशन है बे. Finals time, they pop off. Absolutely. I mean, I was really impressed towards the end as well with Godlike, able to jump up just about into that 5th place position at the end of that last match, holding their compound. Really, really heavy stuff coming through. अबे लेकिन ये सच बताऊं तो पता है, अगर Godlike थोड़ा अग्रेसिव खेलती ना और पॉइंट स्किल पॉइंट्स निकालती अपने, वो आईडीए को अगर पहले ही जब आईडीए आई थी ये उनको तभी अगर वो लोग मार गिराते ना, वो 8ish के साथ फाइट भी वो लोग बहुत लेट तक वो लोग वो किए, डिले किए, क्योंकि उनके पास सेंटर पर गिर रहा था. अभी ये आराम से पता निकाल सकते थे ये लोग चिकन, बट कोई ना, कॉन्फिडेंस नहीं है भाई. मेरे को पूरा लग रहा था कि Godlike चिकन निकालेंगे. वाइटैलिटी के आसपास अबे आ भी नहीं सकती बे. तुम सोचो बे, कल अगर हाँ ये लोग किसी का अगर गेम खराब करना हुआ तो फिर दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो. अभी के लिए तो है, बट बहुत वही 50 होगा, क्योंकि फोर्थ वाला भी 60 पॉइंट में और ये 35 में है. मतलब 37-38. Imagine getting an 18-point average. 5th पॉइंट का ही है. अगर कल Godlike ऐसे खेली तो उनको 5th वाला के लिए फाइट करना पड़ेगा. थर्ड में ये लोग भी हर मैच में टॉप 3 लिटरली भाई हो रहा है. क्या कंसिस्टेंसी है.
over 6 matches to be able to put up that sort of a performance. Imagine, on average, you're getting 80. That's an 8 elim chicken dinner on average. Every game. Every single time you लड़की get है? on that plane, you walk away with that. लड़की है क्या? I hope you, everybody watching, पता नहीं। understand what they just witnessed here today. This is a performance अभी के लिए in one day that we may never see again. But you know what? One team that we're going to see some more of is Alpha 7. Let's go ahead and take it on over to the stage. Guys, I've got Revo here from Alpha 7 Esports. S2G और इसमें 1 पॉइंट का अंतर है 5th और 6th में 6th और 7th में S2G और Yang1 Galacticos. We know that the expectations for yourself is a lot 5th और higher. 10th में देखना पड़ेगा. I guess सिर्फ 7 या 8 points and you know what were the things that were you kind of struggled with? I think like we had bad executions, so we need to fix that, and we're gonna fix that for tomorrow. And let's see what gonna happen. We are doing our best. We're still confident. 16 का survival 2 दिन का होगा. Top 6 जाएगी वहाँ से. Yeah, that's fair. Just so that you know as well, Rocco is on standby. We're going to try and this interview in English, but you know Rocco's just there just in case we need him. So more specifically in that Miramar game, that final one, you were forced kind of northwest of Picado. You had to do a big wrap through the blue zone, and then as you came back into zone, you encountered S2G. Was that just kind of bad timing, bad execution? Like from your perspective, what happened? I think like we need to join in the zone. We need to join the zone. We need to try. So we like said, let's gonna crash and let's try to fight. We saw them, but it happens. We made a better execution again. So that was the problem, and yeah, it happens. It's just bad execution, and sometimes, honestly, for those of you watching at home, the level is so high, it's also just bad luck sometimes, and it depends on where the zone pulls, right? Finally, before I let you go, I just want to talk a little bit about you joining the desk earlier this week. You had a chat with Seven and the rest of the gang. You said that there's been quite a few strategies you guys are changing, some internal things you're changing as well, because this year hasn't exactly been the best year. Have you been implementing some of those things, and what's working, what's not working? Yeah, we are trying. We did like many changes, but we are like still studying which one gonna work, which one not gonna work. We see that today, and we're gonna fix that for tomorrow and do better. That's good. I mean, if there's any day to have not the best day, Try by drag. it's अच्छा today. drag कर रहा हूँ. I really appreciate it. Best of luck to Alpha 7 Esports. Yes, guys, I'm back. We've got one more day of group stages to go. I am back. Don't go anywhere because we're staying right here on the stage, and we're heading over to Kalaris with another interview. बताओ क्या करना है? 4 खेला हूँ अभी, मुझे निकलना है फिर पे. ठीक है कोई दिक्कत नहीं. आप मेरे को वो करो, स्क्रीन शेयर करो. हाँ रुको भाई नोंगशिम का ह्यून बिन, ये पहले साला DRX में था, तब भी गाफ फाड़ता था. इधर तो आके एकदम फाड़ ही रहा है. हाँ दिखाओ. इस पे ही तो करना है. जाओ हाँ उधर जाओ. फिर नीचे लेफ्ट साइड में लीडर बोर्ड रजिस्ट्रेशन. जाओ. हाँ इधर वो कॉपी करो फॉर्मेट. तो कॉपीड है तो आपका तो देखो. अरे टैग करो हुआ है, पर ये 3 इसने अलग अलग भेजा है ना, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया. टैग करो. ये हाँ 3 अलग अलग ही भेजने हैं, मतलब अलग अलग स्क्रीनशॉट्स. क्या कर रहे हो? अच्छा वो आईडी नहीं याद है आपको? इधर से देखा नहीं जाता. अबे ऊपर तो है ना, ऊपर तो आपने भेजा था ना कल. दिमाग तो एकदम चड्डी में डाल के बैठते हैं बहनचोद. अब खोल लिए हो तो देख ही लो, अभी ऊपर स्क्रॉल मत करो. सच्ची में बे, चड्डी में डाल के बैठते हो बे तुम लोग दिमाग. अबे वो भी एक टैलेंट है. टैलेंट नहीं लंड है बहनचोद. हिमांशु भाई कंट्रोल रहता है. नहीं उधर नहीं. अच्छा अबे इधर नहीं. रुको. प्लस दबाओ, एस्केप दबाओ, प्लस पे दबाओ. हाँ क्या खेल रहे हो कि नहीं? आओ. हो गया आपका? हाँ. अरे मैं आपको पूछा, अरे वो लाइटिंग और कैमरा सही है? सही है. अच्छा दिख रहा है. अब प्लस दबाओ और अपलोड करो.
क्या एक एक करके? हाँ एक एक करके। एंटर। सब ठीक है ना? हाँ सेम, उनको कॉपी करो, पेस्ट, टैग ऊपर आया, फिर से प्लस, एंटर। हाँ आ जाओ, हीट आ जाओ हिमांशु भाई। 7 मिनट लगे यार, 7 मिनट। 7 मिनट, जल्दी करो। हो गया। अब साहिब भाई बैटल रिजल्ट्स पे जाओ अभी नीचे। बैटल रिजल्ट्स। हाँ वहाँ पे अपलोड करो अभी। यहाँ पे एक पूरा, अरे राइट साइड वो करो ना, ड्रैग करो ना राइट साइड से स्क्रोलर को, इतना स्क्रोल। एकदम साला लंचर्ड लोग एकदम। एक ही सेम चीज लिखना है क्या? हाँ सेम सेम। टैग करो, प्लस दबाओ। हाँ एंटर, बस। भाई 4 खेला हूँ, उसमें से 2 डिफीट। ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। ये डाल रहा है, ये डाल रहा है। आपके गाफ में डाल रहा है। ये डाल रहा है, ये डाल रहा है, ये डाल रहा कर रहे। हाँ कहाँ थे स्टिंग भाई? मेरा है जस्ट र्यूक, R और K कैपिटल, और फिर हैशटैग 84,000। रुको मैं ऑन करूंगा तभी आएगा, रुको। चलता हूँ भाई। ओके। मेरा नाम जरा उधर ऐड फ्रेंड करना ना। कहाँ ऐड फ्रेंड? मतलब आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो मेरे आईडी पे। अरे इधर फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं होता है, डिस्कॉर्ड कनेक्ट करना होता है। अच्छा फिर कर लूंगा। ओके बाय बाय बाय। गेम ऑन कर रहे हो ना स्टिंग भाई? ठीक है आ रहा हूँ मैं भी, ऑन हो रहा है मेरा भी। डिंग डिंग डोंग बोले ओ तेरे इश्क की दीवानगी। डिंग डोंग बोले। आपका बताओ वो आईडी। एक सेकंड गेम खोल लेते हैं। ओए हिमांशु, 7 मिनट से 3 मिनट हो गए लाला। तो होने तो 4 मिनट में नहीं आया, एकदम खूना खून हो जाएगा। गेम ऑन ही है तो आता क्यों नहीं रे? आ रहा हो रे, रुक जा, है ना 3 मिनट है। तेरे भाई ने रकेटा ले लिया है, रकेटा। डाल लो उसको गाने में। देखो कैसी अपशगुन बातें करता है। अपशगुन, अपशब्द। इसकी गाफ मारने पड़ेगी गाइस। भाई मैं फजर ले रहा हूँ पे चैट। मैं फजर ले रहा हूँ, फजर क्या बोलते हो? गो टू स्टोर, कौन सा ये मॉडर है क्या? अच्छा बैटल पास नहीं हो गया हीट। ओ तेरी इतने अच्छे ग्राफिक्स है। हाँ बहुत अच्छा है, ग्राफिक्स बहुत क्रेजी है, देखो ना क्लीन ग्राफिक्स। हाँ रिक्वेस्ट भेज दिया। हाँ ज्वाइन आ गए। अभी मेरे को हिमांशु भाई हम लोग स्टार्ट करें कि आपके लिए रुके? इनवाइट करो आ गया। आपका वो बोलो एक बार, मेरे को लीडर बनाओ आप सिंह भाई। हाँ
K07 एरे लंचट भेजा। लंचट आया, जल्दी आ रहा लंचट। ये लंचट आ गया, रेडी भी कर दिया, स्टार्ट करे लंचट। कौन सा एजेंट लूं, रीपर लूं या फजर लूं? मेरा ले लो। खोल खोल आज बेटी खोल। आजा 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 आजा। कौन सा रीपर या अरे इधर सिलेक्ट कहाँ से कर, जो आपकी मर्जी। रीपर अच्छा लग रहा है। गो टू स्टोर परचेज। कहाँ से? लेट्स गो चैट। कौन सा ले? रकेटा ले लिया। रकेटा और रीपर दोनों। रकेटा और रीपर ठीक। चलो सेव 8 7 सेव। ठीक है क्लोज। हाँ अभी ये लेंगे बैक प्ले। स्क्रीनशॉट्स लेना मत भूलना गाइस, ठीक है? मैं अभी याद दिला दूंगा फिर भी। हाँ I'm ready. Capture and defend basics. 5v5 1 minute 2000 ये क्या दिख रही रे बाप ये टैंक। ओ माय गॉड। Listen up. Multiple bases, one active at a time. Capture, hold, then move to the next waypoint. Bombers, clean up behind you. Keep moving, keep controlling, and this is ours. Attention, first base activated. काफी देर है। निकल ही नहीं रहा है। कौन है रे मेरे सामने खड़ा था? ये क्या था भाई? मेरे गाफ से आग क्यों निकली? यूट्यूब का टैंक मस्त है लेकिन। यस हिमांशु माइक ऑफ है। साउंड की माँ का भरोसा रुकना। I don't scare that easy. अंदर टैंक है मेरा में। आग का दिक्कत है भाई। क्या मार रहे चुप चुप के यार? यहाँ भी कैंपिंग। मेरा अराउंड कर रहा हूँ। All units, next
Just keep coming back. 720 कैसे हो गया उनका? जल्दी आओ भी आओ मैं हाई ग्राउंड पे हूँ, आ जाओ। अरे लंचट कौन है भाई, ये मेरे को ढकेल दिया। अरे क्या चूतिया भाई, अपने टीम में मेरे को ढकेल दिया, जानते हो? मुझे क्यों लग रहा है अपना बंदा ही अपना मेरे को ढकेला है। कौन अपना बंदा? किंग भाई? नहीं मैं तो अभी आया स्पॉन होके। नहीं आपका ऐसा देखने वाला गाड़ी ही खोल के चला गया मेरे को। मारो किंग भाई मारो, मार इसकी माँ का भरोसा। मारो इसकी। Nah, I don't scare that easy. अबे कैसे नहीं मरा यार? ड्यूक भाई आपका वो एक्टिव हो गया, स्ट्राइक एयर स्ट्राइक एक्टिव हो गया। एयर स्ट्राइक Next objective located. Defeat is the greatest teacher. उनका 200 भाई, अपना 180 कहाँ? स्क्रीनशॉट ले लो हमारी का। ले लिए। तो पुराने वाले हटाने दो मेरे को पहले। पुराने वाले हटा दो और स्क्रीनशॉट्स ले लो। कितने अभी पैसे हैं आपके पास हिमांशु भाई? ये 47। ठीक है, उसको 200 के तक खींचना हो जाएगा। हो गए सबके रेडी? एसएस ले लिए ना स्टिंग भाई? यस। आपका माइक? हाँ ले लिया। ओके। I can't be tamed. चलो आ गए।
आरपीजी मार रहे भाई। मेरे को बस 2 शॉट ने गिरा दिया। अगर कंट्रोलर में खेल रहा है ये। कौन फजर उनका। WJ अबे तुम लोग कहाँ हो बे? कहाँ पे हो? कहाँ पे? ठीक है, आपके पीछे ही था मैं। भाई फजर 2 गोली 3 गोली में उड़ा दे रहा हूँ। कहीं भी सामने मार रहा है। साथ आओ। गोल कहाँ? कौन हो रहा? आजा। दिख है मेरे को। साथ चलना। मेरे को लग रहा है ये ले लूंगा मैं, बैटल पास लेना पड़ेगा। मारो भी उसको। मैं एक शॉट मारा, आपने मिस किया। सामने से आ रहा है, देखो इधर। मिस का। अरे पकड़ो हिमांशु पे पकड़ो। मेरे को दबा दिया। नाइस। मिस नहीं किया रुक भाई, लगा उसका ये डिस्ट्रॉय किया मैं, स्क्रीन डिस्ट्रॉय किया मैं। अरे क्या चीज है भाई, रोक दिया मेरे को पूरा। एक रुका रहा है, एक मार रहा है। तृप्ति भाई अकेला खेल रहा? तृप्ति भाई नहीं, हिमांशु भाई के साथ खेल रहा हूँ, हिमांशु स्टिंग भाई के साथ। तुम आएगा क्या तृप्ति भाई? बताओ। वेलकम। लो
भाई 5 लोगों ने घुस के मारा यार। 5 है कितना 4। नहीं पीछे 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 रुको पीछे। धुआं बना दिया भाई। एपोकैलिप्स हो गया ये तो। अबे कैसे मरा मैं? अल्टीमेट है उसका। मैं तो था भी नहीं उसका रेंज में। गाड़ी भी नहीं चल रहा है भाई। हाँ उसमें वो आपका गाड़ी हो जाएगा, रुक जाएगा। स्क्रीनशॉट। भाई मौका ही नहीं मिल रहा भाई। बहन सोद ले लिए। रेडी करो भाई। लास्ट वाला में कुछ पैसा ही नहीं मिला भाई। ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, खराब खेले। क्या कर रहे हो भाई? मारो यार। तुम लोग को क्यों खिला रहा हूँ? मेरे को मारने के लिए? नहीं था। मुझे अगर मारना पड़ेगा तो मैं तुम्हें क्यों खिलाऊं? आप फिरो फ्लेयर हो ना? फिरो फ्लेयर। फिरो तेरी है इसकी टैग। Guess I'm up. Collect enemy tokens to score. ये वाला में हम लोग हर बार जीते हैं। रुक भाई तो नोटिस किया हो। करना क्या इसमें? लगा दी पनाती। अरे करना क्या इसमें? मारना है और मार के उसे टोकन मिलेगा, वो कलेक्ट करना है। टोकन बोलता है? डॉग टैग। अबे टोकन ही बोले हैं गेम में गांडू। हाँ पर है तो असल में डॉग टैग। नहीं टोकन बोल। मारो सिंह भाई से गांड में मारो। मार चले। अच्छा इसको मार रहे हो आप? मेरे को लगा एनिमी को मार रहे हो। बंदे हैं कहाँ? अभी तक आए नहीं। कहाँ छुपे हैं? पीछे 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 पीछे। रियू भाई लर्क कर रहे हैं पूरा। प्लान दे रहा हूँ मैं। कोरोमंडल। अबे हर्ट ना भाई, क्या कर रहे हैं? उल्टा भाग। चलो भाई चलो पकड़ो इसको, इसकी माँ का पकड़ सर।
कैसे फट जाता है? डिनाई कर। हाँ नाइस गोस्ट। Can't keep this dog down. Enemy got eyes on us. अरे ये मुंह पे कौन मार रहा है भाई? फिर भी फट जा रहा हूँ, हेल्थ कम रहा है। हम मुंह पे मार रहे हैं, हेल्थ मजा आ रहा है। गली पे मारना क्या? फॉल बैक खोल दिया भाई। आ रहा हूँ मैं, आपका डॉप टैग ले रहा हूँ। अबे क्या मार रहे हैं लोग? ले लिया उसने। अबे एक एक करके मत जाओ, थोड़ा रुक जाओ, एक ही बार में जाएंगे। वो लोग भी एक एक वही कर रहे हो जो पिछले बार ही किए थे। थोड़ा रुक जाओ, साथ साथ जाओ। ओके मेरे को लगा फ्लैंक करते हो। एक है बहुत लो एचपी मारो। अरे यार ये कौन? भागो। अब वो लोग 4 लोग एक बंदे को मार रहे हैं। हमारे बैंक पता नहीं कहाँ मार रहे हैं। मेरे को एक बंदा मेरे साथ मेरे को नहीं दिख रहा है। मैं तो हूँ, था तो आपके पीछे। तो मार क्यों नहीं रहे थे फिर? मार तो रहा, तो 2 लोग को मारा मैं। बाकी कहाँ है? मैं वहीं पे था आपके पास। एक लो है बहुत। मारो इसको, मार AMX को देख मारो। इसको मार। गया। इसका इधर ही है। दूर से मार रहा है। मैं कलेक्ट किया, फिर कंफर्म किया। Can't move bench to demobilize. अरे यार अरे फॉल बैक कर। 2 टोकन ले लिया वहाँ से। फिर से अकेले मत जाओ, रुक जाओ। जैसे हम लोग के टीममेट्स मर रहे हैं, पीछे आ जाओ। मार दिया। टोकन रुक जाओ, टोकन। इधर है कैट है। मेरे पीछे 2 बंदा उधर से स्नाइप कर रहा है, उधर से कोई उसको मार नहीं रहा है। मंजू भाई XMI को मारो ना। मारो वो दिखे थे, वो बाहर ही निकल रहा अभी। अरे सामने ही है ये, आप बाहर निकलो। अरे वो इधर वाला बंदा 2 तो है 190। देख रहे हो 2 लोग सामने आ रहे हैं, पीछे बाकी पीछे आ रहे हैं। पीछे खेल रहा है, हम लोग पीछे खेलो ना। पीछे मैं भी पीछे खेल रहा हूँ इसलिए। आपका कौन सा है? आपका देखो पावर अगर लॉन्ग डिस्टेंस में अच्छा डैमेज दे रहा है तो दूर खेलो। अगर क्लोज रेंज में वाला है तो क्लोज रेंज में वाला देखो। उसको कलेक्ट करो जाओ। जा रहा हूँ। कलेक्ट करो। अरे यार इनकी माँ का भरोसा। उठाओ अपना भी टैग उठाओ, अपने टीम का, उनका भी उठाओ।
इसको मार मादर चौक को मार। ले उठा उसका। जी जाएंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कैसे भाई उसको फिर भी दूर से असिस्ट मिला, मेरे को 2 बार इमोबिलाइज किया भाई, कैसे पता नहीं भाई। एंड के पास इमोबिलाइज कैसा है मुझे सब समझाओ। अरे मारो ना स्टिंग भाई उधर से, वो लोग जब मेरे पे नजर कर रहे हैं। एक गाड़ी रुक गया, गाड़ी रुक गया बट गन तो चलाओ। एक 1 HP है। अरे यार शॉट्स लो। माइक ऑफ कर दो ना स्टिंग भाई। ओके कर रहा हूँ। हो गया सबका स्क्रीनशॉट्स। हो गया। Excuse me. I can't be tamed. Excuse me. कितने 3 मैचेस के गए ना। हम तीनों में जिसका सबसे कम किल्स हुए वो लड़चट। तो इनका नाम क्या है? स्ट्रीट सिटी। हेलो भाई, थैंक यू टू कमिंग टू द स्ट्रीम।
फिलहाल के लिए तो हिमांशु भाई मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहा हूँ? जीतना इम्पोर्टेंट है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मार इसकी माँ का भरोसा। क्योंकि गांड पे लग गया हमें, रिलोड नहीं हो रहा। स्टिंग भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ? वो अपना बंदा जीत रहे हैं। भाई चारों तीन लोग का किल 4-4-4 है भाई। कौन 4-4-4 भाई? मुझे देखो ना, मुझे अपने में मत गिनो भाई। अभी एक किल करके ज्यादा बज रहे हैं। मेरे को अपने में मत गिनो, मैं अलग हूँ तुम लोगों से। ठीक है भाई, दिखा दिए ना। अरे समीर भाई, अरे बढ़िया, मैं बढ़िया। अरे इतना मतलब थोड़ा चैट पढ़ के थोड़ा अजीब लग रहा है, इतना टाइम से खाली रहता है ना। तो एक गाड़ी लॉक कैसे हो गया यार मेरे वहाँ पे? चाबी घुमाओ। चाबी भी होती है क्या यहाँ पे? हाँ चाबी होती है। कौन सा दबता कैसा है चाबी, कौन सा की है? देखो उधर होगा, देखो एफपीवी में जाओ। से कोई का भाई किल फेल दिस भाई। और रुक गया ये। देख रहे हो लास्ट गोली मार के ले जा रहे हैं। मैं भी नहीं मारूंगा, रुक जाओ। मेरा रीलोड होगा तब ना मारूंगा रे लंचा।
बोलने वाली बात है बस। र्यूक भाई बच के। क्या रे लंचाट, मारो बेंच इसकी माँ का। गोश्त भाई मैं आऊँ नेक्स्ट मैच, आ जाओ तृप्ति भाई, बिल्कुल आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हो। अरे भागा 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 भागा, 1 HP वाले भागा। अरे लंचाट गोश्त। हाँ मैं वो मारो आप। लंचाट ले, लंचाट रे, इश रे गोश्त, मेरा गोश्त, मेरा गोश्त लंचाट रह गया रे। गेम खत्म नहीं हुआ है भाई। खत्म नहीं हुआ है क्या? अच्छा बेस्ट ऑफ 3। मेरे को क्यों लग रहा है कमबैक करेंगे वो लोग, जानबूझ के हार रहे थे। ये तो 100 साला पेसिमिस्ट इंसान लोग मेरे नसीब में आ जाता है ना। मेरे पे अल्ट है, एक मार दूंगा। मारो पे जाती था। अबे लेजर है, एलाइस इन बॉर्डरलैंड जैसा लेजर कर रहा है बॉडी पे। आजा भाई। हाँ भाग गया वो। हेलो बोलो। हाँ हाँ ये भी है, साई भाई अभी आ रहे हैं। हम लोग दोनों से थोड़ा क्या है भाई, देख रहा मेरे को मार रहा है कोई। कौन मेरे को मार रहा है आपको? डिब्बा अकेले बैटलफील्ड में। Enemy got eyes on us. अरे माँ का चूत। पकड़ो इनकी माँ का। भाई ये कैंट का अल्ट भी लगाया मैं, 2 लोग पे लॉक हुआ, कोई डैमेज ही नहीं हुआ। ओए मर कैसे नहीं रहा इसका? वो 0 HP है, फिर भी नहीं मर रहा है। वही तो मैं उसको मार रहा हूँ, मर ही नहीं रहा है बेंच। 1 HP। अरे मेरे को 2 बंदों ने खेल दी, 3 बंदों ने खेल दिया BenQ। That's the cycle. माँ का अभी मेरा क्या ग्लिच हो रहा है इसलिए। ओवर टाइम जीत गया ये। इनका 9 Enemy
अल्ट मार रहा हूँ। ले गया। अच्छा ये जो अल्ट है इससे क्या अपना टीममेट भी डैमेज होता है? हाँ। कौन सा पता नहीं भाई, मेरा खुद का अल्ट नहीं कौन है लंचट? कौन है लंचट रे? स्क्रीनशॉट कौन थोड़ा कौन है कौन है? मेरे को स्कोर में तो क्यों दिखा रहा है? 11 किल स्टिंग भाई के, 11 किल मेरे, 8 किल किसी घोस्ट नामक बंदे के। घोस्ट कौन है भाई? घोस्ट बस क्या है भाई? एकदम लंचा भाई। ये रुक जाओ बाबा, ये खोलना पड़ेगा, नहीं होगा इससे। क्या खोल रहे हो? कुछ तो क्या खोल के रहे हो, बोलो तो। ये क्या है? फास्ट ड्रॉ मैगजीन रिप्लेसेस राउंड सेकेंडरी मैगजीन विद कैनिस्टर ऑन। डैमेज क्या है इसका? डैमेज ज़्यादा है। फास्ट ड्रॉ मैगजीन सेल कैपेसिटी पर इसका डैमेज एंड मैक्सिमम पेनिट्रेशन। ये क्यों नहीं लगाए हम? ये होना ठीक है। लगाओ स्टार्ट करो। एक सेकंड। गीती स्मिता दास हाय स्टिंग है। गीती स्मिता दास जी, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। चैनल पे आप नए हैं तो स्ट्रीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। ए स्टिंग भाई, आप पहचानते हो क्या? किसको? कोई गीती स्मिता दास आए हैं, हाय स्टिंग बोल रहे हैं। तो खेलना है कि? हाँ खेल तो रहे हैं। तुम क्या कर रहे हैं? तुम अभी खेल रहे हैं या क्या कर रहे हैं? मैं तो बैठा हूँ। अच्छा रुक एक सेकंड फिर। ज़ाइफर हैज़ कम। यस हेलो। क्या हाल है ज़ाइफर भाई? हेलो। पूरा स्क्वाड में क्या हुआ? गले को क्या हो गया? गला एकदम सही है। अच्छा बैठ क्यों गया है? उसको खड़ा करो। खड़ा करके यही निकला। उसके लिए वो भी तो चाहिए। वो क्या? Fill in the blanks। अरे तो कैसे स्क्वाड बना है बोलो? वही मैं सोच रहा, रुको थोड़ा सा। इसमें रुक कस्टम है क्या? कस्टम देखना पड़ेगा, शायद तो होना तो चाहिए। नहीं खुला अब तक कस्टम। GGHHH साफ अला जी, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। चैनल पे आप नए हैं तो स्ट्रीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। क्या हाल है, कैसे हो? हाँ तो वेयर वी? मैं सोच रहा मैं और तू, मैं साहेब भाई और तू एक खेलते, मतलब एक दो खेलते, फिर तुम हिमांशु के साथ खेल, तो लोगों के साथ खेल ही रहा है ना, हम लोग के साथ 2 मैच खेले फिर मैं बोलूं। अच्छा सिर्फ हो सकता है। अच्छा क्या हुआ? क्या डिसाइड हुआ? हेलो एक काम करो, स्टिंग भाई और घोस्ट भाई आप दोनों खेलो, मैं निकल रहा हूँ। मैं डिस्कॉर्ड पे रहो सारे के सारे। मैं ये तोरू और इनके साथ खेल रहा हूँ, ज़ाइफर भाई के साथ, फिर मैं आ जाऊंगा तुम्हारे साथ पास, ठीक है? ओके तुम लोग, मैं लीडर बना के जा रहा हूँ। खेल रहा है हिमांशु? अरे हिमांशु खेल रहा है, लेकिन हम लोग 3 मैन खेलेंगे ना, तो हिमांशु कैसे आएगा? तो हिमांशु घोस्ट और स्टिंग खेलेंगे ना? हिमांशु घोस्ट? अरे हिमांशु घोस्ट है। हिमांशु है। हाँ रुको, मैं हिमांशु भाई को बना दिया मेक लीडर और मैं निकलतीस इधर ही हूँ मैं, ठीक है? तुम लोग का आईडीज बताओ। तोरू, लोडू कुन,
हाँ हैशटैग भेजा भेजा भेजा। और भैया अरे मेरे का टैंक नया मिल गया। हाँ उसका फोटो लिए भैया स्क्रीनशॉट। अरे लिया मतलब अनलॉक नहीं किया, करूंगा। अच्छा करके इसका एक स्क्रीनशॉट लेना। हाँ भैया आपका वो बोलो क्या इन्वेडर था ना आपका? कॉमेट इन्वेडर। हाँ कमिट COMF सारा कैपिटल। भेजा आपको आपके भेजा। इतना पैसा किससे आ गया? खेल के माँ कसम कितना खेल रहे हो? ऑफलाइन ग्राइंड भाई। ऑफलाइन ग्राइंड किया क्या? नहीं आज सुबह बस एक ही मैच, एक या 2 मैच ऐसा खेला था। तो एसएस लिए थे? हाँ चलो बढ़िया। ये कैसे कैरेक्टर है हिमांशु भाई? केंट लेवल 1। मैं वही खेल रहा हूँ, चूत कैरेक्टर है पर ठीक है अभी। रेडी करो। अरे जो कैरेक्टर पहले मिलते हैं ना वही अच्छा, उसका अल्ट भी अच्छा है। चॉपर ऐसी हाँ चॉपर अच्छा है रे। मैं केंट को थोड़ा भी कट कर दिया। कैंट फालतू है। यामे का टैंक का रेस हो गया क्या? नहीं कैंट का दूसरा वाला टैंक अच्छा है। सुबह एक ही मैच खेला था। अच्छा सही है। कैंट का दूसरा उसका लिया हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया। वही खोलना है, वो लेवल होने पे वो खुलेगा। वेलकम। नया गाड़ी का रेडी है। भी चलो भी जाएंगे। हिमांशु भाई कितना आ रहा है आपका FPS कितना आ रहा है? नहीं देख रहा मैं, आता है मेरे को 200 250 300 जितना आ सकता है। इसमें तो 140 कैप है शायद। नहीं मेरे को ज्यादा आ रहा है, 200 250 आ रहा है। अरे बाप रे, मेरे को ही सेटिंग्स चेंज करना पड़ेगा। सेटिंग्स, वीडियो रेजोल्यूशन, फ्रेम्स में 144 कैप क्यों है बे? रुक कुछ मैक्स ग्राफिक्स का मेरा मैक्स है ठीक। DLSS अल्ट्रा रेंडर रेजोल्यूशन होगी 720p। ठीक है भाई। जनरेशन DLSS फ्रेमेशन ऑन प्लस बूस्ट। Time to prove myself. बहुत कम तो खा रहा है। मैं उसको ओपोनेंट के बाजू में खड़े होके उसका टीम को मार रहा हूँ। मैं कितना क्रेजी है ना। उसको लग रहा है मैं उसी का टीम का हूँ। वाह कंफ्यूज हो गया वो बहन। अगर हिमांशु भाई का हम ब्रेन बेचने जाएंगे ना बहुत अच्छे दाम में बिकेंगे। आपका तो बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अनयूज्ड ब्रेन है ना ये। आपका तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेच दिया ना। घुटना फाड़ना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी बेच के सेटअप लिया ना। आपके राइट में बड़ा वाला टैंक। जरूरत नहीं मेरे को दिया बेचने का, बहुत पैसा है। यूक ये सब क्या तोड़ फोड़ कर रहा है? ठुकरा के मेरा प्यार। अरे माँ का खेल रहा है तेरे को। हाँ मेरे पास है। अरे इसको लियो को मारो रे। जाएंगे। टीका हो गया क्या? कहाँ रे पे? अबे कैसे? कहाँ तक पड़ रही है? पकड़ो सालो। भागने ना पाए थे। इसका नया वाला गाड़ी खतरनाक है बे। बॉटम ब्रैडली नाम है साले का। तृप्ति भाई कुछ बोलो। तृप्ति भाई का आवाज इतना धीरे क्यों आ रहा है? देखो मैं आपका वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। अरे ये पे खा लिया ना, ये पे बंदे हैं।
बंदे हैं अरे नहीं सेम टीम में नहीं है हम लोग। ये कंटेस्ट हो रहा है। रचेता कौन है बे? पेल दिया उसको। उसके मारा हूँ देखे। चलो रोडकुन हाँ नाइस हाय मार सालेगा दोस्ती खोल सालेगा। मैं मर गया अभी। उसको लेने मत दो मेरा कार्ड। दो बाप रे 3-4 बंदे आगे मेरे पे। अरे थोड़ा पीछे आ जा, थोड़ा फॉल बैक कर ले। फॉल बैक कर। अबे थोड़ा पीछे आ जा थोड़ा जगह दे। दोनों घुस कर एक ही रास्ते पे। कहाँ पे है? ये पे खाली है क्या? गड्ढा था भैया, गिर गया गड्ढा। इसको मारो। यो लियो जाएगा। मैं के पीछे ही मारा हूँ। चल थोड़ा होल्ड कर ले। XM4 करंट आ गया। Nothing if not persistent. I thought we were on the same team. Clearly I'm wrong. The hunt is on. अरे तोड़ दिया। गोल ही नहीं लग रहा, तो देख रहा हूँ वो मुझे देख रहा है। मैं उसको बंद हो गया। मैं छक्के बंद हो गए। छक्के बंद हो गए। अबे छक्के क्यों बंद हो रहे हैं? भाई मेरी गाँव बचाओ। नाइस वन कमेंट भाई। इसकी गाँव में इस मारो। आपके राइट पे देखो, मारो उसको। हाँ नाइस टोकन लो। पीछे से आया मारो को। तोड़ दिया उसको। On us. Token's mine. मारो। थोड़ा ज़्यादा टीम में घुस गया मैं। वो नहीं करना था मेरे को। कितने तुम्हें लोकेशन पता नहीं है। घेर रही है भाई मेरे को। मेरा लोकेशन पता नहीं है इनको। अरे तुम्हारा पे मेरा ये किल काट लो। Damage this taxi. वो ले नाइस।
और 2 बचे। ये भी अपना है। अब जेनेसी टोकन ले कमेंट में। लेफ्ट पे कहीं लेट्स गो। इनको इधर शॉट स्क्रीनशॉट। मैं जा रहा हूँ यही जा रहा हूँ। अब आ जाइए। मोबाइल इनमोबिलाइज हुआ सारे स्क्रीनशॉट्स ले लो समरी के। सीधे आ चुके हैं लोग पहले से। मैं बोलूंगा कहाँ पे अपलोड करना है, भेजना नहीं है, अपलोड करना अभी नहीं, पहले सेव तो कर लो। सेव कर लो। हाँ अभी नहीं, लास्ट में कर लेंगे। किसके किसके कमेंट भाई के 6, लोडू भाई के 4 किल्स। भाई ये पे वापस आ गया भाई, मैं अकेला हूँ ये पे। लोडू भाई बोल रहे हैं। नहीं पर मार दो। किसको मार रहे हो? एनिमी की किसको? भाई ये आओ जल्दी आओ। आ रहे भाई आ रहे। बंदे मेरे पे सी पे। अबे ए बी सी दोनों ले ले भाई, क्या सीन है भाई। भाई बिल्कुल अंदर वाला ए पे आना है क्या? आ रहा हूँ। ए पे आओ। 2 लोग है, एक जाएगा, एक गया, एक और है। मेरे को लगा ये तो कैप्चर हो गया था अपना। इस वे एजी नहीं जीत हो गया। ए ले लिया, हम ए ले रहे हैं। AWC दूर है, इसको मारो। मार साले का धोती खोल। लियो बना दो भाई। बी चलो, बी। क्या जीत जाएंगे हम लोग। जितना चाहिए। बी कंटेस्ट हो रहा है ना, बी खाली कर देंगे तो मर जाएंगे, जीत जाएंगे। बंदे आ गए फिर से ए पे। बंदे अच्छा एक काम करो ना, मैं आता हूँ भैया, आप लोग 5 मिनट रुकोगे या 5 मिनट आप एक गेम खेल लोगे? तो आप गेम खेल लो फिर। मैं आता हूँ। हाँ हेलो भाई तृप्ति, 5 मिनट में आता हूँ मैं। क्या तुम लोग तब तक खेल लो, मैं लीडर बना के जा रहा हूँ। मैं डीसी पे हूँ। कमेंट इन्वेडर लीडर तुम लोग खेलो। स्टिंग निकल गया क्या? मैं 5 मिनट में आता हूँ। 5 मिनट्स। अरे ये आ जाओ ना साइफर भाई और तोरू भाई आ जाओ। मैं वो ना मेरे को इनवाइट कर दो। हाँ इसको इनवाइट कर दो। स्टिंग भाई सुनो, अपलोड का आप अभी करोगे या क्या सीन? हाँ कहाँ करना है अपलोड बोल दीजिए। आप स्क्रीन शेयर करो, मैं इनको बोल के जाता हूँ। मैं 5 मिनट के लिए जाना है मेरे को। घोष 07_141 जी कैपिटल। हाँ घोष 07_141 07141 देखना। रिप्लाई कर रहा हूँ प्रेजेंट। हाँ 1 सेकंड देख रहा हूँ। ओके हाँ दिखाओ। जाओ वो उस पे, वो डिस्कॉर्ड पे जहाँ पे जिसका लिंक भेजा था आपको, वो तो बीच में थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर। हाँ ये वाला, इसका आपने वो कर दिया था ना, रोल मिल गया था ना। लेफ्ट साइड पे देखो एक बार। लेफ्ट साइड पे देखो, लीडर बोर्ड रजिस्ट्रेशन में देखो। नहीं कर रहे।
थोड़ा और नीचे, हाँ देखो इस पे। अब नीचे स्वाइप, नीचे स्क्रॉल डाउन करो। हाँ देखो ये वाला जो है ना ऊपर, जस्ट आपके ऊपर वो फॉर्मेट कॉपी करो, र्यूक वाला। ऊपर देखो, ऊपर देखो। हाँ, फॉर्मेट कॉपी करो, आपका आईजीएन में आपका आईडी डालो। हेलो अल्लाह बोल। इतना सारा कैसे कैप्चर करे बे? चलो ये चलो पहले। इतना सारा कैप्चर। नहीं जाओ नहीं उधर ये जा रहा नहीं ना, है, जाओ ये जाओ नहीं जाओ, मैं है। इधर कैप्चर आपका करके इन गेम में देखो हैशटैग क्या के है साथ होगा, आपको प्ले दबाना पड़ेगा फिर से। कौन कूटा कौन मेरे को? भाई मेरे सामने एक है वो, भाई क्या मेरे को रॉकेट अपना जैसा वो चला रहा है। इन गेम नेम देके वो करना है ना, एंटर दबाना है। क्योंकि मैं हम लोग के पास ए है कॉपी ना, करना तो मैं ना सोचा उसको, इसलिए ए से लेते हुए जाएंगे। फिर वो स्क्रीनशॉट भी तो अपलोड करोगे। भाई मिसाइल गांड में डाल लिया भाई। ए पे 2 लोग हैं। ए यार कौन है भाई, दूर से स्नाइपर चला रहा है। प्लस पे जाओ, प्लस पे जाओ स्टिंग भाई। हाँ ऊपर देखो, कॉपी दबा दो। हाँ उधर अपना कॉपी। हाँ अब प्लस करके व्हाट भाई, स्क्रीनशॉट्स। इसका ये तो मेरे को खोल दिया भाई। रुको, कौन सा है याद रखियो ना, फिर वो एक दोबारा नहीं जाना चाहिए वैसा। हाँ हाँ 9K ठीक है। कूल, एंटर दबा दो। अच्छा नहीं 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 रुको, टैग नहीं था। अनसेंड कर दो, अनसेंड कर दो इसको, अनसेंड कर दो। एडिट करो, एडिट करो, एडिट कर हो रहा है देखो, एडिट मैसेज टैग कर दो। हाँ वो देखो टैग। हाँ अभी ये सेंड। अभी बस प्लस फिर से। हाँ ठीक है, पेस्ट अरे करो। एक फ्लैंक कर लिया भाई। नहीं नहीं पहले कॉपी तो करो। हाँ यस, पेस्ट टैग ऊपर आ गया, एंटर। पेमोरिक कितने खेले आपने? 5 खेले ना? 5 हाँ तो इधर 3 अपलोड करो। और लेफ्ट साइड में बैटल रिजल्ट्स है भाई, देखो नीचे लीडरबोर्ड रजिस्ट्रेशन के नीचे ही, थोड़ा और नीचे जाओ। हाँ देखो बैटल रिजल्ट्स, वहाँ पे अपलोड कर दो। सेम फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट पेस्ट करो। र्यूक को टैग करो। बाकी के 2 मैच का देना है ना? हाँ हाँ बाकी के 2 मैचेस के। हेलो लोडोगोन। डन सिन। बोलो बोलो। थैंक यू स्टिंग भाई। इधर आओ। अरे अरे फिर आप अभी हो या जा रहे हो स्टिंग भाई? मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। स्टिंग भाई फिर मिलते हैं कल। ओके 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 ओके। अरे यार ये ईएमपी में अरे ये पता चला ये किस पे है अपना, वो इमोबिलाइज्ड वाला या कहाँ किस पे है वो? हाँ साहिल भाई। नहीं तो मैं आता हूँ, ठीक है चैट 5 मिनट में। छटका के स्कोर सेम है पर अपना जीत सकते। कमेंट किल मारो मारो कमेंट।
आगे मत जाना, ठीक है? EMP EMP ए को थोड़ा होल्ड करना मुश्किल हो रहा है। अरे भाई 3 लोग हैं। और मैं कवर खोल दिया फिर भी। आ रहा जिंदा रहा। खोल दिया मेरे को, 4 लोग खोल दिया साथ में। भाई उन लोग A B C, अबे वो लोग D ले रहे हैं भाई। मैं D जा रहा है। रुक भाई, छोड़ दो रुक भाई, बोल रहा हूँ। D चलो। अपना जो सबसे पास वाला है वो उन लोग उसको भी ले लिया। B D चलो, उनका 1900 हो गया। कैप्चरिंग D 1000 हो रहा है। डिफीट अबे এটা মুশকিলটা তারপর কোন अटके अब उनका खाली अटकाने वाला है, वो खाली अटका के मार रहा है। हाँ अरे भाई एक रुका दे रहा है, उसके 4 लोग मार रहे हैं। वही हो रहा है, स्ट्रेटेजाइज करके मार रहे भाई। स्नैपशॉट ले लेना। ले लिया है। ये नहीं चला रहा भाई, मैं कंट और नहीं चला रहा, हो गया। मैं भाई चॉपर स्लो है बहुत, मार दे रहा उसको घेर के। इसका दूसरा वाला टैंक कब खुलेगा रे? कैसे खोलते हैं ये? इसका दूसरा वाला टैंक मजबूत है, अच्छा है। सिंगल शॉट है और तेल चलते तेल निकलता है पीछे। वही वो कैंट का सबसे ताकत वाला है, अच्छा है वो वाला। और उसको भी वही चाहिए, तो 200K चाहिए उसके लिए। कार्बन कितना चाहिए? 1,30,000 चाहिए यार। मिशन करना पड़ेगा कुछ तो मिशन है। डेस्ट्रॉयड 8 एनिमीज विद कॉन्ट्रैक्टेड स्पाइक, ठीक है। SAM 190, अच्छा इससे ही चलाना है। चलो अपग्रेड किया जाए, लगा देंगे। चलो अरे रेडी मारो मेरा टैंक लेवल 16 है और केंट का लेवल 7 हो गया।
पर कुछ फायदा ही नहीं होना, क्या है कि हल्का है। वेलोसिटी कौन सा है? गन स्लिंगर सेल वेलोसिटी बढ़ाएगा ये। कैंसिल कॉन्टैक्ट स्ट्राइक रिड्यूस टू ये मैं अगर कैरेक्टर खोलूंगा मैं मुझे क्यों फेजर बहुत अच्छा लग रहा है। फजर फेजर बोल रहा हूँ। ये इसका क्या है? मार रहा वो क्या पता, वो ऑल टैप किया होगा उसके बाद क्लिक किया होगा इसलिए मार रहा होगा। ये मैं इतना आगे क्यों? जाओ आगे जाओ। देर आ चुका है। देख वहाँ पे एक स्नाइपर है। किधर भी है? उसका एमो निकाला मैं। लेफ्ट वाले को निकालो, लेफ्ट वाले को निकालो, उसको एमो पड़ा मैं। लॉक दिखाया। लॉक लोकेशन मार कैसे कर रहा है? और माउस मिड क्लिक। माँ कसम ये क्या है? फ्लैंक पे कौन है? ए साला रीपर का क्या है? मार दे रहा है हमेशा। हेलो, खेल रहे हो क्या? हाँ। नहीं। नाइस। स्क्रीन शेयर करो ना भाई। रिक्वेस्ट स्ट्रीम चालू है। हाँ बता है तो स्क्रीन शेयर करो ना। अरे कर रहा। अरे मैं बीच में फंसे सो हूँ, मर जाऊंगा। रुक जाओ, कर रहा हूँ एक मैं कर रहा हूँ। अबे वो रीपर का कौन सा एजेंट है? ये लो रुक भाई। ओके थैंक यू। मैं कर दिया। दे दिया रुक भाई, दे दिया। अच्छा आप भी दे दे क्या? देख लो, दो पीओवी देख लो। होना चाहिए भाई, दो पीओवी देख सकते। मारा कौन? रीपर के साथ जीत ले सकता भाई। रीपर ट्विस्टर रीपर फोड़ दिया उसको। फोड़ दे रहे भाई रीपर ट्विस्टर फोड़ दे रहे। Yeah, can't move. Guys, help guys. हेवी वाले लेके आ रहा है। इससे भाई क्या है? दूसरा उसको मारो, बोडिन को मारो 1 HP है वो। लोडोकन क्या कर रहा है भाई?
क्या इधर कट टू कट रेस चल रहा है क्या? भाई मेरे को तो आने भी नहीं दे रहे, खत्म ही कर दे रहे, एक ही बार में हार जाएंगे। तो रुको भाई मेरे को तो धूप धाप पीछे से बैंग किसको देख रहे हो? मेरे को देख रहे हो? साइवे को देख रहे हो? पूरा गैंग बैंग दे दे रहे एक ही बार में। भाई आपको इसका थर्मल खुला? एक बार में गैंग बैंग दे दे रहे। ये देखो देखो रुक भाई, देखो ये देखो मेरे पास ये है। कौन सा फायदा है? नहीं बस ये देखो। कौन सा लिए वो तो बोलो। कैंट ही है, कैंट का ही है। क्या नया टैंक है क्या? नहीं वही पुराना वाला, उसमें थर्मल लगा दिया मैं, मिला मुझे थर्मल, थोड़ा देखने में कूल लगता है। क्या वो? ये क्या है भाई? ये क्या है? अबे दीवार के अंदर रहना, इससे ले कनेक्ट ना कर पाए। ले अपना बंदा पे स्नाइप कर रहा है ये तो। नहीं। ब्लॉक कर दो भाई, इसे ब्लॉक, इसे ब्लॉक। हील हो रहा है वेंचर मुंह के सामने। नहीं वो रिपर के साथ में भाग साला कृष्ण माँ की। क्या बात है, तोड़ दिया वो। इस लैंडचेट को देखो ना, घोस्ट कहाँ पे है? पीछे से गांड मार रहा है, देख ना। अरे दो लोग हैं वेंचर पीछे कर रहे हैं। साला लैंडचेट को देखते साथ ही फुट जाता है। अरे वो बंदा उधर बैंच जो दिमाग खराब हो गया बैठा है भाई। अच्छा बेटा, ये कौन है? उसका फजर या कुछ तो है भाई, उसको मार रहा हूँ तो फजर नहीं, ये एम्बर। अबे हट। ये क्या था, मैं भी नहीं समझा। बाहर निकलने ही नहीं दे रहे। लंचेट को देखो, लंचेट को देखो। हाँ लंचेट, देखना ये अभी तक अपने बेस में ही है। पूरा भाई अगर बंदा सामने मुंह पे है, लॉन्ग यहाँ पे है तो क्या सामने जाऊँ क्या? हाँ वो लोग कैप्चर कर रहे हैं ना, 22% हो गया। अरे वो ये खेल नहीं रहा, क्या बज रहा है ऑडियंस? कौन है? हाँ थोड़ा छोटा तो होने दो, मिसाइल आगे जाएगा नहीं तो। जूम इन कर रहे हो, रुको। हाँ अभी देखो, आप जूम इन कर रहे हो ना, तब थोड़ा सा रुकना, तो वो क्रॉसहेयर छोटा होगा, तो फिर एक्यूरेट जाएगा। क्या बात है, किल गायब हो गया। ओह स्ट्रीम चल रहा है मेरा, सब सबूत है, उसको पूरा 1 HP किया, रिलोड हो रहा है, खाली हो गया मैं। ये फजर का माँ का भोसड़ा है, अपने बंदे कहाँ है? लोडोकुन क्या कर रहा है? कोने में क्या कर रहे हैं? साई भाई नहीं दिख रहा, साई भाई किधर हो आप? अच्छा आप भी स्पेक्टेट कर रहे हो। लोडोकुन स्नाइप कर रहा है ने तो हुआ ये साला कैंट तो मारने लग गया। भागो। क्या ही मार रहे हो उसको? भागो भाई, क्रिटिकल कंडीशन। टैंक मार रहा मैं, हील हो जा रे, हील हो जा। इधर ऊपर नहीं, यहाँ से नहीं चढ़ सकते।
ये बात ये ऐसा गांड नहीं दिख रहा रे Zoom your ass गांड नहीं दिख रहा क्या लैंग्वेज है ये क्या लैंग्वेज है गांड नहीं दिख रहा है ये ले आर मारूंगा गाइस आर भाई ये क्या है एक शॉट क्या है ये मारो उसको बैन क्लॉड को मारो ले साई भाई वो गन तो चलाओ साई भाई सेकेंडरी गन चलाने के चक्कर में प्राइमरी चलाना भूल गए साई भाई स्क्रीनशॉट ले ले साई भाई रहने दो साई भाई आप स्क्रीनशॉट ले लो साई भाई New to the game, bro. 10 गेम खेल चुके हो और कितना पुराना होना गाड़ी ले आया मैं क्या करूं और कितना पुराना होना है आपको खोल रहे मैं देख रहा हूँ सेकेंडरी तो मार दिया फिर खड़े किस लिए डैमेज देख रहे क्या डैमेज हो रहा है कि नहीं अरे बाबा ठीक है वो 70 के अच्छा मॉड्यूल्स लगा सकते क्या लगा सकते इसमें क्या होता है देखो ना ऊपर लिखा है फास्ट ड्रॉ मैगजीन एनर्जी कॉस्ट मतलब क्या होता है इसमें अरे वो एफ जो अब एबिलिटी है ना आपका वो कम वो लेगा एनर्जी कॉस्ट करेगा तो आप ज्यादा टाइम उसको यूज कर सकते हो मोबाइल रुको ना पहले दूसरे वाले देखो क्या क्या है लेफ्ट पीछे करो बैक करो ये तो बैक करो बहुत सारे लगा सकते हैं हाँ इसमें दबाओ क्या क्या है वो देखो उसमें क्या होगा ये अनलोड कूलडाउन हाँ तो इसको करो एबिलिटी रुक भाई मेरा भी देखो रुको मैं कर रहा हूँ पहले इसका कर देता हूँ ये सब लॉक्ड है सही भाई ये लेवल के साथ आएगा डैमेज बढ़ रहा हाँ अब बैक करो अब तीसरे वाले पे जाओ इस पे नहीं तीसरे वाले चौथा और पांचवा में जाओ चौथा पांचवा हाँ एपी फ्यूल क्रेट मॉडिफायर इसमें ज्यादा नहीं बैक करो बैक ये सब लॉक करना हाँ फिफ्थ वाले पे जाओ क्या है 100 इससे +7% ये वाला क्या रिवर्स स्पीड हाँ ये कर सकते हो काम देगा ये रिवर्स स्पीड तो अच्छा ही है तो फिर रहने दो साला रहने दो बोला रहने दो तो मतलब कर दिया मैं हाँ ये वाला भी कर ही दो फास्ट ड्रॉ मैगजीन क्यों नहीं ठीक है सही है अभी आपका हो गया हाँ कहाँ पे है किसका देखना है मेरा ये कर रहा मैं ये क्या कर रहे हो क्यों कर रहे हो आपका पैसा ही नहीं है ये भी कर दिया कौन वाला कन्वर्ट कर दूंगा मैं कर दो कन्वर्ट कर दूंगा कर दो इतना पैसा है तो बैटल पास ही ले लो चोमटी की कर अरे ये कन्वर्ट कर सकते हैं क्या चूतिया हो क्या ये कन्वर्ट कर सकते हैं इधर क्या लिखा है वो तो करो तो कन्वर्ट 31,000 सोच रहे हो आप कोई वर्थ है इसका 31,000 से आप सिर्फ हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ इसीलिए आपको बुलाया लेंगे नहीं लेंगे बैगन लेंगे बैगन तुम्हारा बैगन स्किन ले सकता हूँ स्किन चलो लास्ट स्टार्ट करो तुम्हारा बैगन लेगा अच्छा मेरे को नहीं पता था कि कन्वर्ट हो सकता है मेरे को लगा हीट कॉइंस से कन्वर्ट होगा और नहीं तो फिर अरे बैगन देख नहीं रहा होगा बजना खाली बैगन हो रहा है पता नहीं भाई रूक भाई नेक्स्ट मैच खेल रहे हो क्या गेम स्टार्ट हो रहा है भाई ब्रेन स्विच ऑफ भाई नेक्स्ट मैच सिंह भाई मैं नहीं खेल रहा मैं इनका थोड़ा मैचेस देख रहा हूं बिकॉज़ मेरे को बोलो हम लोग लोगों को थोड़ा क्या पता होगा मेरा तो हां तो तुम स्ट्रीम्स ये करो पहले स्ट्रीम तो करो स्नाइप करो ठीक है भाई स्ट्रीम तो कर रहा हूं करो वही तो अच्छा रुको देख रहा देखा मैं बोला ना सही भाई ये बंद कर देता है भाई हां उसका लेफ्ट वाला बंद कर देता है मॉडिफाई व्हीकल कर हां मैं साउंड लिया हूं ठीक है ये वाला लिख रहा हूं हां मॉडिफाई व्हीकल बोला था मॉडिफाई एजेंट पे जा रहा है हां प्लस नहीं मैं बोल रहा हूं अच्छा हां ठीक है अभी तेरा एक ही है तो एक काम कर ये वाला कोई कर ले अभी के लिए इंस्टॉल दबा दे इसको हाँ इसको खेल इसका लेवल्स बढ़ाएगा तभी तेरा बाकी सब अनलॉक होगा
बैक कर तो बैक किया और नहीं खुला ना? नहीं खुला ना, ये लेवल सब अनलॉक होगा उसके बाद। ओके समझा। इसी को खेलूंगा मैं, स्नाइपर रेडी कर दे और स्टार्ट कर देंगे साइड बाय। मैंने 60,000 कन्वर्ट कर दिया BC अरेस्टिंग भाई। क्यों? आप एजेंट खरीद सकते हो उससे। क्यों? एक सेकंड, ग्रुप कॉल आ रहा है, रुको चेक। हेलो बॉयज, ये चैट देखो, इधर देखो। इन लो, हेलो टू द स्ट्रीम, से हेलो टू द स्ट्रीम। अबे अबे ओए हेलो अरे नहीं, आप लोगों को नहीं। अबे say hello to the stream, boys. Say hello to the stream. Yes. Like and subscribe कर। आउतरे आउतरे को। अबे 80 माइक पाके रखी थी मैं, तांको सुना जीवो। यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस। यस, देख रहे हो गाइस, मेरे दोस्त भी बोल रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। करो फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब। अबे तो कॉल रे आती है चिकी। वन एचपी है ये। बढ़िया ये लेके आया मैं। सैम ब्रो, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है यार। चैनल पे आप नए हैं तो स्ट्रीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। क्या हाल है सैम ब्रो? हाय ब्रो, हेलो। कौन अटका है बे? पीछे तोरुकुन पीछे इसीलिए हम अपना मार लिया अपना रियर को। 1 HP है। क्या ले लो उसका। ये रहा। वन एच पे एक गोली। बहुत बढ़िया। तो हील उठा गया हम। ये इसको मारेंगे। ये इधर। थैंक्स। कौन है ये जो मेरे को हेल्प करने आया?
मारो 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 उसको, मारो सामने वाले को। बहुत बढ़िया, मैं मर गया। जाओ साई भाई के पास, साई भाई के पास जाओ, जल्दी जाओ। मां कसम, मेरे को इतना डैमेज कैसे दे दिया? वो घेर दिया भाई। अरे मां कसम भाई, मां कसम मैंने तुम्हारे मारो ना मारो। फोड़ो फोड़ो उसको। अरे फोड़ दिया मेरे को। ये मर क्यों नहीं रहा है भाई ये? All we're doing is just surviving. खाना तुम बोलो। Why you're not hungry? You're going home. Today? मतलब tomorrow? कुछ भी देख ले यार, कुछ भी मिल रहा है। नॉन वेज, वेज एनीथिंग वर्क्स। हिमांशु भाई कहाँ पे लाइव हो आपका चैनल का लिंक? यूट्यूब पे लाइव हो, ह्यूमन एक्सप्लोर। घेर लिया उसको, जो भी है साइड में घेरा लीजिए। वो घेर के मार दिया। कौन पूछ रहा था? अरे ह्यूमन एक्सप्लोर यूट्यूब पे सर्च करो, आ जाएगा लाइव। ह्यूमन एक्सप्लोर ना, ह्यूमन एक्सफ्लो। अरे खोल दिया। कौन मार रहा है इतना? लो FLOW। हाँ मिल गया। भाई मेरे को चारों तरफ से घेर लिया गया मेरे को। छोड़ दिया मेरे को। स्टिंग भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। दे फेस कैम आएगा क्या? सुन अभी नहीं। थोड़ा रेगुलर होने दो, उसके बाद करेंगे फेस कैम। मेरे को बचा, उसमें पीछे ही है। पीछे ही है? अरे भाई इतना धुआं क्यों है भाई? वन HP किधर जाएगा तू? किधर जा रहा है तू? फंस गया। भाई तू मरने वाला है, अपना गांड बजा। तू भी ये अपना ये डिको उठाओ, अपना फ्रंट का इसका उठाओ। 23 और 2 मारना है बस। पीछे उधर मरा हुआ है ना। बहुत बढ़िया। नाइस कवर। इसको पकड़ो, कहाँ है वो? धुआं
गोस्ट ले ले बोला। ले लो चल उड़ो भाई। मैं भी रुका दिया मेरे को। सवास एक और था ना अपने पास। अरे वो डिकॉय अब क्या? अच्छा डिकॉय है वो उठा लेगा रे। नहीं उठा। अरे यार मेरा ना। अरे एक चाहिए मारो और एक को मारो। उठा जीत गए। चलो इजी क्या मारे भाई। बोल दिया भाई। मैं तो दुमदाम मारा हूँ भाई। स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बोलते हो? टीम वर्क मेक ड्रीम वर्क। वही है ना। बस लाइक करो गाइस जो भी देख रहा है गाइस। रेडी यार रेडी। चलो अल्लाह वो मैं भाई स्नाइप किया हूँ। क्या स्नाइप किया हूँ? पीछे एक स्नाइप मारा। गुड। हवास। ये अलग कैलिबर के लोग रहने से ना मजा आता है खेलने में। मजा आता है वही तो। एक रियुक जैसा भाई पूरा मारेगा नहीं, लास्ट एक गोली में किल चोरी कर देगा, खाली लैंडचट बोलेगा। योरू वही तो। साला टीम वेट करके एग्जिट फ्रैग निकालता है साला। अच्छा तब वो आपका किल से रियुक चुरा रहे थे। और नहीं तो भाई तू अभी देखा ना मेरा लास्ट में अभी कितना किल हुआ मेरा। क्या तो 10 कंफर्म्स 10 डेथ्स। डिस्ट्रॉयड ठीक है। डेथ 5 बार 6 असिस्ट 24.6। रियुक भाई लास्ट के 1 HP तक होता तब मारते हैं वो। वही करता है भाई। तो पूरा वेट करेगा, थोड़ा सा लास्ट में होगा ना, लास्ट वाले को मारेगा नहीं, पूरा 1 HP होगा, वो जाएगा पीछे घूम के एक दूसरे को मार के रियुक अलग कैलिबर है उसका, अनबीटेबल है वो। ये बता कौन है बे? बात कर रहे पीछे से क्वैक। इसका होगा ना कम से कम लाइक 5, अभी देखो 5 10 वाला लॉबी होगा ना, तब मजा आएगा भाई। वही ना। तब डिस्कॉर्ड पर रहेगा, तब भाषण होगा ना। मारो उसको मार भाई, मेरे गांड मार दिए। अरे देख कौन है भाई? अरे क्वेक कर दे रहा भाई। अरे साहिल भाई आपका टैंक में देखो बतख फंस गया क्या? देखो अरे साला। अरे ठीक। आउट ऑफ द ब्लू क्विक स्टार्ट हुआ। कोई पानी पिला दे, मजा आ जाएगा। एक ठीक है भाई। वो पूरा साउंड बोर्ड एक्सप्लोर कर रहा है, समझ रहे हो? पता है तुम्हारे पास पैसा है, मत बताओ। अरे फ्री है। वाह देख रहे हो इन पे फ्री है, देख रहे हो तोरू भाई? वही सोचो तो, पैसा होने से सबको फ्री में मिलता है। वही तो। अरे डिस्कॉर्ड का है पहले से फ्री रहता है सब। भाई हमको नहीं है भाई। ये चलो वल्ला बोल।
Assertion false, GPU crash at 101 FR, engine render down calls track. माँ कसम मेरा GPU crash हो गया. छूट गया इसका. घूम के जरा डायरेक्ट नहीं जा रहा उधर. GPU को down. Yeah. अरे ये लोकेशन से मारना ठीक है. इधर भी थोड़ा स्नाइपर लोकेशन है ये वाला. क्या मार्क किया हमने. एक ही बंदा दिख रहा है. बाबू बता उसका. बाबू इसी से तो मार खा के आया. अरे भाई क्रेजी भाई क्या चला है तुम. वो साला डिकॉय डाला था बे. अच्छा डिकॉय था इसीलिए सब बच गया वो. इसको पकड़ पकड़. पीछे 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 मारो इसको. पीछे पीछे पीछे. लोड हो रहा है. ए खत्म. मैं फंस गया हूँ मैं. लियो को मारो. लियो की माँ की आँख. लियो तोड़ा है कोई किस तोड़ा है. गंदा तोड़ा है. हेलो बोलो. क्या व्हाट्सएप. मैं रिट्रीट कर रहा फिलहाल के लिए. एक सेकंड गाइस. सेंड आकाश का वही नंबर है. एक सेकंड. अंशारी आश पुजारी. पिस्तिया जाएंगे. उधर जाएंगे. चलो क्योंकि ये खुलने दो. इसको खोल दो पहले. खोल दिया. सामने में चोद आ रहा है. एक और है. अरे कहाँ ये किसका ऊपर चढ़ रहा है. जा किधर रहा है वो. हेलो मोर कौन assertion error देखे पूरा डिलीट हो गया again. हाँ व्हाट. GPU crash, GPU core down देखे उड़ी वाला पूरा. गेम उड़ी वाला. ना एरर देखा था. डिकॉय गिरा. मेरे पे बहुत लीट है. तो मार दिया साला लवड़ा. बॉम्बिंग एरिया 12 बच गया भाई. अरे वो रेड जोन से बाहर आ जाओ. आ रहा. ये पीछे दिया कोई. कहाँ से चलो.
मेरे पीछे कब आ गया ये? योर स्पीसी स्पेक्स भूल गया मैं, क्या था? Ryzen 9 7950X है और 80 सुपर है और 64 GB रैम है बस। हाँ ना, मुझे वो भी, अरे साहिब आपको पता है वो जो @ क्या होते हैं एक्सक्लेमेशन स्पेक्स लिखते हैं, वो रिक को पूछता मैं। रिक को पूछ डाल दो। ये इंटरेक्शन थोड़ा मेरे लिए नया है ना, तो इसीलिए ये मुझे खोल देंगे, मेरे को खोल देंगे, मेरे को खोल देंगे। 2 लोग हैं मेरे पे। इसको मारो, ठीक है, डेविड को मारो। लियो का मार रहा मैं। डिकोय क्या डाल रहा है? किधर जाएगा बाबा? अरे रे रे, खोल दिया था मेरे को। कौन है रे लाला, मेरे को पीछे ढकेल रहा है। बहुत बढ़िया कवर। पीछे पीछे इमोबिलाइज्ड है वो। बहुत बढ़िया कवर। मेरे को छोड़ो ना भाई, ये कौन है मेरे गार्ड? अरे कौन है भाई? गांड से आग निकल रहा है। 1 HP हूँ मैं बस। वन एच। अब मैं यहाँ पे उसको लो करूँ, वो मेरा ये पिन दिया। कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई रेडिएशन, भाई रेडिएशन। कहाँ जाना है? सीधा आओ, मेरे तरफ आओ, मेरे तरफ आओ। मेरे तरफ बस। मैं रेडिएशन के बाहर था, फिर ही फट गया। चीटिंग भाई, चीटिंग है भाई। मैं भी फट गया। मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये जीत गए भाई। 1970 है अपना। ए भाई ये इसको, अरे डॉग ती लेना ऐसे ही। मैं अटक क्यों गया? लड़कुन मैं अटक गया हूँ। मेरा कैमरा पीओवी कैसे चेंज करूँ? बहुत बढ़िया, नाइस लोडुकुन। मैं मारा बे। बहुत बढ़िया। लोडुकुन तो चूतिया। पीछे। बहुत बढ़िया, नाइस वन। इधर इमी को मारेंगे, इसको मारेंगे। बर्निंग। उधर है वो, खोलने में है। इधर चल। नहीं, वो मेरे पे वो मार किया था ना, इसलिए मैं थोड़ा दूर गया। अरे तेल डाल दिया भाई। चलो मारो, मैं पीछे जा रहा हूँ उसका। मार मैं आगे से ही पेल दे रहा हूँ। वो क्या करता हूँ भाई, घेर दिए भाई चूते को।
हो गया भाई क्रेजी। देख रहा हूँ भाई, क्रेजी तो है, क्रेजी तो है। स्क्वाड नॉट रेडी। अरे मेरा लोड पे, हाँ हो गया, चलो। वो स्क्रीनशॉट ले रहा था। फिर से स्क्वाड नॉट रेडी। रेडी तो है, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। फिर से बैटल कैन नॉट स्टार्ट, ऑल स्क्वाड मेंबर आर नॉट रेडी। अरे लोडू को कर रहा हूँ। अरे क्या हरामी कुत्ता है भाई, ये किसान जाम में खेल के हुआ थक के सो गया है, घर वाले आके देख रहे भाई उसको मार के कोई चला गया ऐसा। Marksman. Yeah, stand inside 5 bit. Let's go, let's go, let's go. Come on. अरे लड़कों आराम से। Yes, I'm going to a higher position for sniping. Okay. आपके मेरे गाड़ी से ग्रीन ग्रीन धुआं निकल रहा है। ऊपर नहीं चढ़ सकते। इधर 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 लोडू लोडू कौन के पास है? अरे ऐसे कौन मार रहा है? क्यों पीछे से आके मार दिया भाई? बाप रे, खोल दिया बे मेरे को। वो लोग टीम में होके खेल रहे हैं बे। डॉलर के मेरे को मार दिया, मैं कितना मारूं?
अंदर आ, तुम बाहर रहेगा तो मार ही देगा तुमको। लोडू उनका इतना स्पीड कैसे है अभी? क्या चला रहा है? इसको मारो 1 HP। वो दूसरा कैरेक्टर लिया है चॉपर। अरे गांड में घुसा दे रहा भाई ये। साउंड का स्पीड रहता है भाई। इसको मारो भाई। IEM 100 लीटर 1 HP जल रहा है वो। मरेगा। मर गया। अरे माँ का कौन है बे? भाई पीछे से आके दिया है। ठीक है भाई, ठीक। मेरे साथ हो गया। नहीं, तेरा चेता है तेरे साथ, तेरा केटा। कैंट इतना डैमेज कैसे दे रहा है? कौन सा मॉडिफाइड कैंट उसका होगा मैक्स कर क्या होगा वो। मैं फ्लैंक कर रहा भाई, इसके साथ जा रहा हूँ मैं। अरे राउंड भी लॉस्ट हो गया भाई, क्रेजी। देख लोडू कौन हो रहा है उसको देख। इसका तो डिफॉल्ट है। इसका डिफॉल्ट स्पीड है इसका। इसका बूस्ट कर भी नहीं रहा है। ये जो चेप्टा वाला जो है। रचेटा? ये रचेटा है क्या? चेप्टा वाला? हाँ रचेटा। ये दो लोग खोल दिया मेरे को। अरे क्या देख लिया? एम्बर बहुत भयंकर टैंक सब है। छू नहीं पा रहे। इसका ना टाइमिंग का बहुत दिक्कत है। जब उधर देख रहे हो कोई नहीं आ रहा है, जैसे वहां से नजर आता है 4 लोग खड़े हैं हमारे सामने। रुक गया। एक गोली में कैसे उड़ा दे रहे हैं भाई। अपना स्पॉन में आकर मार रहा है, मारो उसको। ये मारो वर्जीनिया लकड़ी को मारो। बहुत बढ़िया। ठीक है राइट पे वहीं पे। मैं अल्ट मारता हूँ, रुको भाई। वो 90 कैप्चर कर दिया भाई। जाने ही नहीं दे रहे। हाँ कसम, आगे आके पेल रहे हैं तो।
ये तो घोर बेइज्जती हो गया भाई। कैप्चर तो कुछ है ही नहीं अपना। वही तो। कोई सामने वाला रचेता ऐसे घूम के मार के चला जा रहा है ऐसे। अपना रचेता साला कांड दे रहा है। रियुक कुछ बोल रहा है क्या? रियुक म्यूटेड है। देख रहा है पर मेरे को देख रहा शायद। अरे 50। हो गया किधर वो मुझको मारने चल गया। लगा और एक लगा मेरा हाउंड अपग्रेड हो रहा है। बस गाइड में मिसाइल डाल रहा हूं। एक सेकंड रुको। गार्ड में मिसाइल। ओए भाई लोग तुम खेल रहे हो या जा रहे हो? खेल रहे हैं भाई। खेल रहे हो ना? ठीक है मैं हूँ इधर ही, थोड़ा सा वीडियो वाला बात कर रहा हूँ। अरे दोस्त लोग हैं लड़े। समझ रहा दोस्ती से ही शुरू होता है सब कुछ। सब कुछ दोस्ती से ही शुरू होता है। हम लोग थोड़ी मना किए। हम लोग मना थोड़ी किए कि गया भाई फिर से 10v10 भाई। ये 10v10 लगता है भाई गांव वर्सेस गांव है भाई। आप कहाँ पे है? टीचर देख दो चोर जा रहे हैं एक को। अरे माँ कसम घेर लिया मेरे को राकेता। अबे राकेता को मारो ना भाई। लो भाई ए असिस्ट मिल गया। बी में भी है लोग। मैं इधर ही खेल रहा हूँ भाई। मैं मस्त पोजीशन ढूंढा हूँ। मैं ए में भी मार सकता हूँ, बी में भी मार सकता हूँ। इसको कोई मार क्यों नहीं रहा भाई? क्या गए माँ? अबे ये क्या है? राकेता भाई का इतना डैमेज कैसे रहता है इसका?
तो जंप खाकर 200 डैमेज ले ले रहा है। हाँ कसम, घोस्ट एक अच्छा जगह पकड़ा है, मैं भी ये जगह पकड़ ले रहा हूँ। भाई मैं कब से जानता हूँ, यहाँ से 2 जगह मार रहा हूँ, ए में भी दुब्बी में भी। गुत्ती पे भरूं उनका भाई। फोड़ दिए बे। अबे राकेता ही फोड़ रहा है हम लोग को। बी कैप्चर करो, बी कैप्चर करो। हाँ ना, मेरे पे अल्ट है, रुक जा, अल्ट मारता मैं। लोग बी पे लाइन में है, मारे लोग। सी पे बी पकड़ो पे। ये कौन मिसाइल ऐसे घुमा रहा है? गोल 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 गोल। भाई क्रेजी भाई, अपना एक बंदा ए छोड़ नहीं रहा है, बोला हाल बाल हो जाए मैं ए नहीं दूंगा। बी भी खाली है, ये भी खाली है, जीत जाएंगे। आ गया मैं, इमोबिलाइज्ड, एक गोली मर गया। कर है और बैन क्लोड का तो आधा कर दिया मैंने। इधर 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 इधर। हाँ हाँ, उसको मैं मारा, एक टपला मारा। भैया मम्मी रे, मार दिया भाई मेरे को। ये कमिट कहाँ फंसे हुए हैं? कहाँ जा रहे हैं? बी जा रहे हैं ना। तो मेरे को रास्ता के अंदर से क्यों दिख रहा है वो? मार दिया मैंने। अरे रे 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 रे, नहीं 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 नहीं। ए ले रहे, ए ले रहे, ए ले रहे। जा रहा मैं, जा रहा। ए ले लिए। अबे मैं गिर गया नीचे से, वो गिर के आधा डैमेज खा लिया। ए क्लियर, ए क्लियर। इधर इस साइड ही खेलो, इस साइड ही खेलो।
एक बंदा में तो कूदा तो है, सी कंटेस्ट कर रहा है। वहाँ कसम में फंस गया। अरे बी जा रहा, बी जा रहा, बी जा रहा है। ओए ओए बहुत बहुत लिट है, बहुत लिट है। ए पे भी, ए पे और बी पे दोनों लिट है। अच्छा मार दिया, बहुत बढ़िया। बी जाएंगे, बी जाएंगे। ए और बी पकड़ना है, ठीक है, तो जीत जाएंगे हम। अब कैसे ये कैसे मारते हैं मेरे को? कौन खींच रहा है अभी? क्या किसमें भी खींच रहा है? पीछे से एक आ रहा है, पीछे से एक आ रहा है, ठीक है भाई भाई, एक पीछे से आ रहा है। बी ले लिए जाएंगे, लिखो काली कर रहा हूँ मैं। एक है पीछे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और है। नाइस वन, नाइस कवर, नाइस कवर। एक जन वो मेरा वाला पोजीशन से खेलो ना, तो फिर ए बी दोनों देख सकते हैं। बी तो भी हो गया कैप्चर, अभी ये खाली करेंगे। अय्या क्या देखा भाई मैं। मैं वहां से आवाज से देख रहा हूँ, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, दे दिया भाई गांड में सीधा। इधर धुआं क्यों निकल रहा है? ये अपना है। ये बी में कोई नहीं रहे, एक जन बी जाओ। ये बी ले रहे, बी ले रहे। ये उड़ी मारू या दूर से मार रहे पे माउंट। वो मार देंगे भाई भाई। हो जाए, जीत जाए, जीत जाए। मेरे पे मेरे पे मेरे पे मेरे पे मेरे पे क्लोज है वो। आ रहा जीत गया, जीत गया भाई। बोलो चल चले। मैं अभी मरना और लेट खा ले तू। टाइम देख रहा है 11:15 हो रहा। आप नहीं खाएगा तो कब खाएगा? और लेट खा ले। कौन है भाई, इतना कौन सोचता है भाई? क्रिस जी नहीं नहीं बोलो खा ले। मैं एक टाइम पे हॉस्टल में था, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल बोल रहा हूँ, हॉस्टल में था। मेरा रूममेट क्या बोलते हैं, ओडिशा से मेरे साथ था, ठीक है। मैं बोला मैं अभी नहीं खाऊंगा, बाद में खाऊंगा, ठीक है। ठंडा हो रहा था। मैं क्या खाइबो ना खाइबो फोपड़ देवी नले। भाई मैं जो मारा हूँ इसमें तो भाई प्लस होना ही चाहिए मेरे, मतलब मेरा गाड़ी का लेवल बढ़ना चाहिए। जो स्नाइप की गाड़ी मिला बे? कहाँ क्या वो गाड़ी? ओके
अभी तक मॉडिफाई भाई किस में आ रहा है, इनको पता क्या है, गरीब चीज है। तो कुछ भी अपग्रेड देखो, अब मान लो ये अपग्रेड करना है तो उधर ना लिखा रहता है। ये मेरा वो स्टेल्थ वाला आ गया भाई। हाँ कुछ तो आया, इंस्टॉल, रिवर्स स्पीड बढ़ रहा है, फुल ट्रैवर्स। अरे मेरे को 360 है मेरे पे, मैं कुछ भी अपग्रेड कर सकता हूँ। क्या अपग्रेड करें इससे, क्या होगा? पेनिट्रेशन मैक्स, एपी पेनिट्रेशन कमा क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हो जाएगा। लगा दूं क्या ये एक है अच्छा अपग्रेड। दूसरा एक स्पीड बढ़ेगा, नहीं चाहिए स्पीड। भागना तो है नहीं। अरे ये दोनों लगा देने से एक और है कुछ, अनलोड एपी डैमेज और मैक्सिमम, ये भी एक है, डैमेज बढ़ा रहा है। छोड़ना 2 है 160। क्या लगाया जाए? और थोड़ा होने दो, 3-4 एक साथ लगा लेंगे। एक चावल भी बचा है ना, तुम जाके निकाल लेना। दो पराठा है और चावल भी है, खा लेना पूरा। और छोला कच्चा हुआ था इसका था, और 2 पराठा है। तो मैं एक बोला था, ठीक है था, खा लेना। ठीक है, बट मैं लेट में खाऊंगा। आ गया मैं चैट, आ गया मैं फाइनली। बंदी से बात हो गया? अरे बंदी नहीं थी रे, वो क्या बंदा था? अरे थी समझ सकता हूँ, आजकल लीड सी वैसी। दोस्त तो बोलना क्या चाह रहे हो? बंदे थे? बंदे थे। मतलब आप एक सफेद सोफा पे बैठे हो, पीछे 4 बंदे? बस इसीलिए ही, समझ रहे हो, इसीलिए इतना टाइम लग गया ना आपको। क्या बोलूं मैं? वही तो, इतना लोग यार थोड़ी बोल पाओगे कुछ। टूटता नहीं क्या था? To base B. चलो अबे मैं ना चलता हूँ, ठीक है? क्या बोलते हो? जा रहे हो? कहाँ चल रहे हो? मैं 11:30 बज रहा है ना, तो थोड़ा 1-2 वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है? अच्छा ये सब अपलोड का कहाँ पे क्या करना? अरे हाँ, आप लोग ये मैच खेल लो ना, मैं हूँ इस मैच के बाद आपको बताता हूँ। कहाँ मार रहे हैं हम लोग ज्यादा? किसका ये देख रहा हूँ मैं, हिमांशु भाई का। तभी लंचट गेम प्ले दिख रहा है। क्या लंचट गेम प्ले भाई? 4 लोग जब घेर के खड़े। अभी मैं देखा आपका ट्रेसिंग। हाँ ट्रेसिंग मतलब? अभी जो आप जो एक 1v1 हो रहा था, और आपने जो उधर 1v1 उधर मेरे आसपास कितने लोग थे? कितने थे? अच्छा ये आप ही का देख रहा हूँ क्या? मैं किसका देख रहा हूँ? फिर गलत देख रहा हूँ क्या? ट्रैकिंग में यहाँ पे बी में यहाँ पे 4 लोग का बीच में झुलझ रहा हूँ, तो बोलता है ट्रैकिंग। हाँ आप ही का ही देख रहा हूँ मैं, देखता हूँ मेरे को। आशिर भाई वेलकम टू स्ट्रीम यार, चैनल पे आपका स्वागत है यार। चैनल पे आप नए हैं तो स्ट्रीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड फॉर जॉइनिंग। आशिर भाई क्या हाल है, कैसे हो? कौन कौन खेल रहे हैं? लोडू भाई, कॉमेट इन्वेडर और साला डिकॉयज मार रहे हैं।
हाँ देख देख ट्रैकिंग देखा। अरे वो तो वो चला गया ना। वाह वो रुकेगा नहीं भाई। मेरा तो कॉर्सर है ना, मेरा तो कॉर्सर है। ये देखो ये देखो ये देखो, मेरा कॉर्सर उधर है। अरे यार भाई देखो, ये है मेरा कॉर्सर, ये है दूसरा वाला है उसका टैंक का। अच्छा अच्छा तो इतना समझाना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा मैं तो टुमटी हूँ, मैंने तो गेम खेली ही नहीं है। बस निटपिकिंग करने आ जाते हैं भाई। अबे उसके अंदर रहे, जोन के अंदर, तभी तो बढ़ेगा। अरे नहीं रुक जा, कवर में जाऊंगा ना। लग जा कवर में। देख देख माँ तो चुत। किल के लिए खेल रहा, पता चल गया। इधर है गोस्ट। एक और मारो इसको। टी दबा टी। अभी तो आया भाई। एफ दबा। अरे छोड़ दिया, क्या बोलूं मैं। ले 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 मारा। अरे नहीं मारा। ओह क्या गन। अल्ट में नहीं मारा वो कैसे भाई? मार के क्या मैं me up a bit. ओह क्या इधर इस साइड है। ले उसके मुंह के सामने चले गया। मार गाड़ में, मार घर में गोली मार उसके। हाँ ये क्या था? अरे मिस कर दिया रे। गंदे ही गला बे यार, गेम प्लेटा देखी। ये कोची 70 है साई भाई। पॉइंट ब्लैंक रे बुलेट मिस करची। पॉइंट ब्लैंक भाई रिलोड था शायद। स्ट्रीम पे सब गया। ठीक है ठीक है मैं तो देख रहा हूँ भाई। हिमांशु भाई एकदम लंचट गिरी नहीं। कुछ नहीं एकदम लंचट गिरी नहीं भाई। रिलोड पे था भाई, कुछ नहीं होता। अच्छा नाम चल रहा है। नाम तृप्ति का लौड़ू कौन है गेम में? तुम एक बात बताओ, सामने बंदा है, मैं क्यों नहीं मारूंगा उसको? मिस किया। मारे तो आप थे, आपका इंटेंशन मारने का अच्छा था, लेकिन मिस कर लौड़ा मिस किया है। अब वो तो मैं कैसे बता पाऊंगा? तो काला झूठ बोल रहे हो तुम। काला सफेद है क्या? काली तो तेरी नियत है रे। बोलना क्या चाहते हो? सीधा सीधा बोलो। अपने टीम को हराना चाहता है। अपने लूज कर रहे क्या? क्या किए ये? क्या किए? क्या ये क्या है? अरे टैलेंट बड़ा टैलेंट है। ये पे आओ ना गाइस। कौन मारा पे? अरे क्या ये कहाँ फंस गया? हे प्रभु, क्या गांडी रेडी के टेक्की दियो रे। वो छोटा सा एडो लग जा रहा है, रुक जा रहा है पूरा टैंक। कितना यही होता है, छोटा लोग ही एकदम आंड गांड रोक देता है, समझ रहे हो?
छोटा लोग में दम होता है। ले डिकॉय तोड़ दिया। अपना मार इसकी मार ये हो गया, बी हो गया। बी पे रहे, बी पे रहे। बॉम्ब हो रहा है बी। अच्छा बॉम्बिंग हो रहा है, निकल जा। बी निकल जा। तो सी देखो, सी नहीं है। अरे इसकी माँ का, अरे रे, अरे रे। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? वो रुको, क्लियरिंग। बेस भी कैप्चर करो, 300 सीपी मिलेगा 1.5 मिनट में। अरे शील्ड जाओ, बी जाओ, बी जाओ। ये गांड नहीं दिखाना। गांड नहीं दिखाना था, रिवर्स निकालना लेना। 300 सीपी भी गए। This thing's made of steel. वैसे ये गया, ये जा रहा है। तो है कहीं ना, जा रहे 2 लोग जा रहे। ये जाओ, ये जाओ। ये मुझे सीख दिया भाई। Okay, they'll be disappointed. बहुत बढ़िया, तीनों ले रहा हूँ। कंटेस्ट हो रहा। चलो इधर 2 लोग। अरे लंचट। साई भाई आपने वो पूछा कितना वीजा कार्ड वाला कितना? अरे मैं तो भूल ही गया था उसके बारे में। डाला तो था, मेरे को कुछ रिप्लाई नहीं किया। मैं थोड़ा काम में व्यस्त हो जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ले आऊंगा। खाली पूछ लेना एक बार प्राइस कितना है, मैं आपको फिर बता दूंगा कब ऑर्डर करना है। वीजा कार्ड और खास। क्या बात है, स्क्रीनशॉट्स। अभी आ जाओ डीसी पे, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या करना है।
मेरा एजेंट मॉडिफाई हो रहा है। क्या देखो देखो रूबे कौन सा करे करो, मैं देख ही रहा हूँ। 5% एम स्पीड बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा एनर्जी कॉस्ट कम होगा। और ये क्या है रेक्टल साइज नीचे, ये क्या है रिड्यूस मिनिमम क्लॉक टाइम फॉर हाइड्रो। ये कर सकते हैं, फायदा है ये। ये कर लो। अब क्या करना बता। हाँ आप स्क्रीन शेयर करो, कर रहे हो ना? ये देखो, अच्छा ठीक है वो कर लो, मेरा ये भी खुला। हाँ वो बैटल रिजल्ट्स पे जाओ। कहाँ? देखो ना वो तो लेफ्ट साइड पे नीचे 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 और थोड़ा सा बैटल रिजल्ट्स। हाँ इधर अपलोड करो सेम फॉर्मेट में। देखो सबसे नीचे में मेरा ये कोई अपलोड किया होगा, स्टिंग भाई ने किया, उसका फॉर्मेट कॉपी करो। कल का फॉर्मेट नहीं है क्या? आपको ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा सा फिर। कैसे रैंडमली भी कर देगी, ऐसे करना सीक्वेंस वाइज? सीक्वेंस वाइज नहीं चाहिए, बट तेरे को याद रहना चाहिए, इसलिए सीक्वेंस वुड बी गुड, वरना तू रैंडम करने से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मिल गया भाई मेरे को, मेरा वाला मिल गया। चलो टैग करो। हाँ नीचे स्वाइप करो, आई मीन स्क्रॉल। ये वाला देख, ये क्या है? तेरा टैंक मिला है ना? हाँ तो इसको एक्टिविटी में वो लिख देना, न्यू टैंक अनलॉक। एक्टिविटी में न्यू टैंक अनलॉक और टैग कर दो। हाँ और नीचे स्क्रॉल करो पूरा, अपलोड हो रहा है, ड्रैग करो उसको। यस कूल कूल कूल। हिमांशु भाई भी कर रहा है, तोरुकुन भी कर रहा है, ग्रेट। दोनों सेम हो गया? नहीं अलग है, 3.7 के 3.8 के। अच्छा ऊपर के ये तो हिमांशु ने डाला। 1830 मेरा कितना हुआ देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6 डालना। हाँ सही सही काउंट चल रहा है मेरा। वो वाला डल। हाँ उसके वाला ये स्क्रीनशॉट्स डिलीट मत करना। अच्छा ठीक है, वहाँ से तो यहाँ पे सेव कर ही सकते हैं ना? सेव कर ही सकता। हाँ डिलीट कर दो। उसके बीच वाला एक छोड़ दिए शायद सही भाई। हाँ एक बार मेरा एक बार गिनना कौन सा नंबर चल रहा है, एक बार गिनो देखो। रुको सही भाई गिनना एक बार, मैं आपका उस टाइम देख रहा हूँ। ये हिमांशु का 1 2 3 1 2 4 5 6 7 8 8। हाँ ठीक है 8 8 8 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे को कोई यहाँ से देख, ये मैसेज आया था। क्या ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 एक बार दिखाना 8 9 भैया आपका 10। वो आईडी। बैटलनेट खोलो एक बार, बैटलनेट वाला सर्वर। ये तो गंडी लग गई अपने। 1 2 3 4 5 6 7 भैया का दिखा रहा है कि यू सर्वर पे खुला है। अरे नहीं वो वाला नहीं, आपका बैटलनेट वाला क्लाइंट। 11 हुआ।
खोलो। अरे हाँ, एक यू दो लिखा हुआ है। 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाला भी क्या करना है 12 पता है? ये जब अब अभी मेरे लिंक से वापस करोगे ना, आपको क्लाइंट डिलीट करना पड़ेगा, वहाँ पे ऑप्शन आएगा, वहीं पे चेंज होगा, ये और चेंज नहीं होगा। 12 हुआ, 1 2 यू 3 सर्वर 4 मतलब 5 6 अरे 7 यूरोप सर्वर 8 में 9 भैया का खुल 10 गया है। 11 12 हो गया, 12 हो गया। चलो तो मेरा कौन सा में खुला है? तेरा कैसे तो दिखे? एशिया है, तेरा एशिया है, तेरा एशिया है, वरना तेरे को मैसेज आ जाता। तेरे को मैसेज आया कि कुछ? कहाँ पे? डिस्कॉर्ड पे। पर्सनल? हाँ पर्सनल भैया, पर्सनल आया ना आपका? हाँ पर्सनल नहीं में नहीं, कुछ। मेरा नहीं। हाँ तो फिर तुम लोग का एशिया है। यूमी को बोल के कोई करेगी तुमको रिपोर्ट स्पैम। अरे नहीं नहीं, रिपोर्ट स्पैम क्या करें? तो एक काम करो ना साई भाई, ये तो अभी ठीक है, अपन कितना 11-12 सब पानी में गया। एक काम करते साई भाई, आपका वो बैटल प्लान डिलीट करना आप। अबे लेकिन आपने तो बैटल रॉयल भी ले लिया। वही, वो तो मैं खरीदा हुआ है। देख छोड़ा ज्यादा है, खा पाएगा जितना उतना ही लेना, जो नहीं खा पाएगा वैसे छोड़ देना। ठीक है तो फिर तेरा खाएगा तो फिर खा जाएगा। शिट यार, ठीक है कोई बात नहीं। और ट्राई करना चावल और रोटी खत्म कर देना। छोला नहीं खत्म कर चावल और रोटी खत्म हो गया। और खेलना है कि? खेल सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं थोड़ा खा के आ रहा हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। हिमांशु भाई, हिमांशु भाई हेलो। ये लंचेट कहाँ चले जाता है? हेलो हेलो। अरे नहीं, अरे वो बात कर रहा था। बोलो बोलो। अच्छा, आप जा रहे हो या हो? मैं तो हूँ, 5 मिनट के लिए नहीं रहूँगा, बस 5-10 अच्छा, मिनट के लिए। मैं जा रहा हूँ, फिर मैं स्ट्रीम एंड कर रहा हूँ हिमांशु भाई। बाय सिंह भाई, हाँ हाँ, चलता हूँ। ओके ओके, कल मिलते हैं। दुआओं में याद रखना। अरे अरे हाँ, वॉच रुक पार्टी भाई है रुक ना भाई, सुनो, वो बोलो। बोलो ना, क्या बोलते हैं उसको, स्पेक्स वाला कैसे डालते हो चैट पे, जो लिखते हैं ना, आई मतलब एक्सक्लेमेशन स्पेक्स या कुछ वो भी मैं लिखने से वो सब। अभी ऑफ स्ट्रीम बताता हूँ ना, आपको बता दूंगा। हाँ ठीक ऑन है। स्ट्रीम नहीं बताता। ठीक है, कल मिलते हैं वॉच पार्टी। क्या क्या? गाइस बाय बाय। बाय बाय साई भाई, बाय बाय। चलो चलो, मैं भी बंद करते तो फिर, और क्या। मैं आप एक बार डिस्कॉर्ड में हो ना? मैं अभी डिस्कॉर्ड, अभी अगर नहीं हुआ तो मैं आपको आपको अभी बताना है क्या? नहीं नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपका अवेलेबिलिटी के हिसाब से पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं एक्चुअली सी ना, अभी मैं पता नहीं, अभी अगर खाने जाना होगा, खाने खाऊंगा, फिर एक शूट है ये गेम के बारे में, ये गेम का एक शूट है इसी तो वो बनाऊंगा। तो देखता हूँ, अगर होगा तो मैं, ये तो 5 मिनट का काम है ना, मैं आ जाऊंगा, आपको टेक्स्ट कर दूंगा डिस्कॉर्ड। हाँ ठीक है, डन डन डन, मैं भी आ जाऊंगा, मैं भी यार खा लेता हूँ तो फिर। साई भाई का नहीं काउंट होगा यार, बुरा लग रहा है। क्यों 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 काउंट नहीं होगा? अरे उनका यूरोप सर्वर में खुल गया अकाउंट। साहिब के साथ भी ये हुआ था, लेकिन साहिब का मैं चेंज करवा दिया और एशिया करवा दिया, लेकिन भैया का करने से कोई पॉइंट ही नहीं है, भैया ऑलरेडी बैटल पास ये सब ले लिए हैं यार। मैं इनको बोलता हूँ, एडमिन को कुछ कंसिडर कर लो यार। ठीक है, बुरा लगा। चलो अभी बाय के लिए गाइस। आते हैं। यस, थैंक यू गाइस, गुड नाइट। चलो, गुड थैंक यू नाइट थैंक यू स्टिंग थैंक भाई, यू गुड स्टिंग नाइट भाई, स्ट्रीम हिमांशु। पे भी आने गुड के लिए नाइट, गुड नाइट, धन्यवाद। कल मिलते हैं वॉच पार्टी। यस यस, कल वॉच पार्टी में। अरे कल, हाँ कल तो है ना वॉच पार्टी। यस यस यस। हाँ, डे 2 है। बाय बाय, बाय बाय गाइस। ओके, बाय चलो बाय बाय बाय। बाय। चलो धन्यवाद स्टिंग भाई, बाय बाय। बाय बाय हिमांशु चलो भाई। बाय बाय रुक भाई, यस यस। धन्यवाद धन्यवाद, मज़ा आया मज़ा आया। यस, कल भी खेलते हैं हिमांशु भाई फिर। हो, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। यस, आप आओ यार, आप रेगुलर नहीं हो थोड़े से। अरे अभी अभी तो रेगुलर हूँ अभी। रेगुलर आओ, अब खेलेंगे अभी तब वो, ना, अरे जब फिर काम होगा। नहीं रहता ना, मैं रेगुलर हूँ। अभी देखो, पहले काम था, अभी नहीं है। अभी वो डाल के मैं क्लाइंट तो को भेज दिया आना अभी। फिर अभी कल मैं भी चिल साढ़े हूँ अभी। 8:30 से ऐसे, मतलब ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटे का भी स्ट्रीम करेंगे ना तो हो जाएगा। 8:30 से आप आओ कल, 8:30 से फिर से 10:30 खेलते हैं। ठीक है, सॉर्टेड। ओके, चलो बाय बाय। चलो बाय बाय। आप एक स्ट्रीम भी करना, आपके हॉट व्हील्स वाला है। क्या हुआ, कुछ बोल रहे थे? मैं बोल रहा था, आप एक IRL स्ट्रीम भी करना, जहाँ पे आप या तो किक पे स्टार्ट करोगे तो IRL स्ट्रीम पे अपने हॉट व्हील्स के कलेक्शन दिखाना। ये सब स्ट्रीम करो बेंचो, आज जो मेरे को दिखा रहे थे ना वैसे ही दिखा आपका। तो अभी वेबकैम क्वालिटी भी बहुत क्रेजी है, फुल स्क्रीन करके दिखा सकते हो।
ये वाला करो, स्टार्ट करो वेंचर। मैं तो खुद अभी लीगो वाला किया तो मैं वो किक में करूंगा उसको असेंबल, अगर मैं देख रहा हूँ कैसे करना है सेटअप वगैरह। ठीक है, डन 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 ये डन वाला डन। चीज करो। अगर आप यूट्यूब पे करना चाहते हो तो यूट्यूब पे करो आयरल स्ट्रीम वैसा। ठीक है, डन डन डन। हाँ। अभी एक ऐसा एक मान लो केस ओपनिंग कर लेंगे, मतलब अभी हॉट व्हील्स का आता है ना, ए केस बी केस सी केस आता है हाँ ऐसा। वैसा आप तो अगर एक 5 कोई स्टैक 2026 कोई अगर स्टैक एक मंगवा रहे हो, क्या क्या मंगवा रहे हो उसका ओपनिंग कर लो, या तो कोई वीडियो या शॉर्ट्स बना लो, या तो स्ट्रीम पे पूरा अपना कलेक्शन स्ट्रीम पे दिखा दो खोलेंगे एक। मैच। हाँ स्ट्रीम पे कलेक्शन दिखा दो वैसा। वही है वही, मतलब आज देखो, आज जो स्टिंग आया, समीर भाई आए, और एक कुछ नया बंदा आया, स्टील ट्रो सिटी करके एक है। या ठीक है, आएंगे लोग, आएंगे आएंगे, अरे करने से डेली आएंगे। करोगे ना तो आएंगे। देखो अभी वो स्टील ट्रो सिटी कल अगर आप नहीं आए तो ये देखने आएगा, अरे ये नहीं है, आई माँ चोदू क्यों सब्सक्राइब करूँ, ऐसा ऐसा करेगा, समझ रहे हो, वैसा बोलेगा। यस यस, रेगुलर समझ रहने रहा की हूँ। ट्राई करो, सब होगा। आई कैन गेट यू, आई गेट यू। यस यस। ओके ओके ओके, ओके। करेंगे यस। कर देंगे सक्सेस। ओके बाय बाय। चलो बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो गाइस चलता हूँ मैं, आज भी थोड़ी सी लंबी स्ट्रीम हो गई 7 घंटे की। आज के स्ट्रीम के लिए इतना ही यार, थोड़ा बीच में मैं कॉल्स वॉल्स में भी लग गया था। वैसे ही मेरे को खेला नहीं था, मैं बस बैठा था कॉल्स में, ऑन स्ट्रीम ही कॉल कर लिया। कोई ना, चलता हूँ। एज ऑलवेज यू गाइस आर ऑलवेज ओपी, यू नो द ड्रिल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे अभी भी नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर चुके हो तो शेयर कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगली स्ट्रीम पे, जो कि होगा कल वापस है 4:30 बजे गॉडलाइक के मैचेस के साथ हम आ जाएंगे EWC की वॉच पार्टी करने। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, चेक इट, गुड नाइट, अलविदा। ऐसे ही प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो, एक दिन जरूर से आसमान छुएंगे। और अपने 5 मेजर रूल्स कभी मत भूलना। अपना ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, अच्छे काम करते रहो, पानी पीते रहो, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा गेम्स खेलते रहो, बिकॉज गेम्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। सो इसी के साथ हम आज की स्ट्रीम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है शो को पसंद आई होगी, नहीं पसंद आई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कल इसी चैनल पर आ जाइएगा। हाँ, आपको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय बाय। वो मुझ में अभी कहीं बाकी है, वो अभी भी ख्वाबों में आती है। ये रिश्ता भी कितना अजीब हुआ, दूर उससे तो उसकी यादें सताती हैं। वक्त भी अब कहने लगा मुझे, चलो या तेरे लिए थम जाऊं। उलझा मैं अपनी ही राहों में, समझ नहीं आता मैं जीऊं या मर जाऊं। वो तेरा ना दिल दुखे कभी भी, भूला मैं दुनिया भर तुझको ना भूलूं मैं कभी भी। साथ मेरे चलो भी, कर लो यकीन मुझ पे ऐसे तुम डरो नहीं। हो रहा पागल ना खुद को मैं मार लूं, करता था प्यार तभी अब तक मैं शांत हूं। वरना मैं कर देता कितने तमाशे, पर दूर होके उससे हम जीना नहीं चाहते हैं। दिल ये उदास अब हंसना नहीं चाहता है, प्यार उसको करता जो उसको नहीं चाहता है। कहना था बहुत कुछ पर अब चुप ही रहता मैं, दिल का ये दर्द देखो आंखों से बहता है, आंखों से बहता है। दिल भी उदास है, जीने की बाकी ना कोई भी आस है। मतलब के साथ ही सब मतलब से साथ है। मुझको बचा ले या मुझको तू मार दे, शायद फिर मिलेगी तुमको भी शांति। आई थिंक शी नो मी पर वो नहीं जानती। कभी नहीं करी दगा मैंने तेरी जगह, कभी किसी को भी ना उधार दी। दुनिया सवार थी कि तेरे संग रहूं मैं, तेरे संग जिंदगी में सारे रंग भरूं मैं। तुझे दे दूं सारी खुशियां और गम रखूं मैं, तुझे प्यार दिखे मेरा ऐसा क्या लिखूं मैं। वो मुझ में अभी कहीं बाकी है, वो अभी भी ख्वाबों में आती है। ये रिश्ता भी कितना अजीब हुआ, दूर उससे तो उसकी यादें सताती हैं। वक्त भी अब कहने लगा मुझे, चलो या तेरे लिए थम जाऊं। उलझा मैं अपनी ही राहों में, समझ नहीं आता मैं जीऊं या मर जाऊं। यार रिश्ते अजीब है, मालूम ना कौन यहाँ किसके करीब है। सबको तो बांटी खुदा तूने खुशियाँ और दुख सारे लिख दिए मेरे नसीब में। हंसता था मैं पहले अब सिर्फ हंसाता हूँ, कागज में कलम को जब मैं चलाता हूँ। लिखता हूँ वही जो मैं कहना चाहता हूँ, देखे भी उसको अब कह भी नहीं पाता हूँ। करूँ मैं क्या ही कोई मुझको बताए, ना मिले उपाय बस दिल ही दुखाए। ना कभी झुकाया सिर्फ किसी के आगे, पर देखूं पायल उसकी सर को झुकाए। अब यादों में उसके हम लिखते हैं शायरी,
थी जैसा था पहले अब वैसा कुछ रहा ही नहीं। दोस्त भी मेरे अब कहने लगे मुझे भूल जा, उसको वो वापस नहीं आएगी। कब तक सताएगी दिल को दुखाएगी, नाम से तेरे अब भर चुकी डायरी। पन्ने भी कहते तू रुक जा जरा वरना तेरे इन हाथों में कलम रो जाएगी। रोती है आंखें तो बादल बरसते हैं, खुद को भुला बैठा खुद के ना बस में। मैं सुना वो दूर होके हमसे अबसते हैं, हेलो ना हाय ना होती ना मस्ते है। पर मुझ में अभी वो बाकी है, वो अभी भी सपनों में आती है। भूलूं मैं कैसे भला तुझे, तू ही है वो जो इस दिल को धड़काती है। वक्त देती तो सब बदल देता, अब देखो ना खुद को बदल बैठा। मैं सब कुछ भुला के यहाँ लिख रहा हूँ बातें वो जो कभी तुझसे ना कह सका। मैं तुझसे ना कह सका, मैं तुझसे ना कह सका, मैं तुझसे ना कह सका। वो जो कहना था मुझे तुमसे दूर रहना नहीं मुझे, रहना नहीं मुझे, रहना नहीं मुझे, रहना नहीं मुझे। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want.
inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want.
shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma fight my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, no, no. I got no, no, no rival. Tell me now, what you gon' do? We can do this face to face. The reckoning is coming real soon. Doesn't matter what you say. Try to tell you this is my moment. Can't take mine 'cause I own it. Don't you know that I'm locked and unloaded? You're out of focus. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'll fight my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got no. I'll be standing on my own, never gonna take my phone. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, no, no. I got no, no, no rival. No rival. I got no, no rival. No rival. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross